So yesterday we completed a quick revision of chapters 1 to 7. And we also went through 50-mark question in terms of approaching, discussing the theory aspect, and also some other points which are very important from an examination perspective, including thoughts around the professional marks. And then we had started chapters 8 to 11, which were around risk management and hedging. So we completed interest rate hedging chapter as well. And today morning, we'll start with a question on interest rate hedging, and we'll also practically see a couple of concepts which we had discussed yesterday. Before that, let's start with a quick revision of what we discussed in the risk management and the hedging chapters. And then we look at the question. Three broad derivative types of derivatives we discussed. One was forwards, the other one was futures, third was options. Forwards and futures very similar, where you lock in something for future in today's date. The thing is, as a hedger, you will be locking in the position today, but that means you also will not be able to enjoy the upside. In case of options, you have the option of enjoying the upside because you don't want to exercise the option, you have that right. But the downside is that you have to pay an upfront cost, which is the premium. Then we briefly discussed the concept of futures. Again, those are typically exchange traded, so there is no counterparty risk because the exchange will ensure that both the parties honor their contracts. For that, the exchange will charge a margin, not charge, will take a margin from both the parties, which is like a deposit. And if the parties are honoring that side of the contract, then of course that deposit will be repaid. Then we discussed type of options. Broadly, there are two. One is call option, the other one is the put option. Call option gives you the right to buy. Put option gives you the right to sell. As a buyer of the option, you have the right, but not the obligation. But as the seller is under obligation to honor if the buyer wants to exercise the right. Then we talked about the methods to value options. We started with the put call parity, which basically says if there are two assets which are generating the same level of cash flows, then they should also have the same cost. For that, we discussed the concept of protective put is equal to fiduciary call. Protective put is buying the put plus buying the stock, in the example of the stock, should equate to buying the call plus buying the bond, where the bond redemption value is equal to the exercise price of the put and call options. Right? From an examination standpoint, we discussed that you may be given the value of the put or the value of the call, and you may be asked to apply the put call parity and compute the other value. Moving on to the binomial model, which was linked to the Black-Scholes. We focused a lot on Black-Scholes because yes, that is definitely a testable area. The good part was that we don't need to remember the formula for Black-Scholes, but definitely we need to understand the application. There were five important components which are relevant, which will be again applied in the next concept, which was spot price, the exercise price, the risk-free rate, the time to expiry, and the standard deviation. Again, risk-free rate, time, and standard deviation are relevant, are relatively more straightforward, but the spot price and exercise price definitely may need some more work to be done in the exam, depending on the fact. Couple of applications for Black-Scholes. One was valuing real options, where we discussed two types of options. One was option to expand. The other one was option to abandon. The option to expand was if you're investing, you get a chance to invest further. So for example, you're opening a shop. Post 2 years, you get an option to expand that to second shop. Option to abandon is where you're starting a business. After 2 years, you have the option to sell it off. So option to expand was akin to a call option, where again, the PE, the exercise price, was capital investment, which is required because that is the investment you'll be making to exercise the option. And of course, the PA is the value of the future cash flows, which you will generate if you exercise the option. Similarly, option to abandon was again, the exercise price akin to a put option, the salvage value, which you will get if you exercise the option. That means you abandon your project. And the PA is the present value of the cash flows foregone. That means the cash flows which you will not be getting
if you exercise the option. So that is the two things which you need to compare. So that was valuing real options. Sir, BSOP calculates the present value of the option. Yes, BSOP calculates the present value. So basically the amount of the value of the option today. Correct. Then the last application of DSM was valuing debt or equity, where again we discussed where if you're valuing equity, then how will you compute PA and PE? So PA was the fair value of the firm's asset, and we were comparing that with the amount which is owed to the debt holders. There we also looked at an illustration to see how do you compute that, because you use a zero coupon bond terminology or a concept to compute the PE or value of equity. How do you do that? You basically compute the present value of the bond, and then you assume that it's a zero coupon bond, and therefore you compound it with the yield required for the debt holder for the time for the debt is to be repaid. That comes to the PE. Again, inputting these 5 figures in your spreadsheet will give you the value of equity in this case. For value of debt, you can apply the put call parity and compute the value of debt. This was one more application of Black-Scholes model. Then we started with the hedging techniques for the interest rate hedging, where we discussed 6 techniques. Forward rate agreements, very simple, straightforward, because it's over the counter, so that's customizable, and you can actually have a lot more flexibility. But the downside was that there is a risk of counterparty defaulting. What are you doing? You are fixing the rate today for a future transaction. It can be a deposit, it can be a borrowing. Simple. If it's a loan, then what do? You buy FRA. If it's a deposit, then you sell FRA, right? On settlement, you will have 2 transactions, one actual borrowing or actual deposit, and the second one is receipt or payment under the FRA. But you are locking in the rate today. Again, the downside is that if the rate moves in your favor, you would still have to honor the FRA, and therefore your upside is also locked. The second point on FRA was around how you compute the value. The computation is very easy, but you may need to discount that because of the difference in the date, because you're taking the loan today, but the interest payment would be at the end of the loan tenure. So that time value of money amount which needs to be set. Then we went on to the options on FRAs, similar to the discussion we had on options, the put and the call. If you're borrowing, then what do you like? What do you want? You want a right to buy or right to sell? Right to buy. How do you get a right to buy? Through a call option. So if you are borrowing and you want to hedge through an options on FRA, then what do? You buy a call option. If you want, you're depositing, then you want a right to sell. You get that through a put option. So you buy a put option. Once you exercise, it becomes very similar to what we discussed for FRA. One additional point here is that you'll have to pay a upfront premium, which was not the case in case of FRA, right? Then we talked about which one is better. If you're certain is the movement of the direction of the interest rate, then you may go for an FRA. But if you're not certain, the interest rate is volatile, then you may want to have that flexibility and go for an option on FRA. Then we talked about interest rate futures. The difference here was, one fundamental difference was the way the futures are quoted. In case of FRA, if the interest rate is 5%, the FRA will also be quoted in terms of the percentage of interest. In case of futures, it's 100 minus the interest rate. So therefore, the futures will be quoted 95, 96, 93. So that is the way the futures are quoted. We went through the steps. Again, I will repeat this when we look at the question. So I'm not going to spend too much time here. Just 2 points. One, the point around basis risk. What was basis risk? That if the spot price and the exercise price, or sorry, the futures price, do not move in the same direction as expected, and the basis as on the expiry date is not 0. That is the basis risk. And the second thing we talked about was overhedging or underhedging. So if the contract size is not equally divisible by the transaction value, I should say the transaction value is not equally divisible by the contract size, then you may have contracts in decimals. And therefore, because that's not allowed under futures, you need to round it up or round it down.
which can lead to a scenario of over-hedging or under-hedging. Okay? That means what? In case of FRA, you were able to lock in the rate. But if there is a basis risk, or if the contract size is not equally divisible, then you will not be able to have a perfect hedge. That means if the rate is 4.5%, let's say futures, you will not be able to lock in the 4.5% rate. Your actual rate may be slightly higher or slightly lower. That's the risk on futures. Then we talked about options on interest rate futures. Again, I'll be doing a question on this right now. So we'll discuss the exercise price point, which we had discussed yesterday. Again, the idea is if you exercise the option, then you come back to the futures, because this is options on IRF. So in this case, IRFs, just to conclude, if you are borrowing, were you buying futures or were you selling futures? If you were borrowing, it's like borrowing is like issuing bonds. So you were selling. Deposit was like subscribing to bonds. So it was like buying futures. Similarly, going back to options now. How do you do options? If you are borrowing, will you buy a call option or buy a put option? Very good. Buying a put option gives you the right to sell. Exactly, which goes back to the position under futures. So again, it's very easy. If you understand the base concept, then you can also apply the options on that base concept. Because the idea of the option is if you exercise the option, then it should take you back to the base concept, which was futures in this case. Similarly, if you are depositing, then you want to buy futures, right? Which type of option gives you the right to buy? Call option. So if you are depositing, then you will buy a call option. And if you exercise that, then you go back to the position of the futures. Very good. Excellent. Then we talked about the concept of collars. What was that? We said there is an upfront premium to be paid when you buy options. If you don't expect a very significant fluctuation in the movement, then you might want to just say, I want to save the upfront cost and forego some bit of upside, potential upside on options. So what do? You buy a put option and then sell a call option, or buy the call option and sell a put option, whereby your outcome becomes range bound. So in case of a borrowing, for example, if you buy a put option, then your upper cost is 10%, you won't be paying more than 10. But if you are selling a call option, then your floor is also set at 8%. That means you'll not be able to have a gain if the interest rate goes below 8%. And again, we'll look at a question right now to see this. Lastly, we talked about interest rate swaps. What were interest rate swaps? One company wants to take a fixed rate loan. The other company wants to take a floating rate loan. How, if they both work together, they can end up with a savings on the interest rate, and then how those savings are shared. Again, this is can be with the counterparty directly, or this can also be with the bank or an intermediary, where the intermediary can also charge some commission or service fee. Few points. One, of course, there is no exchange of principal. So if you remember the example we did yesterday, we actually took the loan from the bank and then it was notionally swapped. So the actual money is not exchanged. It's just the interest rate movement, which is the interest rates which are exchanged. And next, the second point was it can also be directly with the bank. You don't need a counterparty. So all kinds of possibilities are there, but the end result, the end objective is the same, right? Hey, last point, bid ask. I think we've discussed this, but if this is directly with the bank, yesterday in the example we did the swap was with the counterparty and the bank was facilitating it, so it took a commission. But let's say if the swap is directly with the bank, you don't have a counterparty. So that means you will pay something to the bank and receive something from the bank. So if the question quotes a bid-ask spread, so for example, if the bid-ask spread quoted by the bank is 5:5.1, what does that mean?
Correct. That's the bid-ask spread by the bank. But how do you interpret the bid-ask spread in case of a swap? Same logic. Okay, same logic. Bank will always pay less and receive more. And this bid-ask spread is for what? For a fixed rate. So, for example, if you are the company and you want a fixed rate loan, if you want a fixed rate loan, then what will you do? You will pay SOFR or the variable rate to the original borrower, and you will receive the variable rate from the bank. So, well, let me just take a very quick example for this so that it is very clear. Scenario 1, company wants a fixed rate loan. Okay? But of course, it's not getting a fixed rate loan at a good price from the existing lender. So what will it do? It will borrow a variable loan. Yes. Let's say it is paying on the variable loan. It is paying SOFR plus 7%, hypothetically. What does it want? The company says, I want fixed. So I don't want this SOFR liability on my head. So logically, what should happen? The swap intermediary, let's say in the bank, another bank in this case, it should pay SOFR. So मैं इसको bracket में डाल देता हूँ because interest है, so it's a payment. So it should, so intermediary to company. क्या होना चाहिए? It should receive. Oh, sorry, I'm not sharing my screen. Sorry, thank you for telling me that. Let me know if you can see the screen. It should be on the Excel now. Yep, perfect. So I'll just quickly repeat. So I was on a scenario 1 where the company wants a fixed rate loan. It will borrow a variable loan. So what will it do? Of course, it's not getting good terms from the existing lender. So it will borrow at variable loan and then go for a swap. And इसके पहले जो swap intermediary है, the swap intermediary, it has quoted a bid-ask spread of 5 to 5.1. Okay. Now we want to see what is this 5 to 5.1%. What does this mean in case of a swap transaction? Right. Scenario 1 क्या? Company wants a fixed rate loan. It will borrow variable loan, of course. So it will pay SOFR plus 7%. Now, if it wants a fixed rate loan, so first it has to eliminate the variable component. How do you eliminate the variable component? If it is paying SOFR, it will receive. If it is receiving, it will pay. Right? In this case, it will swap to intermediary to company. क्या होना चाहिए? It should be SOFR. So if it is paying SOFR plus 7 on the original loan and it is receiving SOFR, so kya? The rate now becomes fixed. Yes, do we agree? But of course, if bank is the swap intermediary is paying SOFR, so it will also receive something. What will it receive? What will it receive? Of course, it will receive the higher rate in this case. So in this example of 5 to 5.1, it will receive 5.1. So what will the company pay? Company to swap intermediary 5.1%. तो इसका रेट क्या हो गया? Effective rate क्या हो गया? 12.1%. Is it fixed? Yes. Clear? People online, is this clear? Yes, absolutely correct. Now let's take a scenario 2 to complete our understanding of the swap here. Scenario 2 ले लेते हैं. The scenario 2 is the company wants a floating rate loan. Right? And यहाँ पे completeness के लिए मैं लिख दे देता हूँ. Existing lender is offering
the loan at 15%. Hypothetically, right? That is only what makes sense. Otherwise, you will always go with the original lender. यहाँ पे क्या हो रहा है? It will borrow a fixed rate loan, right? मान लो 15% में बोरो करता है, जो ऊपर एग्जांपल लिया था. अब इसको क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? It needs a variable loan. So what should it be paying? It should be paying SOFR. Everyone clear? So company to swap intermediary, what should this be? SOFR. Yes, do we agree? But it is paying SOFR, so it should also be receiving something. What will it receive if the swap intermediary has quoted a bid-ask spread of 5 to 5.1? 5%. Very good. So it will get 5% from the swap intermediary and it will pay SOFR to the swap intermediary. What is the effective rate? SOFR plus 10%. Is it variable? Yes. Existing lender is offering the loan at SOFR plus 12%. Make sense? Everyone? Clear? Yes, absolutely. Okay. So bid-ask spread is, bid-ask spread in case of swap is applied like this. So you may be, as I said, you may be given both, either the questions. One is there are two intermediaries and a bank, two counterparties and a bank, where the counterparties want to exchange and the bank is facilitating that. And it can also be you are directly having a swap with the intermediary, where you'll be given a bid-ask spread, and that is how you interpret the bid-ask spread. Clear, everyone? Sure. Very good. So this was interest rate hedging. Now let's look at an exam question. Solve it step by step. Understand some of these concepts which we've discussed in practice, and also there are a couple of other points which I will pick it up. Let me share the screen with the question. Okay. It's a straightforward question, but it is covering a few concepts which I want to focus on. Electroco. Let's read it, discuss it, and then we'll start solving it. So Electroco is a large listed company based in Europe, expecting to borrow 22 million euros. One point, please keep in mind, not every question will be for borrowing. Borrowing, of course, it's a more natural thing, but you can also expect a question for deposit. So please read the question properly before, concluding and starting with your answer. In 4 months' time on 1st May. So today's date is 1st May. Yeah, today's date is the 4 months' time. Samajhna hai wala point. It expects to make, we'll come back to this. It expects to make a full repayment of the borrowed amount 9 months from now. Okay. Currently, there is some uncertainty in the markets with higher than normal rates of inflation, but an expectation that the inflation level may soon come down. Okay. This has led some economists to predict a rise in interest rates and others suggesting an unchanged outlook or maybe even a small fall in interest rates over the next 6 months. Yeah. Is there uncertainty on the interest rates, or people are certain which way the interest rates will move? Based on this paragraph, we can say it's uncertain. Let's see aage kya ho raha hai. Although Electroco is of the opinion that it is equally likely that the interest rates could increase or fall by 0.5% in 4 months. It wishes to protect itself from interest rate fluctuations by using derivatives. Very good. The company can borrow at Ester plus 80 basis points. And Ester is currently 3.3%. If you are looking for the question in the book, you won't find it because this is in the earlier version. Time waste usme kar rahe ho, the question pad lo. The company is considering using interest rate futures, options on interest rate futures, or interest rate collars as possible hedging strategies. So we'll be discussing 3 hedging strategies: futures, options on futures, and collars.
The following information and quotes from an appropriate exchange are provided on euro futures and options. Margin requirements may be ignored. Very good. 3 months futures, 1 million contract size. Tick size or tick value पे भी आएंगे हम. As I said, I wanted to cover this through a question. Then given March, June, and September. Now, let's complete it and we'll come to the question. Options on 3-month euro futures, again, 1 million contract. Tick size, tick value, option premium or annual percentages. Call, strike, puts, giving you 2 exercise price, 96 and 96.5. It can be assumed that settlement for both the futures and options contract is at the end of the month. It can also be assumed that the basis diminishes to 0 at contract maturity at a constant rate and that time intervals can be counted in months. Right? Ab requirement padte. Briefly discuss the main advantages and disadvantages of hedging interest rate risk using an interest rate collar instead of option. So बोलता है अगर options की जगह आप collars use करोगे, what are the main advantages and disadvantages? 4 marks. Based on the 3 hedging strategy choices, Electoco is considering and assuming that the company does not face any basis risk, recommend a hedging strategy for the 22 million loan. Support your recommendation with appropriate comments and relevant calculations in euros. Okay. Requirement is very clear, straightforward requirement. Now let's start discussing and solving the question. So, few points. My first question was, is time 0 1st of May or the transaction date when you want to borrow is 1st of May? Very good. Very easy again to get confused if you don't read it properly. So if you read the question now again, the transaction date is 1st of May because it says a large listed company based in Europe is expecting to borrow 22 million in 4 months' time on 1st of May. Okay? And very smartly, if you see, the question has also given you September futures. So if you get confused, then you can take March, June, September. All 3 answers can be fit in your working. Okay? So 1st of May is the transaction date. Clear? Very good. Yes, absolutely. आगे चलते हैं. उसके बाद they talk about futures, their exercise prices, etc. So let's start solving and then we will keep discussing some of these points as we go along. Okay? I hope the question is clear to everyone. The question was not complicated, at least the way it was worded. So let's start with the calculations first, and then we'll come to the Word document to solve for the theory part and the discussion part. Because of course, again, sorry, before we start solving, so if you see broadly, 4 marks pure theory, 16 is a mix of calculations and recommendation. So again, you can, and there are 3 hedging choices. So approximate split about 10 to 12 marks for calculation, 4 to 6 marks for theory. So again, if you see the split, it's about 8 to 10 marks for theory, 10 to 12 marks for practical. So again, a pretty much equal split. And the standard 5 marks for professional marks will be awarded for the demonstration of skill in analysis and evaluation and commercial acumen. So how practical are you thinking? How well are you articulating your answers? How well are you solving your question? Okay. So again, as I said, 5 marks, absolutely free marks. If you're doing it properly, this is a given. Practice the way you would solve the question in the exam. Okay. So let's now start solving it. एक एक करके धीरे धीरे चलेंगे step by step, and then I also tell you कि exam में क्या करना है. So Electoco. Okay. 3 hedging techniques थी. So this is part B. Hedging strategies for borrowing of कितना था? 22 million. Okay. As I said, let's go step by step. Slowly, we'll solve everything and understand a few of these concepts. So let's start with the first. उसने क्या बोला था? Futures. So let's start with interest rate futures.
तो हमें एग्जाम में क्या क्या कैलकुलेशंस दिखानी है? So if you remembered yesterday when we were discussing interest rate futures, we talked about all these steps. क्या हमें एग्जाम में सारे स्टेप्स दिखाने हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिन नहीं है, फिर भी क्या हमें मार्जिन की लाइन लिखनी है? नहीं, we don't need to show all the steps. We'll start with what we have to show from an examination standpoint. So the first thing which we need to talk about is whether we are buying or selling interest rate futures. Okay, so that's the first thing which we have to mention. Now this question is for borrowing. Borrowing के केस में क्या होता है? Issue of bonds, like sell futures, correct? So as कौन सी कंपनी का नाम क्या था? Electoco, right? As Electoco is or is expected to borrow, it will sell futures. ठीक है? Clear? Yes, yes, correct. So this is an important point which we should definitely include in our exam answer. ठीक है जी? Next क्या था? Number of contracts. Yes, again calculation which needs to be included in the exam. Number of contracts. क्या था? This was नहीं, एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर से. ट्रांजैक्शन साइज डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन या ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन? ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन. ठीक है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, कैलकुलेशन दिखा सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, कैलकुलेशन क्या थी? 22 मिलियन डिवाइड बाय 1 मिलियन. बताना कितने मंथ्स के लिए बोरो करना था? 5 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्या है? 3. क्या एग्जैक्ट आएगा? नहीं आएगा. 36.66667 है ना? So it will not be a perfect hedge. Correct? Very good. क्या करना चाहिए? We always round it to the closest number. So in this case is 36.67. So we should round it off to 37. So then we should say Electoco will sell 37 futures contracts. Clear? Oh. So as said, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ, एग्जाम में लिखने की आपको फॉर्मूला जरूरत नहीं है. डेफिनेटली ये कैलकुलेशन दिखा सकते हैं. दिस इज गुड. ठीक है? यस यस, ओके, परफेक्ट. चलो जी, सो वापस आते हैं. So we talked about buy or sell, and we talked about number of contracts. ठीक है? Expiry date, again important point which we should show. Expiry date क्या होगी? क्यों? वापस आते हैं क्वेश्चन में. एक्सपायरी डेट कैसे चूज करते थे? क्लोजेस्ट टू द ट्रांजैक्शन डेट, बट आफ्टर योर ट्रांजैक्शन डेट इज 1st of May. विल यू चूज मार्च और जून? सितंबर तो ऑफ कोर्स बाद में हो गया. मार्च एंड जून. जून इज क्लोजेस्ट एंड आफ्टर, so we will choose June. Everyone is clear with this? Is it difficult? नहीं. ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? चाहे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? चलो जी वापस चलते हैं. एक्सपायरी डेट जून एज द ट्रांजैक्शन डेट इज 1st May. यस, क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? कॉन्टैक्ट द एक्सचेंज. So the contact the exchange is basically a summary of these 3 things which you mentioned here, but as I said, these are important points which we should highlight separately. Therefore, Electoco should buy sell. Sell लिखा था हमने? Sell 37 June futures contracts at
क्या था प्राइस जून फ्यूचर्स का? एट 96.16। तो यहाँ पे हमने एक्सपायरी डेट भी कर दी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी लिख दिए और अपना फ्यूचर्स प्राइस भी लिख दिया, प्लस जो बाय एंड सेल था वो भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन बताता कि आपको मार्जिन देना है इतना इनिशियल मार्जिन, तो वी वुड हैव एडेड अ लाइन जिसे इनिशियल मार्जिन टू बी पेड व्हेन एंटरिंग द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज दिस मच, एंड उसकी कैलकुलेशन दिखा देते। यहाँ पे मार्जिन नहीं है तो आई एम नॉट मेंशनिंग दैट एनीथिंग। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू सेट अप द फ्यूचर्स। क्लियर इंफॉर्मेशन टू बी शोन इन द एग्जाम फॉर श्योर। अब नेक्स्ट, अब सेटलमेंट पे आ गए, है ना? Now on the transaction date, you have to settle the futures contract and also actual borrowing. Question देखो क्या बोलता है, जब सेटल हो रहा है तो you need two data points. One data point you need is what is the actual interest rate, because your actual transaction on the transaction date will be undertaken at the actual rate. Second, you need the futures price. That is how you will square off the futures contract. जो आपने 96.16 पे सेल किया है उसको स्क्वायर ऑफ करोगे आप बाय करके. So you need the futures price as on the transaction date. In this question, are you given the futures price as on the transaction date? हाँ, निकाल तो सकते हैं. Are you given? My question was that. No. Are you given the spot rate? Yes. इस केस में दो कैलकुलेशंस होंगी. When the spot rate is increasing by 0.5% and when the spot rate is decreasing by 0.5%. So if you see, it is saying rise or increase or fall. So you will have two calculations for futures as well. And therefore you will have two futures rate, expected futures price in this case as well. Let's see how. कल हमने बेसिस की कैलकुलेशन करी थी, करेक्ट? वो बेसिस की कैलकुलेशन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? Let's start with the basis calculation and then we will come to the two scenarios where the interest rate is rising and the interest rate is falling. First, let's do the basis calculation. As the futures price as on the transaction date is not given, we will compute it basis the expected basis based on the expected spot rate and unexpired basis. Yes. Today, transaction date, expiry. Yes. बताना, आज की डेट दी थी इसने. ट्रांजैक्शन क्या है फर्स्ट में, एक्सपायरी क्या है 30 जून. टुडे डेट क्या है, तो फर्स्ट जैन फेब, सोच लो. ओके जी, स्पॉट रेट क्या है आज का 3.3. क्वेश्चन देखो, कहता है 3.3, कहता है एस्टर इज करंटली एट 3.3. फ्यूचर्स प्राइस क्या है जून के लिए 96 पॉइंट, फ्यूचर्स प्राइस 96.16. इसको मैं 3.3 लिख देता हूं जिससे कि कैलकुलेशन इजी रहे. यस, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है. क्या हम बेसिस कैलकुलेट कर सकते हैं? कितना है बेसिस, कैसे करते हैं? 100 माइनस 3.3 माइनस 96.16. सबको याद है ये? ओके, वापस जाते हैं क्वेश्चन पे. अब इसने दो तीन चीजें बोली है क्वेश्चन में, ठीक है? एक नीचे, एक इसने बोला है
It can be assumed that the settlement for both futures and options contract is at the end of the month. It can also be assumed that the basis diminishes to zero at contract maturity at a constant rate, and time intervals can be counted in months. Now, if this paragraph was not there in the question, then still we would have assumed all these things. Okay? The only difference is we would have written a note for the basis diminishing to zero and at a constant rate monthly. So these two things we would have included as notes, but in this case, because the question itself is clearly outlining these things, we will not include them again. ठीक है जी, तो पैराग्राफ नहीं भी होता तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता, सिर्फ दो नोट्स आ जाते हैं एडिशनल. Always remember, please include these notes. Whatever assumptions you are making, these key assumptions, they have to be included in your answer. यहाँ पे, as I said, नहीं लिखने की जरूरत है because the question is already giving you those assumptions. Clear? Sorry, let's go back. ठीक है, solve कर दे इसको. And we should actually show this working here and then solve it. The exam में सारी workings please दिखा देना so that they know how you've computed this. 0.54, clear? On expiry, what should be the answer? 0. Clear? Unexpired basis of the transaction date कैसे निकालेंगे? 0.54 multiply by May and June. 2 months का unexpired है. Total period कितना है? 1st Jan से 30 June. 6 months. Clear? ये कैलकुलेशन भी एग्जाम में दिखानी है. $0.18. Clear यहाँ तक? So now you have all the information to go to the settlement. ये additional working क्यों करी? Because futures price नहीं दिया हुआ था. As the futures price on the transaction date is not given, we will have to compute it based on the expected spot rate and an expired basis. ठीक है जी, तो अभी हमने इस कैलकुलेशन से क्या निकाल दिया? Unexpired basis of 0.18. Clear? अब हम क्या निकालेंगे? Expected spot rate in our, because the expected spot rates will be 2. Had it been one scenario तो मैं यहाँ पे सीधा कैलकुलेट कर लेता, बट अभी 2 हैं तो मुझे 2 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बट बेसिस की कैलकुलेशन सेम रहेगी. So I don't need to repeat this again. We have to be efficient in the exam. We only show what is relevant and what can give us marks. Okay, so now, if the scenario 1, expected, the interest rate is expected to, interest rate is increases. कितना था by 0.5%. तो कितना हो जाएगा? 2, 3.8, अभी 3.3 था. ठीक है जी, फर्स्ट सिनेरियो. चलो क्या करोगे अब? इसमें 2 ट्रांजैक्शंस होंगी. एक्चुअल बोरोइंग कितने में बोरो करोगे? नहीं, 3.8% में बोरो नहीं करोगे. वेरी वेरी सिंपल मिस्टेक टू मेक. क्वेश्चन पढ़ो. The company can borrow at a surplus 80 basis points. तो किस पे बोरो करोगे? 3.8 plus 80 basis points, 4.6% पे बोरो कर. Yes, Yash, 3.8 plus 0.8. तो actual borrowing bracket 3.8%, तो आपका रेट हो चुका है प्लस 80 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.80%. देख लो कितनी ऐसी चीज है जिसपे बहुत इजीली आप मिस्टेक कर सकते हो, एंड इट इज नॉट एट ऑल टेक्निकल और डिफिकल्ट. सो प्लीज व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स. डबल चेक कर लेना अगर लग रहा है ना, क्योंकि इस पे अगर मिस्टेक करोगे तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. द फाइनल आंसर विल आल्सो बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्टेप. क्लियर? So please let's not make a mistake on this. चलो जी, तो आप कैलकुलेट कर लो कितना बोरो कर रहे हो आप. 22 मिलियन बोरो कर रहे हो इनटू 4.6%. कितने मंथ्स के लिए बोरो कर रहे हो? 5 मंथ्स. कितने मंथ्स के लिए बोरो कर रहे हैं?
5 डिवाइड बाय 12 करेंगे। अगेन प्लीज डोंट फॉरगेट इंटरेस्ट रेट्स हैं, टाइम अपोर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम आपको पर एनम रेट्स ही दिए जाएंगे। तो अगेन अ वेरी सिंपल थिंग टू मिस, प्लीज डोंट डू दैट। क्लियर? दीज आर अमाउंट्स इन यूरोस। ठीक है जी, सॉल्व कर दे इसको। मैं एक्चुअली इसको यूरोस भी क्यों कर रहा हूँ, यूरोस 1000 भी कर सकता हूँ, तो चलो अभी कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया करेक्ट। क्लियर? अब फ्यूचर्स पे गेन होगा या लॉस होगा, और टिक्स मेथड जो हमने अभी तक मिस किया था वो भी आते हैं, टिक्स मेथड पे आते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूचर्स प्राइस निकालेंगे। अभी हमने फ्यूचर्स प्राइस नहीं निकाला है, करेक्ट? वेरी गुड, एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस निकालते हैं। सो एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस क्या होगा, कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस? अनएक्सपायर्ड बेसिस पता है, स्पॉट रेट पता है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पता है, क्या करोगे? तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस इज 100 माइनस expected spot rate या spot rate as on the transaction date 3.8 माइनस कितना 0.18। यस, क्लियर? 96.02। क्लियर? इजी, वेरी गुड जी। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। एक उससे इंफॉर्मेशन दी थी, टिक साइज 0.01%। ये स्टैंडर्ड टिक साइज होता है, ये नहीं भी बोलेगा तो हमें क्या लेना है, 0.01%। दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू। टिक वैल्यू कैसे निकाली उसने? वेरी गुड, तो ये भी कैलकुलेट करके भी देख लेंगे, ये आना चाहिए। चलो, सो एज आई सेड, टिक टिक साइज 0.01%। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलेगा तो फॉर इंटरेस्ट रेट दिस इज द स्टैंडर्ड टिक साइज, दैट मींस स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। सो टिक साइज कैसे निकालेंगे? $25 था टिक साइज, नहीं सॉरी, टिक साइज 0.001% था, दिया हुआ है। यस, टिक वैल्यू दिया हुआ है उसने, यूरोस 25। नहीं दिया रहता तो कैसे निकालते हैं बताना, नहीं दिया रहता तो कैसे निकालते हैं? 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.01% मल्टीप्लाई बाय 3/12। क्या ये 25 आएगा? यस, आना चाहिए, अगर कोई मिस्टेक नहीं करी है तो। करेक्ट? अगेन ये क्वेश्चन ने दे दिया, ये दोनों चीजें नहीं देता तो अगेन दिस इज द स्टैंडर्ड। यस यश, so Yash is saying, can we explain what a standard, what a tick is? Absolutely, बिल्कुल। So the tick is, whenever we are computing profit or loss on futures, we always follow the tick approach, right? Again, it's a standardized approach based on the practices followed in the on the futures exchanges all over the world. क्या होता है, नंबर ऑफ जो मिनिमम प्राइस मूवमेंट होता है एक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में, दैट इज 0.01%। दैट इज द मिनिमम प्राइस मूवमेंट इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज द टिक, क्वेश्चन पे जाता हूं वापस, दैट इज द टिक साइज। टिक वैल्यू क्या होता है कि अगर टिक साइज 0.01% है तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो कितनी चेंज हो रही है। तो वो यहाँ पे 25 यूरोस दिया हुआ था, नहीं भी दिया होता तो हम कैसे निकाल सकते थे, हम उसको निकाल सकते थे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज विच इज 1 मिलियन यूरोस इंटू द टिक साइज विच इज 0.01% इंटू द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन विच इज 3 months। दैट गिव्स अस a number of 25 euros। Yash, is that clear? So tick, as I said, is the standard minimum price movement or interest rate movement for interest rate futures। ये भी फॉरेक्स में भी देखेंगे, इट्स सेम लॉजिक। यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में, वहां पे फर्स्ट परसेंटेज टर्म्स में नहीं होगा।
तो आपका टिक साइज आ गया, टिक वैल्यू आ गया, फिर क्या निकालते थे? नंबर ऑफ टिक्स। नंबर ऑफ टिक्स का मतलब क्या हुआ कि आपका फ्यूचर प्राइस जो है उसमें कितनी मूवमेंट हुई, एक्चुअल मूवमेंट कितनी हुई। नंबर ऑफ टिक्स कैसे निकालते हैं? आपका फ्यूचर्स प्राइस क्या था जो आपने लॉक इन किया? 96.16। 96.16 से प्राइस क्या हो गया? 96 पॉइंट। वेरी गुड। गेन हुआ या लॉस हुआ? आपने सेल किया 96.16 पे, आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हो 96.02 पे, मतलब बाय करोगे 96.02 पे, इट्स अ गेन, इट्स अ प्रॉफिट। सो योर नंबर ऑफ टिक्स विल बी 96.16 minus 96.02 डिवाइडेड बाय 0.01। कि भाई अगर आपका स्टैंडर्ड टिक मूवमेंट इज 0.01%, तो इन योर केस व्हाट वाज द एक्चुअल नंबर ऑफ टिक्स, एक्चुअल नंबर ऑफ मूवमेंट्स। इसको सॉल्व कर देंगे। फोर्टीन टिक्स समझ में आ गया? प्रॉफिट ऑन फ्यूचर्स, रेफर वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1, expected futures price and profit on futures। यस, कैसे निकालेंगे? कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे? 37। एक कॉन्ट्रैक्ट पे क्या मूवमेंट हुई? नंबर ऑफ टिक्स कितने थे? 14। पर टिक की वैल्यू क्या है? 25। तो टोटल प्रॉफिट कितना आना चाहिए? Total profit on futures is 12,950 euros. We are just saying tick is marginal movement, tick value is the value per marginal movement. Correct, correct. And number of ticks is the actual movement in the ticks based on the futures price, which can be a gain or a loss. So this is the profit. This is the actual borrowing cost. तो प्रॉफिट है तो इसको मैं नेगेटिव में दिखा दूं, तो आपको फ्यूचर्स में पैसे मिल रहे हैं। यस, तो नेट कॉस्ट क्या आती है? 408717। अगर नेट कॉस्ट ये आती है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? कितना इंटरेस्ट दिया? 408717। कितने अमाउंट पे? 22 मिलियन यूरोज। कितने मंथ्स के लिए था? This will give you the effective interest rate 4.46। यस, हमने क्या कल डिस्कस किया था? ये आंसर को हाईलाइट कर दो। जो भी वर्किंग नोट्स है वो दिखा दिया हमने। यस, एंड जो रेलेवेंट कैलकुलेशंस थी स्टार्टिंग में टू सेट अप द कॉन्ट्रैक्ट, सेट अप द फ्यूचर्स, वो भी हमने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन सो फार? वेरी गुड। इफ नॉट, प्लीज सॉल्व फॉर सिनेरियो टू योरसेल्फ। Everyone, please solve the scenario to yourself and tell me what is your net answer. Scenario 2, interest rate decreases by 0.5% to 2.8% हो गया। ये सारी चीजें सॉल्व करो और मुझे बताओ। बहुत सारी चीजें तो सेम रहेंगी। एग्जाम में you can use the copy paste function. So once you've solved for one part, you can always replicate that by copy pasting it and just make the necessary changes.
आते आते पेशेंस पेशेंस, पहले सॉल्व तो करें सारे, फिर डाउट पे आऊंगा तेरे। एक्चुअल बॉडी कितनी हो गई? 2 पॉइंट, यस, तो ये 3.6% हो जाएगा। फ्यूचर्स की कैलकुलेशन आप करके बता रहे हो मुझे? एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस क्या होगा? क्या एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस चेंज होगा यहाँ पे एवरीवन? यस, बिकॉज the expected futures price is based on the spot rate, expected spot rate, and an expired basis. So your expected spot rate is now 2.8 instead of 3.8. So this 96.02 will also change. You should always apply logic as well. आपने, हाँ चेंज कर रहा हूँ एक सेकंड, आपको लॉजिक भी अपने आप समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे। इफ यू सी, यू आर लॉकिंग द फ्यूचर्स प्राइस एट 96.16, मतलब क्या रेट लॉक इन कर रहे हो फ्यूचर्स का? 3.84%। आर यू लॉकिंग इन 3.84%? Are you locking in 3.84%? If your futures price is 96.16, are you locking in 3.84%? Yes? Clear? Plus 0.8%. कितना लॉक इन कर रहे हो? 3.8 प्लस 0.8, 4.6% लॉक इन कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट हेज। आपने ओवर हेज करा है यहाँ पे, so your rate will be slightly lower than 4.6%. स्लाइटली लोअर आ रहा है? यस आ रहा है। आएगा, आना चाहिए, यस आना चाहिए। चलो सिनेरियो 2 बताओ, लेट्स सॉल्व फॉर इट। एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 2.8, 97.02 आ रहा है। टिक साइज रिमेन्स द सेम, टिक वैल्यू रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ टिक्स। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? आपने सेल किया था 96.16 पे, you are squaring it off at 97.02, so you have a loss 97.02। नहीं, पर मेरे को नंबर ऑफ टिक्स का कॉन्सेप्ट समझाना था यहाँ पे, इसलिए मैं दिखाऊंगा। 86 क्लियर? प्रॉफिट ऑन फ्यूचर्स नहीं है, क्या है? लॉस ऑन फ्यूचर्स। एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस दिखाना जरूरी है, बिल्कुल कैलकुलेशन उसकी दिखानी जरूरी। तो लॉस ऑन फ्यूचर्स, यस, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 37 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 36, तो सॉल्व कर देंगे तो लॉस आ जाएगा 79,550। नेट कॉस्ट कितनी आई? 409,550। यहाँ पे कितनी आई थी? 408,717। स्लाइट डिफरेंस विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, नहीं तो एग्जैक्ट आएगा ये। हाँ हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स राउंडिंग ऑफ। So this is slightly different. This is 4.46, this is 4.47, this is because of rounding off. Otherwise, this would have been exact. Any questions now? Raghav, you had a question. Yes. करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आपने अलग अलग करे दो। याद है उसमें हम दो वर्किंग्स करते थे, एक में ओवर हेजिंग अंडर हेजिंग करते थे, एक में सिर्फ एक्चुअल ट्रांजैक्शन और प्रॉफिट लॉस दिखाते थे। तो इसमें आपने कर दिया। व्हाट एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? पता, आगे चले। चलो जी, टाइम
So this was interest rate futures. Now let's do interest rate options. कल हमने दो टेक्निक्स डिस्कस करी थी एक्सरसाइज प्राइस की, राइट? फर्स्ट वाज यू से द लीस्ट टोटल कॉस्ट और हाईएस्ट नेट रिसीट. इस केस में तो बोरिंग है, so it will be total cost, right? The second technique was if there are two exercise prices and the rate interest rate movement is not sure, can go up, can go down, then you take both the exercise prices and compute the profit and loss for both. Sir, in some questions, tick size is not available, then we assume it to be 0.01% and continue with the. Yes, absolutely. For interest rate, the standard tick size is always 0.01%, unless otherwise mentioned in the question. And I don't think I've seen a question where it is other than 0.01. It'll either be mentioned or not mentioned, but the value should be the same. Yep. Sorry, how is that? So interest rate options. यहाँ पे interest rate is moving in both directions or can move in both directions, and we have two exercise prices, 96 and 96.5. तो क्या करेंगे? Second method, that means we'll have to take both the exercise prices and we'll have to take both the scenarios when the interest rate is increasing and the interest rate is decreasing. Let's start. Again, some of the steps similar to futures, we also have to include for options when we are setting up the option. So जो हमने futures में किया था, few of those workings will be done here as well. Let's quickly do it. These are the steps, right? So as I said, some of the things which we've done there are equally applicable here, but we can also copy paste some of the things from there because these are options or interest rate futures. तो आपका base जो है वो क्या है? Futures. So first, buy or sell as electo needs to borrow funds. It should hedge by buying put or call. क्योंकि आप futures sell करना चाहते हो, right to sell will be given through a put option, buying put options, correct? क्या number of contracts फिर से दिखाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में it's the same euro month futures, जो 3 month euro futures थे, यहाँ पे 3 month euro futures है. So do we need to show the contract size again? No. Calculation again? No. We can use the same contracts. What do we need to show? Extra चीज क्या है? Exercise price, right? क्या expiry change हो रही है? क्यों नहीं रह रही है? Correct? So as I said, a lot of the things which you've already done for futures, we don't need to repeat that. Clear? आगे चलें. So contract, number of contracts will be 37 as computed above, and the expiry will be June as the transaction date is 1st May. ठीक है जी, क्लियर है? लिख दिया आपने? लिख दिया आपने बाय सेल करना है तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एक्सपायरी क्या है. अब आते हैं एक्सरसाइज प्राइस पे या स्ट्राइक प्राइस. उसके लिए वी हैव टू कंसिडर बोथ as the interest rate is expected to increase or decrease by 0.5%. We will test the results using both the exercise prices. That is, क्या है? 96 and 6.5. ठीक है जी, क्लियर? यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड. अब क्या करोगे? नेक्स्ट पे चलते हैं. प्रीमियम भी 2 होंगे आपके, so everything will be 2. So instead of doing it again, we can start with the scenarios and show the premium and the calculation one by one. Sir, why did we not calculate the overheads calculation in the futures? Okay, so question is, why did we not show the overheads calculation in futures? So if you see, we don't need to show that because we are showing the actual borrowing separately
and the profit and loss on futures separately. So automatically, those overhead calculations have been factored in. We will show overhead calculations separately only when we are showing the net result. Because net result will only take into account what? The amount of futures. So you'll have to show that overhead or underhead calculation separately. But because here we are doing the actual borrowing working separately and futures working separately, so automatically the overhead underhead position is being settled. You don't have to show that separately. Yep. Very good. आगे चलते हैं. सब यहाँ पे again same scenarios जो यहाँ पे थे. Scenario 1. Of course, the workings will change, and you will have two workings. Scenario 1 interest rate increase by 0.5 to 3.8 हो गया. अब इस पे क्या दो सिनारियोज होंगे, दो कैलकुलेशंस होंगी. एक्सरसाइज प्राइस यहाँ लिख देता हूँ. एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 96 था. 96 और दूसरा क्या था? 96.5. चेंज कर देता हूँ. ठीक है जी. और आई नीड टू शो द वर्किंग्स. तो 4 कॉलम्स. ठीक है. चलो एक्सरसाइज प्राइस हो गया. ठीक है. इस केस में फ्यूचर्स प्राइस क्या है? क्या फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं, आपने ऊपर कैलकुलेट कर दिया. फर्स्ट केस में फ्यूचर्स प्राइस कितना आया था? 96.02. 96.02. यहाँ पे एडिशनल स्टेप क्या होता है? यू चेक whether you need to exercise the option or not, but you don't need to calculate it again, right? So exercise put option है. put option है, ध्यान से. right to sell. If the price is 96.02, will you sell at 96? No. If the price is 96.5, the exercise price, will you sell at 96.02? No. So in this case, second case, you will exercise. In the first case, you will not exercise. No. Yes. Yep. अभी तक सबको clear? At 96, we won't exercise. Correct. Correct. ठीक है जी. So again, going step by step. Exercise के बाद क्या? Gain or loss. जहाँ पे exercise कर रहे हो वहीं पे gain होगा. Loss तो होगा नहीं. Gain or loss नहीं, सिर्फ gain. Yes. Options है, ध्यान रखना. You'll never have a loss on options. The maximum loss on options will be the premium cost, which you've already incurred, so it doesn't matter. So, gain on options. यहाँ पे तो जीरो है, कुछ भी नहीं होगा. यहाँ पे कैसे निकालेंगे गेन ऑन ऑप्शंस? 96.5 पे आपने सेल करा, मतलब एक्सरसाइज करा, प्राइस वाज 96.02. Number of ticks, the same tick calculation will be worked, will be relevant here as well. बता के बताओ कैसे करेंगे? 96.5 minus 96.02 divide by 0.01. तो ये तो कर दिया आपने. नंबर ऑफ टिक्स, this multiply by into 25 into number of contracts. Exact same way you've used you've calculated this futures, you will also do it one option, because again logic, options on interest rate futures, so the base is the same. कितना प्रॉफिट आ गया? 44,400 euros. क्या ये कभी लॉस हो सकता है? नहीं. आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे अगर लॉस होगा. ध्यान रखना, फ्यूचर्स में लॉस हो सकता है. यस. ओके. ऑप्शन में एक बार अमाउंट आपने क्या पे किया, तो ये गेन है, इसको मैं नेगेटिव दिखा देता हूं. प्रीमियम, is premium dependent on exercise? No. How much premium will you pay when the exercise price is 96? क्या था अमाउंट बताना? 96 जून. Put, call, put
0.163%. Again, there is a line quoted which says option premiums are in annual percentage. ये line नहीं लिखता तो भी you will always assume that the option premium is annual percentage. That means you have to time apportion the premiums. Always remember for options, interest rate options, even if this line is not mentioned in the question, assumption will be annual percentage. वापस जाते हैं. Premium in case of 96 कितना है? कितना है? 0.163%. 163%, okay. Multiply by 3/12 into 37 into 1 minute. क्या किया हमने? परसेंटेज प्रीमियम को पहले टाइम पोर्शन कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किससे किया? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पर कॉन्ट्रैक्ट साइज. सिंपल टर्म जिसको आप टिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा. $15,078. यस, क्लियर. यहाँ पे क्या है? सेम चीज बताओ. 0.163 की जगह कितना हो गया? 0.581. So same, everything else remains the same, just the percentage change. 0.581. Yes, सॉल्व कर देते हैं इसको. वो परसेंटेज हटा दिया मैंने सोचा इतना प्रीमियम कौन देगा. $53,743. Yes, clear, everyone. This is the cost which you have to incur, irrespective whether you exercise the option or not. Okay, let's move on. आगे चलते हैं. अब क्या है? एक्चुअल बोरिंग बचा बस. You considered the premium, you considered the gain on options. Second case में the gain on options is less than the premium amount. Interesting. चलो जी. एक्चुअल बोरिंग, क्या एक्चुअल बोरिंग चेंज होगी? नहीं. क्या ऊपर आपने कंप्यूट कर दिया था एक्चुअल बोरिंग का अमाउंट? यस. क्या फिर से दिखाने की जरूरत है? नो. जब इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट ये थी. यू डोंट नीड टू शो दैट अगेन. ठीक है, क्लियर. अब क्या करें? फर्स्ट नेट कॉस्ट आ गई आपकी. फर्स्ट केस में कितनी आ रही है? प्रीमियम प्लस एक्चुअल बोरिंग 436. सेकेंड केस में कितनी आ रही है? और इसमें गेन ऑन ऑप्शन एडजस्ट हो जाएगा 431. यस, सेम चीज जो आपने ऊपर कैलकुलेशन करा था, परसेंटेज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल दो. दिस डिवाइड बाय 22 था इंटू 12/5 4.76 4.7. Now can you please all compute scenario 2? Please compute scenario 2. If there are no questions, if there are questions, please ask me. If no questions, please compute scenario 2. Everyone, please continue. हाँ दोस्त, एक सेकेंड. प्रीमियम ये लो. हाँ हाँ, क्या दिखाऊं यहाँ पे? ठीक है, चलो. Everyone, please give me the answers. Effective interest rates in scenario 2.
It will be very quick, very quick if you understood the concept. हमेशा, unless otherwise mentioned. कभी क्वेश्चन में बोल दिया 3 months के लिए ही है तो अलग बात है, otherwise always consider annual percentage. Annual percentage है and you're borrowing it, मतलब your contract says for 3 months, तो आप उसको टाइम ऑफ पोर्शन करोगे. चलो कैलकुलेट प्लीज. क्या आ रहा है सेकंड केस में? क्या आ रहा है सेकंड केस में? फ्यूचर्स प्राइस 97.02 था, यहाँ पे 97.02 था, सेल कर रहे हो 96 पे, 97.02 एक्सरसाइज करोगे? नो. यहाँ पे एक्सरसाइज करोगे? 96.5 है, 97.02 हो गया? नो. When you're selling at 96.5, why will you, sorry, when you strike price is 96.5 but the market price is higher, why will you exercise? क्या कोई गेन इन ऑप्शन होगा? नो. जीरो. क्या प्रीमियम अमाउंट चेंज होंगे? नहीं, सब कुछ सेम रहेगा. तभी मैंने बोला बहुत क्विक कैलकुलेशन है अगर आप समझ रहे हो. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट देन इट्स सुपर इजी. जस्ट अ कॉपी पेस्ट व्हिच यू कैन आल्सो डू इन योर एग्जाम. एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट क्या सेम चेंज होगी? नहीं, जो आपने पहले कैलकुलेट करी थी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट वही रहेगी. कितनी थी? 330. दिस वाज द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट. यहाँ पे 330. खत्म, कैलकुलेशन खत्म. नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट, effective interest rate, 3.76, 4.19. Once you've done the first calculation, the second calculation will not even take a single minute. And as I said in the exam, you can copy paste. So don't get overwhelmed by the number of workings. Do it the first time, second time it's just a copy paste. Clear? Everyone? What about the others? People online? Yes, yes, you said yes. Baki log, everyone, comfortable? Should we move on to the colors calculation now? Scenario 1. Yep. Should we go to color? Colors. Colors में क्या कर रहे थे हम? बाय कॉल, बाय पुट. बाय पुट क्यों कर रहे हैं? लोन लेना है तो हमारा जो स्टैंडर्ड सेट है दैट रिमेन्स द सेम. So if we are hedging for a borrowing, we will always buy put, but to reduce our premium cost and also have that range bound outcome, we will sell a call. So as Electroco is needs to borrow, it should sell, buy put and sell call to set up the caller. Easy. Second step, at what price should you buy the call, sell the call, and what price should you buy the put? इसका मैंने क्या बोला था आपको टेक्निक? What is the thumb rule to be applied? Positive and closest to zero. So there are two possibilities. You buy put at 0.163, you sell call at 0.00 for 0.090. Second possibility, you buy the put at 0.581, sell the call at 391. चेक करके बताओ कौन से में आ रहा है क्लोजेस्ट टू जीरो एंड पॉजिटिव. तो एक सेकेंड, लेट्स एक बार दिखा देते, कैलकुलेशन देख लेते हैं. ऑप्शन 1 क्या था?
put at 96, sell, call 96.5. नहीं नहीं, अरे दोनों के बताओ ना, एक बार वर्किंग्स बताओ ना मुझे, कितना आ रहा है प्रीमियम, कितना है अगर बाय करते हो पुट? इफ यू बाय पुट एट 96 तो कितना आ रहा है प्रीमियम, कितना देना है? 0.168 ये देना है। और सेकंड में कितना आ रहा है? सेकंड में कितना कितना मिल रहा है आपको इसमें? अरे व्हाट इज द कॉल का पुट प्राइस यार? 96.5 का 0.09, ये तो बताना है। 09, ये क्या है? 3, ये तो नेट प्रीमियम कितना हो रहा है? 0.073 ये हो रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या था? ऑपोजिट। कॉल एट 96.5, पुट 96, सॉरी कॉल एट 96, पुट एट 96.5। इसमें कितना, कॉल में कितना मिलेगा? 0.0391 ये मिल रहा है। और कितना देना पड़ेगा? 0.581, 518। तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? Which is closest to 0 and payable? Both are payable. Which is closest to 0? Option 2 क्यों बोल रहा था? Please, in the exam, don't apply too many shortcuts and make a mistake. So again, I will repeat. The thumb rule for setting up a collar is you start with what you have to do original in an option case. In this case, you have to borrow. You start with buying a put, and then to complete a collar, what do? You sell a call. Had it been a deposit, then you would have bought a call and sold a put. That's clear. Then the second point is, how do you choose the exercise price for your put and call? It has to be different. Yes. But in this case, there were two options. How do you decide which one to buy, which one to use for put, which one to use for call? The thumb rule there is, you take both the scenarios and compare the net premium cost. The net premium cost should be net premium cost should be closest to 0 and net payable. So in this case, both are net payables, but which one is closest to 0? Option 1. ठीक है? Clear? कोई बात नहीं है, अभी हम ज्यादा सिनेरियो एनालिसिस नहीं करेंगे 10 दिन पहले एग्जाम के, राइट? So therefore, the rationale is to reduce the net premium cost. Cost मतलब already payable होना चाहिए, ठीक है? Therefore, 5 put at 96 and sell call at 96.5. Yash, is that clear? You had a question around how, लेकिन दोनों सेटअप्स में तो नेट कॉस्ट भी डिफरेंट आएगी. So why do we use only the premium as the basis for a collar? So why do we use the basis premium as the basis for the collar? Is because the fundamental objective, जो हमारा फर्स्ट थ्योरी का क्वेश्चन था, जो भी हमने स्किप करा हुआ है, जो हम करेंगे, where it asks us to talk about advantages and disadvantages of a collar. So the fundamental basis for entering into a collar is to reduce your net premium cost. So therefore, in both the cases, the net premium cost becomes the basis for setting up the collar. And yes, in the exam, you may be given a situation where in one case you have a net premium cost, in the second case you have a net premium receivable. So we always choose the net premium cost. So therefore, I said net premium cost should be closest to 0 and net payable. That is the thumb rule which you have to follow in the exam.
when you are setting up a column. Clear? चलो जी, तो अभी आ गया ये excuse me, this you don't have to show in the exam. ठीक है? You can do it for yourself, but you don't have to show this in the exam. You can just include the line as I have mentioned in the at the top. मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, not relevant for the exam. That is, need not be included in your answer. ठीक है? क्लियर? चलो आगे चले. तो हमने कॉलम सेटअप कर दिया. अब क्या करेंगे? एग्जैक्ट सेम चीज जो हमने ऊपर करी थी. तो एग्जैक्ट आपने ऊपर किया था फ्यूचर्स के लिए, या इसके लिए लोग कोई भी करना कर सकते हैं. लेट मी टेक दिस एज द बेस. इतनी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है ऑफकोर्स कॉलर में, बट लेट मी टेक दिस एज द बेस और फिर इसी को मॉडिफाई कर देंगे. सिनेरियो 1, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस. अब इसमें क्या है? यहाँ पर हमने क्या किया हुआ था? बाय पुट सेल कॉल. बाय पुट किस पे था? 96. सेल कॉल किस पे था? 96.5. फ्यूचर्स प्राइस चेंज होता है? नहीं. एक्सरसाइज यहाँ पे करोगे? नहीं. क्या यहाँ पे जो कॉल बायर है वो एक्सरसाइज करेगा? अगर एक्सरसाइज प्राइस 96.5 है और मार्केट में 96.202 है, क्या वो एक्सरसाइज करेगा? नहीं करेगा. इट्स आउट ऑफ द मनी. If there is a net receivable and net payable, what should be the right on theory? Whereas we did choose the net payable. You should write what I wrote. It's a net payable cost. I wrote the rationale is to reduce हो गया. Reduce the net premium cost. Therefore, buy put at 96 sell call net premium cost. It always you choose the payable option. You can write what I mentioned. That's absolutely fine. Yep. Okay. So, क्या यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा? नो. क्या कोई गेन ऑन ऑप्शन या कुछ दिखाने की जरूरत है ना? गेन ऑन ऑप्शन 0. क्या यहाँ पे गेन होगा? सेल कॉल के केस में कभी भी नहीं होगा. तो यहाँ पे गेन लॉस ऑन ऑप्शन दोनों केस में कुछ नहीं है, बिकॉज कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा. यस. नाउ आई डोंट नीड टू शो दीस टू वर्किंग्स. यहाँ पे मैं सिर्फ नेट प्रीमियम दिखा सकता हूँ. बिल्कुल दिखा सकता हूँ. कितना है नेट प्रीमियम? कितना है नेट प्रीमियम? 6-7 नहीं. कैलकुलेट कैसे करा भाई? 37 into 1 million into 0.073% into 3 by 12. 6753. नेट प्रीमियम कॉस्ट. एक्चुअल बोरिंग कितनी थी? एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कितनी थी? ऊपर आपने कैलकुलेट करा हुआ है? नहीं 330 नहीं, 421. यस. नेट कॉस्ट कितनी आ गई? 428 419. यस. नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ गया. ठीक है. क्लियर. नाउ सेम थिंग for scenario 2 where the interest rate decreases. Again, a lot of the figures you've already computed. क्या था? 330 था ना इसमें एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट. ये 330 था. नेट प्रीमियम चेंज होगा? नहीं होगा.
97.02 क्या थे? क्या आप एक्सरसाइज करोगे? Will you exercise? Put option. Will you exercise the put option? No. Sell call में will the call buyer exercise the call option? Yes. The price in the market is the price futures price is 97.02. आपके पास क्या है? आपके पास मतलब यू आर द सेलर, ऑप्शन टू बाय है, तो आपको तो ऑनर करना पड़ेगा. Therefore, in this case, will you exercise? मतलब will the call buyer exercise? Yes. क्या इसमें आपके इस केस में आपको लॉस होगा? लॉस होगा. कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे. ये अमाउंट क्या आएगा? नहीं नहीं, वर्किंग स्प्लिट बताओ. 97.02 minus 96.5 divided by 0.01. Yes, into 57 into 25. एग्जैक्ट सेम वर्किंग सब तो इतनी बार कर चुके हैं हम, सबको याद होनी चाहिए. 48,100. क्या ये कॉस्ट है? यस. इससे लॉस. इसको मैं एक्चुअली उल्टा कर देता हूँ, गेन को ब्रैकेट में डाल देता हूँ और लॉस को, क्योंकि बाकी सारी भी कॉस्ट है. यस. ओके. एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट ऊपर से आ गई, प्रीमियम सेम रहा. नेट कॉस्ट कितनी है? दिस प्लस दिस 384,853. Effective interest rate 4.2%. These are all the workings. Of course, we've taken a lot more time because we've explained, discussed every concept, every step here in the exam. Excuse me. Of course, you won't take so much time. Plus, it's, as I said, it's very easy. Once you've done first calculation, then a lot of the calculations can be repeated. So you can leverage on that. As I said, copy paste is there in the exam, in your ACCA exam spreadsheet. So please use that and you'll be able to solve this much quicker. ठीक है जी, चले आगे सॉल्व करें, उसको कंक्लूड करें. So these are the workings. Again, step by step, properly referencing it and highlighting our answers, including all the notes, including all the workings. Excuse me. This is exactly how you should do also. How you should attempt such a question in the exam. Okay? Any questions? Any doubts? Yes. कौन सा वाला बताओ? अच्छा, तो हम देख रहे थे नेट प्रीमियम कॉस्ट किसमें कम आ रही है. तो ऑप्शन 1 था where you are buy put at 96, so you'll have to pay the premium. Sell call, so you'll receive the premium. तो नेट प्रीमियम कितना हो गया इस केस में? कॉल सेल करोगे अदर प्राइस पे तो इतना मिलेगा, बाय करोगे तो इतना देना पड़ेगा. तो व्हाट इज नेट प्रीमियम कॉस्ट? 0.127, which is lower and payable. So lower in the sense closer to 1 and closer to 0 and payable. Both are payable but closer to 0 कौन सा? 0.073. Therefore you should sell call at 96.5, buy put at 96. Clear? पक्का? आगे चले, अब थ्योरी पार्ट्स पे चले दोनों. Again, theory is important here because, as we discussed, it has the amount of weightage, and also from a professional mark standpoint, that will give you 5 marks if you write it properly. So let's quickly go to the theory then. Excel में लिख दो, एग्जाम में तो वर्ड में लिख ही दोगे, है ना? I can write it here only. So part A was advantages and disadvantages.
of callers over options? यही था question. So the question, पढ़ लेते एक बार. Briefly discuss the main advantage and disadvantage of hedging interest rate risk using an interest rate collar instead of option. यही था, right? 4 marks. So we should write 4 points to each. है हमारे पास to each. आप लोग बताओ. So I think we've discussed few of these points, right? What is the biggest advantage of a collar over options? Lower premium cost, right? What is the biggest disadvantage? So before we start writing, एक बार देख लेते हैं. If you see, when the interest rate was rising, your effective interest cost, or effective cost for option was 4.7 and 4.76. In case of collar, when the interest rate was rising, your effective cost was 4.67. So in the same range, but slightly lower. Why was it slightly lower? Because your premium cost was less. Second case, when the interest rate was falling, it was 3.7 and 4.19. In this case, it was 4.2. So again, it is less because the premium is lower, but is it still not as low as 3.76 because you are not able to take the entire benefit of the upside, which you were able to take in the falling interest rate scenario, and you let the option lapse. So that's the biggest disadvantage. Yes, does that make sense? What is the comment online? Premium cannot enjoy. Absolutely correct. So these are the key points. If you see the question also, it says briefly discuss the main advantage and disadvantage. Advantages and disadvantages नहीं लिखा because actually और ज्यादा point है नहीं इसमें. क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे? क्रिकेट कमेंट्री थोड़ी देगा वहां पे, राइट? सो व्हाई इज इट कॉम्प्लेक्स? अबे वो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया है. You have to think from a commercial businessman standpoint. फाइनेंस मैनेजर हो तो फाइनेंस डायरेक्टर हो, ना कि ACCA स्टूडेंट. तो कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कर देगा कि अरे can we later link it to the case? So yes, we will link it to the case, not in this part. So if you see, part A is just briefly discuss the main advantage, disadvantage of interest rate risk using interest rate collars. In the second part, where you say support your recommendation with appropriate comments and relevant calculations, that is where we'll do the linkage. So in part A, it will just be theory. Part B, when we start writing, that is when we'll link it to our calculations. ठीक है? तो पार्ट ए में नहीं करना लिंक, बिल्कुल नहीं. सर अप्रोक्सीमेटली, सो क्वेश्चन इज पार्ट बी में थ्योरी कितनी होगी? आई एम एक्सपेक्टिंग 10 to 12 मार्क्स फॉर वर्किंग्स, 4 to 6 मार्क्स फॉर थ्योरी. तो अबाउट 8 to 10 मार्क्स टोटल थ्योरी के हो गए, बाकी 10 to 12 मार्क्स वर्किंग्स के हो गए एंड 5 मार्क्स प्रोफेशनल. तो अप्रोक्सीमेटली वही 40 to 50% थ्योरी. यू कैन नॉट एस्केप इट. ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो अदर वे टू डू इट. Since day one, I've been saying that. बट ये सोचो ना यार, इतने छोटे से 2 पॉइंट्स लिखने के 4 मार्क्स मिल रहे हैं. सो अगेन, टेक थ्योरी एज अ पॉजिटिव थिंग. एग्जैक्टली, कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दी गलती से, तो थ्योरी ठीक से लिखी तो उसके मार्क्स पूरे मिलेंगे, स्टेप मार्किंग में मिलते हैं. बिल्कुल, तभी हम इतने सारे वर्किंग्स दिखा रहे हैं, सो दैट everything is clear and we'll get marks for the individual steps as well, even if there's a small mistake we made in the main answer. Absolutely correct. What we've done in the class, that is what we have to do for professional marks as well. Explaining everything, whenever we are giving a view, giving a complete view, not just giving one view, ensuring that we are covering all the aspects. The presentation
has to be professional. All of those things will contribute towards professional marking. जैसे यश ने बोला क्लास में, complex, negative marks. So let's start quickly writing. Advantage, disadvantages. What we discussed. Key advantage is reduction in the net premium cost in case of a collar as compared to an option. Yes. और क्या लिखना चाहिए before we come to the second point of disadvantage? और क्या लिखना चाहिए? Correct. So what we should do in such a case, we should elaborate a bit more. How are you achieving this? So I will start. My first line will not be key advantage. I will start by saying what is a collar. Because part B में हमने compute किया है, part A में हम सिर्फ बता रहे हैं. So we should start by saying what is a collar. So a collar involves simultaneous buying and selling of put and call options. Example. Borrow का केस है, एग्जाम्पल दे दो. इन केस ऑफ, अच्छा एक और चीज, ये इंटरेस्ट रेट कॉलर है ना, क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट रेट कॉलर बोलता है ना. using collars to hedge interest rate risk involves simultaneous buying and selling of put and call options. In case of borrowing, the hedger, the borrower will buy put options and sell call options at different exercise prices. Yes. और क्या लिखना चाहिए as the base? और क्या लिखना चाहिए? नहीं, this. What will happen here? नहीं, वो नहीं. अरे रेंज के पहले दोस्त, आपने बाय किया पुट, so you will pay premium, and sell किया calls you will receive. So again, elaborate on that. No, buying a put, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका एडवांटेज फ्लो थ्रू हो जाएगा. वो आपने बेस बना दिया. Buying a put will entail payment of premium, whereas selling call will receiving a premium. नहीं ना, क्या लिखोगे, कैसे वर्ड कैसे करोगे, सोचो जल्दी, सिंपल है. will lead to a receipt of premium. Yes, clear. एक और चीज लिखनी चाहिए, basically the option purchased will have a higher premium cost than the option which is sold. आपने क्या कर दिया, अब आपने पूरा बेस बना दिया for the next line which is the advantage. फिर लिखोगे आप therefore the key advantage of a collar versus a pure option is reduction in the net premium cost. Clear? यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ.
फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो सबको इन द क्लास? यस, पक्का? आगे चलें। अब आओ डिसएडवांटेज पे। However, so color strategy. क्या होता है? इसके यहाँ पे डिटेल का आउट कर सकता है, लिखना पड़ेगा। यस, we'll have to elaborate on this. Definitely yes. We can't just write one line कि रेंज बाउंड हो जाता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको 100%। क्या करेंगे? बट वी कैन एक्सप्लेन, राइट? वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ अ बोरोवर, so we can just continue with the same example here as well. So first we explain the case and then we conclude what's the disadvantage here. Correct? So what will happen in a color strategy? Color strategy in such case will a minimum cost in case of a such case हो गया, दो बार हो गया, अच्छा, of a color strategy in case of a borrower as an example will lead to a minimum cost if the call option is exercised. Correct? यहाँ पे लिख दो by the call option buyer. Oh. Right. Call option. Therefore, the outcome of a caller becomes range bound where the borrower stroke depositor is unable to fully enjoy the upside benefit in case of favorable interest rate movement, which is otherwise available in case of just options. Questions? Anything which is not clear? You set the base of what a collar is, talked about the premium, talked about the advantage, talked about the disadvantage. Do we need to link it to the numbers? Not yet. This is independent to part B. Now we'll come to part B where we will be concluding. बताओ भाई, clear everyone? चले part B पे? Not more. More कैसे? कहाँ दे रहे हो? More कहाँ दे रहे हो? 4.2 दे रहे हो? यहाँ पे 4.67 दे रहे हो? More कैसे दिया आपने? हाँ तो more कैसे दिया? मतलब more compared to what? Of course, obviously. So as compared to options, अगर favorable price movement है, तो आप कॉलर्स में ज्यादा दोगे ना, बिकॉज आपने अपनी अपसाइड भी कैप कर दी. 100% यस. बट अगर प्राइस बढ़ गया तो आप सेफ क्यों कर लेते हो? बिकॉज आपका प्रीमियम कॉस्ट कम है. अभी हम वो करेंगे कंक्लूड, अभी जब कंक्लूड करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी. बट यस, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. नाउ लेट्स कंक्लूड पार्ट बी. लेट्स कंक्लूड पार्ट बी. सो एक बार पहले लेट्स समराइज द रिजल्ट्स ऑफ आवर hedging strategies. Futures, options, collars. ठीक है, ये थे तीन स्ट्रेटजीज. इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस टू कितना? 3.8%. इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस
एग्जाम में भी ये टेबल बना देना कंक्लूजन के लिए, ऑलवेज हेल्प्स। 2.8%। इफेक्टिव रेट कितना आ रहा था फ्यूचर्स में? 4.46, 4.47। ऑप्शन के केस में क्या लोगे? जो भी बेस्ट सिनेरियोज है। तो बेस्ट सिनेरियोज किसमें थे? जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा था तो बेस्ट सिनेरियो क्या था? 4.7। और जब डिक्रीज हो रहा था तो बेस्ट सिनेरियो क्या था? 3.76। So 4.7 and 3.76. 4.7, 3.76. Next, कॉलर्स में 4.67, 4.2. So in the exam, yes, please make this table. Even for 50 marks, 25 marks, please make this table, and then you can write your conclusion. It's just helpful, even for the examiner, to just see, and then you are writing the comments underneath it. ठीक है जी? अब बताओ क्या लिखना चाहिए? To start with, we should write the key disadvantages, advantages of the three strategies. Scholars में of course ज्यादा elaborate करने की जरूरत नहीं है because we've already mentioned them. But अगर ये नहीं होता part A, so I would have also mentioned a couple of key disadvantages, advantages for scholars as well. So you start by that, and then you come to the specifics on the screen which you have. अब logically सोचो क्या बोलना चाहिए आपको? Again, इसमें कोई right wrong answer नहीं होएगा, ठीक है? They are just asking you to comment and recommend. So if you are able to comment and recommend, either of these three are correct. All depends on what your reasonings are. What are your reasons for saying what you're saying? So I can say options is the best. You can say futures. Third person can say callers. Yes, correct answers. Why you are recommending that is the key. Okay? Because again, there is no one clear answer, right? You don't know whether the interest rate will increase to 3.8 or 2.8. If 3.8, then of course, futures is the best. 2.8, then options become the best. But options have an upfront cost. You don't know. Callers, range bound. If the rate is somewhere in between, then you may say callers is the best because your net premium cost is less, plus you have the flexibility. So again, you can make an argument for all the three cases. Important is how you are wording it. So therefore I said you start with having a couple of points on each, generic points, and then you include specific comments based on the workings which you've done. Okay, that is how you have to approach the exam question. चलो करते हैं, solve करते हैं, बताओ. What should be the key points which we should start off with before we start concluding? हाँ, generic points मतलब एक line on each of these. नहीं. Just one line on what futures are, what options are. Callers पे तो हमने लिख दिया. So just one line on these three, and then you start concluding. Futures do not involve an upfront premium cost, but the other party has an obligation to settle on the transaction date, even if there is a loss. हाँ ठीक है. So again, margin is more a deposit, so that's fine. We can write it. Then I should write there is no counterparty risk as the exchange is involved, and the parties are required to deposit margins to the exchange. Yes. Yeah. Similarly, options involve an upfront premium cost, but
the buyer can enjoy the benefit if the enjoy the upside benefit if there is an adverse movement. थोड़ा सा उसको आगे elaborate करना पड़ेगा. What do you mean by adverse movement? To the expectation of the buyer. ये बोल रहे हो? Colors are based on options, but the upfront premium cost is lower. However, the upside benefit is also capped. ठीक है, बहुत छोटा लिखा because we had already include the details. ये part A है, तो colors का आपका पहले आ गया. अब आप कंक्लूड कर दो बस एक एक लाइन तीनों में लिख दिया आपने. Now you can start concluding based on the interest rates. Rather you can, I don't have a problem with, you can conclude साथ साथ ही फ्यूचर्स का यहाँ पे वैसे ये भी कर सकते हैं. Okay. Okay. So a couple of tips from a examination answer perspective. Okay. Whenever you are concluding your answer and the interest rates are not certain, यहाँ पे नहीं है, it can either increase or decrease. Your conclusion should be what the company here, so Electroco's views are. उसको base लेके चलो. So for example, if Electroco feels or believes that the interest rate is expected to increase, then it should use futures 4.46, 4.7, 4.67. However, if it is uncertain, if Electroco outlook on interest rate movement is uncertain, then it should go for what? Collar options. Options, but that involves an upfront cost. The second point is how uncertain are they expecting a high variance in the interest rate movement? Then you can look at collars. If not, then options is the best. हाँ बिल्कुल. तो अगर कंपनी का बेस लेके चलोगे ना, you'll be able to better frame your answer. Up. Correct. अभी तो फ्लक्चुएशन, तभी तुम दोनों व्यूज दे रहे हैं. अगर बोलता है कि इलेक्ट्रोको इज ऑफ द व्यू दैट इंटरेस्ट रेट विल ओनली राइज, तो हमारा आंसर बहुत इजी हो जाता. कंक्लूजन वुड हैव बीन मच इजियर. But here, because there are two views, therefore our recommendation also has to factor in both the views. Okay? जो हमने बोला. So, if Electroco believes that there are higher chances of an increase in interest rate, then futures is giving the lowest effective cost rate. However, if the interest rate falls, then the
flexibility provided by options leads to the least effective cost. Right? The answer of options is the upfront premium cost, which increases the effective rate if the interest rate actually rises. क्योंकि फिर आपका 4.7 हो जाता है 4.46 से. Right? Callers are somewhere in between. That is lowering the net premium cost, but also restricting the upside benefit in case of interest rate fall. क्या बोलते हो? एक चीज नहीं आई इसमें, skepticism, assumptions. प्रोफेशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्या बोला था कल मैंने कि यू हैव टू गिव अ होलिस्टिक आंसर. आपने फ्यूचर्स रेकमेंड करा, क्या फ्यूचर्स के कोई लिमिटेशन है जो कि ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स के लिए भी इक्वली वैलिड है? यस. आपने फ्यूचर्स प्राइस कंप्यूट किया था, आपने बेसिस 0 माना था. अगर बेसिस रिस्क आ जाता है, will your conclusion change? Yes. These percentages, all of them will change. All of these are based on what? Basis, which was used to compute the futures price. Definitely, you should include one line. Second line, there are no other transaction costs which have been considered. If you're transacting on the exchange, will there be a cost? Yes, there will be a cost. So one line has to be included. For completeness, elector co should consider basis risk on futures and any transaction costs associated with the above derivative instruments, including any margin requirements. क्या बोलते हो? Does this make sense? Now is your answer complete? Yes. Have you covered all points? You start with a very basic introduction. One line is more than enough. Then you have your conclusion based on the numbers. So then holistically, you should also look at any risks or any other points which have not been considered in your workings. But again, बहुत elaborate नहीं करना है. One line is more than enough. But that just shows that you have given a complete thought in your recommendation. Any questions? So 12 हो गए. We are way behind our schedule. So let's see. We'll take a call at the end of the class today about the next one. So Yadi, all good? So now we'll continue with Forex, the last chapter from this batch, before we move to another question, which will be a 50-marker question, which will have Forex as well as international investment appraisal components. Let us continue. Time to move from interest rates to Forex. Right? So Forex में हमने दो टाइप की. Again, the same logic, same idea is how to hedge Forex risk.
Forex risk क्या होता है? Risk that the forex rates move in an adverse direction, right? So very simple example: Indian company having US operations, or Indian company having UK operations, or Indian company making a payment in US dollars, Indian company receiving uh, payment in US dollars. So wherever there is forex involved in terms of a payment, in terms of a receipt, there could be a risk, or there is a risk that the forex rates are moving in a direction which is leading to a loss for you. If you were receiving something dollars mein, and you want to convert them into INR, you would want the INR to appreciate, right? Similarly, if you have to make a payment in INR, let's go. Easy रहेगा, you people can also follow. Just a very, very simple basic example ले लेते हैं forex का. So I said USD1 is equal to INR 90. Payment of USD 5,000. What is the risk? अभी आपको USD 5,000 पे करना है तो बैंक के पास जाओगे, बैंक एक USD के बदले कितना INR दोगे? बैंक बोलेगा 90, है ना? रिस्क क्या है? From today to the date of payment in 3 months. रिस्क क्या है? USD1 कितना हो जाए? INR. Yes. Now, for every USD, you'll have to pay what? INR 100. Similarly, receipt in 3 months. USD 10,000. Risk क्या है? USD1 is equal to INR 80. जब आपको USD 10,000 मिलते, बैंक के पास जाते, बैंक एक USD के बदले कितने INR दोगे? बैंक बिल से I'll pay you 90 INR. The INR appreciates. What happens? You will get less INR per USD. Simple. This is the risk, forex risk, which we want to mitigate or hedge. For that, we discussed two type of techniques, broad categories of techniques, I should say. One was the internal. Those are less hedging techniques, but more managing techniques. And the second were external techniques, which were proper hedging techniques. So let's quickly run through the internal techniques for managing forex risk very quickly. First is dealing in your home currency. That means, in my example, you say कि मैं अगर import कर रहा हूं तो भी मैं INR पे करूंगा, export कर रहा हूं तो भी मैं INR पे करूंगा. मतलब for the Indian company, my payment is also in INR, my receipt is also in INR. Forex risk कौन देखेगा? The counterparty. Does that work in practice? No. Unless you have a very market dominant position, you'll never be able to let that approach work. Second approach is doing nothing. In simple terms, कभी रेट गिरेगा, कभी रेट बढ़ेगा, कुछ मत करो. Overall, तभी even out हो जाएगा. Again, does that always hedge the risk? Not at all. Third, leading. मतलब क्या है? If you're expecting the rate to move adversely in future, can you make an early payment or request for an early receipt? Of course, that will also require some collaboration, cooperation from the counterparty. If you're making an early payment, then the counterparty will be okay, but you would need additional working capital. If you are requesting an early receipt, then the counterparty may say, I will give you you need to give me a discount to get the payment early. So you need to do a cost benefit analysis. Similarly, इसका opposite होता है lagging, where you delay the outcome. If you have to make a payment, you delay that. But again, the counterparty will say, if you're delaying the payment to me, you give me a premium. Similarly, if you are asking for an early, same cheese. So that somewhere you have to balance out the cost and the benefit of leading and lagging. Next is matching receipts and payments. So same company having multiple dealings in foreign currency. So मान लो
उसको USD में पेमेंट रिसीव करनी है, USD में पेमेंट करनी भी है. So there is a receipt and there is also a payment. Can you match it and just hedge or look for the net exposure? Yes, that's a possibility. You can open up USD bank account, उसी में आप पैसे ले लो, उसी से आप पैसे दे दो, और जो भी बैलेंस बचता है उसको आप रिमिट कर लो. So that is matching receipts and payments. Netting is a intercompany method where within the same group, if there are payments due and from companies in foreign countries, so can you net it up and then look at what's the net amount? Yes, we also did discuss a couple of questions here, which is intercompany or multilateral netting, where you convert all the payments into a single currency, which is your home currency, and then you net off the payments and the receipts. Last is matching assets and liabilities. इसको भी हम discuss करेंगे in detail in the money market hedge technique, where if there is a foreign currency payment, which is a liability, you create a foreign currency asset. Similarly, if there is a foreign currency asset, that means a receipt, you create a foreign currency liability. So we will focus this on this a little more. But these were some of the internal techniques for managing forex risk. Are these hedging techniques? No. These are pure managing techniques. What hedging techniques will we be discussing for forex? We'll be discussing these 6 hedging techniques. Similar to the interest rate hedging techniques we discussed, some of those are common, things like forwards, things like futures, things like options. So the fundamental of the 3 remain the same. There are also some swaps here, which we'll be focusing on, similar to what we did for interest rate hedging. Ready? Start with it. So let's start with the forward contract. Very similar to what we did for interest rates. वहां पे हम क्या hedge कर रहे थे? Interest rate risk. यहाँ पे आप क्या hedge कर रहे हो? Forex risk. So what will you enter today? You will enter into a forward contract, which will lock what? The exchange rate, which will lock the exchange rate today for something to be done in the future. बिल्कुल same logic. Over the counter, that means it is customizable, but at the same time, it also runs the counterparty risk of default. Correct? Excellent. सब कुछ same. बिल्कुल fundamentals are the same of what we discussed earlier. As I said, the underlying instrument changes. There it was interest rate. Here it is foreign currency, which is the exchange rates. Correct? Clear? आगे चलते हैं. एक important point जो derivatives के लिए होता है कि it can be net settled. जैसे हमने अभी तक calculations करी, आप एक transaction करते हो अलग से, actual borrowing, actual deposit, and then you have gain or loss on forwards. So that is net settled. And it can also be delivery. That means what do you mean by delivery? कि भाई अगर forward contract है तो उसमें आपका foreign currency भी वो deliver कर देगा. So if you are entering into a contract to buy $50,000 at USD1 is equal to INR 100, for example. So under the forward contract, instead of computing the gain loss, आप बोलेगा लो $50,000 at INR 100, INR 100 दो, $50,000 ले लो. Which can also be actual delivery, right? Both the options are available here as well. It can be net settled, it can be delivered as well. Clear? Very good. Question करेंगे? Yes, करेंगे. I think जो हम question करने वाले हैं इसका, उसमें आपका all these 3 things are there. ठीक है? Next, आगे चलते हैं. State क्या होता है? First side, इसमें you have the option of delivery as well as net settlement. However, in real life, there are certain currencies where those currencies are not very actively traded. They are not actively available, or there are certain restrictions on those currencies levied by the respective governments. तो उस केस में डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता. उस केस में आप सिर्फ उसको नेट सेटल ही करते हो. So that is what saves our synthetic forward or forex agreements, which these are also called non-deliverable forwards, where the difference is you don't have the option of settlement. These will always be, they're not the option of delivery. These will always be net settled. Okay, that's a concept. It's exactly the same. The difference is
यहाँ पे you will never have a delivery. These will always be net. ठीक है, आगे चलते हैं. Money market hedge, a very interesting concept as we discussed matching the assets and the liabilities. क्या मतलब है? क्या मतलब है? Let's start. अगर आपको पेमेंट करनी है, that means you, let's say you are an Indian party, you want to make a payment in US dollars. ठीक है, आपने कुछ सामान खरीदा यूएस से, आपको पेमेंट करनी है इन यूएस डॉलर्स. क्लियर? इज दिस अ लाइबिलिटी इन यूएस डॉलर्स और अ एसेट? लाइबिलिटी. So the logic is you create an asset today which will discharge that liability at the due date. Let's say the due date is 3 months later. You are today, the due date is 3 months later. That means you have to make a payment in 3 months' time. So you create an asset today which will be equal to the amount of liability in 3 months' time. So let's say USD $10,000. तो आज आप कितना क्रिएट करोगे यूएसडी में एसेट जितना 10,000 आपको दे दे 3 months later? How will you compute how much to invest today in US dollars so that it gives you 10,000 3 months later? You take the deposit rate कि भाई 3 months में कितना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, which if I add to the principal will give me USD $10,000 in 3 months. So you take the deposit rate of US. Clear? आपने क्रिएट कर लिया एसेट आज, बट आपके पास तो पैसे है नहीं आज बिकॉज आपको पेमेंट तो 3 months लेटर करनी थी. So what do? You will borrow. How much to borrow? What will you do? You will convert the amount which you have to invest today in USD into your home currency, which is INR. You will convert that at the spot rate and you will borrow that amount today. The moment you convert that amount today to spot rate, at spot rate, your forex risk is eliminated because जो आपने इन्वेस्ट करा वो तो यूएस डॉलर्स में ही किया. That will be sufficient to pay. Whether the exchange rate fluctuates or not doesn't matter. What you've done is you've converted that exchange risk into a loan in your home currency, and then you pay the interest on that home currency for 3 months at the INR borrowing rate. Correct? Similar position for receipt. अगर 3 months में आपको USD पेमेंट मिलनी है, what will you do? You will create a liability in US dollars today. And you create a liability today which will equal to the amount of receipt in 3 months' time. The same question, how will you create a liability today? You will borrow in US dollars. How much will you borrow? You will take the borrowing rate in US dollars and come to the price, the rate, the amount today. अब borrow करके क्या करोगे? You convert it into INR in my example. You apply the spot rate. Again, the moment you convert it, you've eliminated all the forex movements. You invest that amount in INR today. You get interest on that. 3 months later, you have the amount which is maturing. तो जो आपको पहले 3 months बाद मिलता, उसको आप 3 months बाद convert करते, and you would have run the risk. Here you're converting it on spot rate and investing it so that you can get the INR amount today. So that is the position for a importer and an exporter. Take a minute, please read the slide and tell me if something is not clear. तो मैं देखता हूं हमने तुम क्वेश्चन करने वाले उसमें एमएमएच भी है क्या? I don't remember. There were 3 techniques. Was MMH one of them? I don't really know. Tell me if something is not clear on the slide, please. Yes.
Any questions, people online? Anything which is not clear? Okay. Are you sorry? So we discussed forwards and money market hedge. Now let's come to the two common ones, futures and options. So we can convert to home currency in case of exporter. Okay. Convert to home currency in case of exporter. Now, what is the idea in case of an exporter? The idea is you are expected to receive some amount, in my example USD, in 3 months' time. Your concern is in 3 months' time, if the exchange rate moves unfavorably, then the amount in your home currency will be lower than what you would have otherwise received. So you want to eliminate that forex risk. So what do? You take a loan. So that means you create a USD liability today, which will equal to the amount of USD which you are expected to receive in 3 months' time. But if you create a liability today, that means how will you create a liability? You will take a loan in USD. When you take a loan in USD, what will you do for that money? You convert that money into spot rate. Convert that money into spot rate. Convert that money into home currency by applying the spot rate. That means in my example, INR, you've converted that money into INR. Then you deposit that money in INR terms in India at the deposit rate of India INR. After 3 months, you can see how much amount you're getting in INR, including the interest. 3 months later, USD में क्या होगा? You will get some payment in USD. You will use that amount to repay the loan. So the USD position is settled, and the INR position you get very clearly. What have you done? You've eliminated any forex risk because you converted the USD amount to INR as on the date today. So that's the point around converting it into home currency. Opposite of what you'll do in case of an importer when you have to make the payment. There you are buying in home currency, borrowing in home currency. But the objective is the same. Because you are converting the foreign currency into home currency as on the spot rate, you are eliminating any future forex movements risk. It can be favorable, it can be unfavorable, but as a hedger, you don't look at the upside, you are protecting your downside. So then interest paid on loan, how it will be treated? Interest paid on loan. You're talking about the USD loan, Adisha. When you say interest paid on loan, that means USD. So, in simple terms, a very, very simple example. ये था receipt in 3 months, USD 10,000. Let's say the borrowing rate in USD is 5%. ठीक है? 3 months में मिल रहा है. So you want to create a liability. In USD today, which will give you 10,000 in 3 months. How will you create a liability today? बताओ सब लोग. How will you do it? क्या निकालोगे? कैसे करोगे? कंप्यूट कैसे करोगे बताओ? How much will you show? Amount of loan in USD today. कैसे निकालेंगे? Is equal to कैसे कैलकुलेट करूं? 10,000 डिवाइड बाय क्या करूं? डिवाइड बाय 1 प्लस 0.05 this divided by 3/12. तो किसको डिवाइड करूं? डिवाइड करूं मल्टीप्लाई करूं? तो क्या करूं यार? ऐसे करूं? ये बोल रहे हो? अच्छा, ऐसे करना है. हम पहले इंटरेस्ट को नहीं चेंज कर सकते? तो ये आएगा
ये बोल रहे हो, that means you take a loan of 9879 today. Okay. Interest after 3 months कितना होगा इसमें? This multiply by 5%, multiply by क्या होना चाहिए आंसर? 121 ये होना चाहिए. 123 है, थोड़ा सा डिफरेंस है. कैलकुलेशन एरर है, ये मिस्टेक है. क्या बोलते हो? एनीवेज, लॉजिक क्या था? So how will the interest be treated? You will borrow 9879 USD today, on which the interest will be 123 in 3 months time. After 3 months, how much are you receiving in USD? You will receive USD 10,000, which will be used to repay the loan of USD 9879 along with interest of USD 123. समझ में आया? Adesha, are you clear now? So the interest along with the principal will be used to, the receipt will be used to settle the interest and the principal amount. And you convert this 9879 into INR today. Correct. So once you convert 9879 to INR, then you create a deposit. That means you will deposit in the home currency. After 3 months, you will get cash flows in the form of interest and principal, the deposit amount. Clear? Right, chale? So let's move on to futures. Right? क्या है फ्यूचर्स? याद है सबको अच्छे से? क्रिस्टल क्लियर? वेरी गुड. गुड पॉइंट. दैट इज अ गुड पॉइंट. एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ. Just digressing for a minute. Yeah. हाँ, फ्यूचर प्राइस निकाला था ना ये रहा. Just one quick point for everyone. यहाँ पे आपने 4.46 निकाला, राइट? दोनों केस में इंटरेस्ट रेट हेजिंग पे जा रहा हूँ मैं. सॉरी, just one thing which came to my mind right now is there is also a concept of lock-in rate. Again, lock-in rate. यहाँ पे if you see, you are not getting a perfect hedge, right? Your contract should have been 36.67, but you're taking 37. There is a slight difference. अगर ये परफेक्ट एज होता तो आप डायरेक्टली लॉक इन रेट भी लगा सकते थे. अभी भी आपको आंसर बहुत सिमिलर ही आएगा लॉक इन रेट लगा के, बिकॉज बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ओवर एज अंडर एज. ऐसे नहीं 36.67 से आप 39.40 पे जा रहे हो. तो योर आंसर विल बी वेरी सिमिलर. बट लॉक इन रेट इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच यू कैन अप्लाई in case of futures. Typically, lock-in rate is used when you are not given the spot rate and the future price. In this question, you were given the spot rate, so you don't need to apply the concept of lock-in rate. But अगर spot price भी नहीं दिया होता, future price भी नहीं दिया होता as of the transaction date, then you can apply the concept of lock-in rate. ठीक है? Just for completeness, यहाँ पे मैं बता देता हूँ lock-in rate कैसे निकालते हैं. Lock-in rate कैसे निकालते हैं? Not for this question, but just the concept. ठीक है? लॉक-इन रेट कैसे निकालते हैं? 100 minus the current future price. Current future price. Okay? क्या करूं? इसको यहाँ प्लस करो.
ब्रैकेट यहाँ लगाऊं, ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट लगाऊं, यस ऐसे करते हैं, ये बोल रहे हो आप लोग। तो इस केस में कितना था करंट फ्यूचर प्राइस, तो इस केस में था 100 माइनस क्या था फ्यूचर प्राइस 96.16 पे आपने लॉक इन किया था, हर एक्सपायर्ड बेसिस क्या था 0.18, ये 3.66, यस। आप कितने पे बोरो कर रहे थे, कंपनी 0.8% ज्यादा पे बोरो कर रही थी, राइट। सो द एक्चुअल बोरिंग वाज एट 0.8% above एस्टर। तो लॉक इन रेट फॉर द नेट रिजल्ट क्या होना चाहिए 3.66 प्लस 0.8%, क्या आ रहा है 4.46 आ रहा है। So the lock-in rate is what? Lock-in rate is to be used when then the spot rate is also not given and the future price is also not given. Then you can use the lock-in rate to compute the net result. जो आपने यहाँ पे effective interest rate निकाला था अलग अलग. You can just get the answer from a lock-in rate directly. Clear? एक और चीज जो ध्यान रखनी है is when there is a perfect hedge, then the lock-in rate will be exact. That will give you the exact answer. When there is not a perfect hedge, then lock-in rate can sometimes not give you the exact answer because you are hedging. Whether you want to hedge X amount, but you are either hedging more than that or less than that. So there could be a slight variance in your net result. Clear? So that was just point which I wanted to highlight on the lock-in rate. We'll also do this lock-in rate in the forex calculation, futures calculation as well. Okay, clear? चलो futures पे आते हैं. So same steps which we discussed in case of interest rate are equally applicable for here. First question, buy or sell futures, right? यही एक difference है. Fundamentally एक difference जो है between interest rate futures and forex futures is buy or sell futures. एक simple example लेते हैं जो भी हम ले रहे हैं तब से. INR USD 1 is equal to INR 100, ठीक है. Receipt of USD 50,000 in 3 months. जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो है USD 1000 का, ठीक है. सिंपल है. USD 1000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है आपका, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट साइज. क्लियर? आपको आप कौन सी, आप इंडियन कंपनी हो, ठीक है. आपको 50,000 USD मिलेगा तो बैंक के पास जाके क्या बोलोगे, बैंक मेरे पास क्या है, मुझे क्या चाहिए INR. सो बाय सेल अगर मैं देखूं तो बाय सेल इंडियन कंपनी क्या करेगी, बाय INR सेल USD, करेक्ट. आपको USD मिलेंगे, आप बैंक के पास जाओगे, बैंक मेरे को क्या चाहिए INR चाहिए, मेरी होम करेंसी INR है, मेरे पास क्या है USD. यू विल बाय INR फ्रॉम द बैंक एंड सेल USD टू द बैंक, ठीक है जी. कॉन्ट्रैक्ट करेंसी, कॉन्ट्रैक्ट क्या जो करेंसी है वो क्या है USD. सो यू इक्वेट योर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू द एक्चुअल ट्रांजैक्शन in line with the contract currency. That means in this case, you have to sell USD. The contract currency is also USD. So you will sell futures. यही केस मैं अगर रिवर्स कर दूं, futures contract size is INR 1 lakh. तो क्या करोगे, आपको क्या करना है, INR बाय करना है. You will buy INR, buy futures. Clear? So that is how you decide buy or sell. You decide
buy or sell futures based on the contract currency. Clear? बाकी सारे futures के जो features थे about exchange traded contracts, standardized contracts, no counterparty risk because of the margins, all of those things are applicable here. Basis risk, basis diminishing to zero, linear manner assumption, all of those are applicable here. Under hedging, over hedging because the contract size is not equally matching, divisible with the transaction size, again applicable here. Clear? All the things, the standard features of futures are also applicable here. Clear? क्या इसमें कोई टाइम पीरियड की एडजस्टमेंट करेंगे जैसे इंटरेस्ट रेट के लिए करते थे? नो. So you don't need to apportion the contract size and adjust the contract size for time because it's not interest rate linked. There is no time period, time adjustment required. Sorry. Achha. Clear? And again, we will do a proper question on this. So we will see how to compute the futures price, etc., etc. क्या यहाँ पे भी basis calculation के basis पे आप expected futures price निकालोगे? Yes. क्या lock-in rate निकालोगे? Yes. Again, as I said, we will do a question. We will look at those things, but the same logic, the same principles are also applicable in case of forex futures. Clear? आगे चलें. Let's move on to the currency option. Again, ध्यान से whatever features were there for options, the standard features like payment of premium, potential to benefit from the upside. That means if you feel that the interest rate, the exchange rate has moved in your favor, then you will let the option lapse, but you would have still paid the upfront premium. So the similar points we discussed for interest rate are also applicable here. Yes. In this case, of course, the options can also be over the counter and exchange traded. So both options are there. Question can tell you your calculations will not change, but some of the features like the counterparty risk will be there in case of over the counter options, but will not be in the case of exchange traded options. Clear? Again, हमें question करेंगे options का. We'll run through some of these points, but if you see the steps, call or put, उस पर भी आऊंगा मैं. उसके अलावा expiry date, same logic, closest, exercise price, भी आएंगे, number contracts, contract the exchange, upfront premium, transaction settlement, exactly the same. चलो buy, चलो buy बोलो, put और call, सोच के बताओ कैसे decide करेंगे? How will you decide put or call? Buy. What is the logic? Rational बताओ मुझे. अरे दोस्त, what is the rationale? Contract currency. The same discussion. That is what I'm trying to come to. The same discussions which we did for futures. How will you decide buy or sell? Based on the contract currency. For options also, you will decide whether to buy, put or call based on the contract currency. Whether will you sell any of the options? No. As a hedger, pure play options, you will always buy. So again, buy, put, call will depend on the contract currency. So in this example, अगर आपको INR buy करना है और USD sell करना है and your contract currency is USD, तो क्या करोगे आप? आपको क्या मिल रहा है? रिसीट है USD की. तो क्या करोगे in this case? Will you buy a put option or will you buy a call option? क्यों? You need the right to sell USD. Similarly, अगर contract currency INR है तो क्या कर दोगे? Buy, call. Very good. So in this example, you will buy put. Buy put. And in this example, buy call. Clear?
क्योंकि आपको यूएसडी को सेल करना था, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंसी यूएसडी में था तो आपने पुट किया, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी आईएनआर हो गया तो आपको क्या करना था, बाय करना था आईएनआर, तो आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, विच विल गिव यू द राइट टू बाय आईएनआर इफ रिक्वायर्ड। क्लियर? पक्का? सो दिस वाज द पॉइंट अराउंड द क्या कहते हैं, कॉल और पुट ऑप्शंस. नाउ वील डिस्कस द पॉइंट अराउंड एक्सरसाइज प्राइस. हाउ डू यू चूज द एक्सरसाइज प्राइस? राइट, सेम लॉजिक है जो हमने बात करी थी एक इंटरेस्ट रेट हेज के केस में कि भाई considering the premium, whichever is giving you the highest benefit. पुट के केस में क्या होगा? पुट के केस में क्या होगा? कॉल के केस में? अच्छा, क्यों? मैक्सिमम रिसीट किस पे देखोगे? पुट ऑप्शन. टोटल कॉस्ट, लीस्ट टोटल कॉस्ट किस पे देखोगे? कॉल ऑप्शन. इंटरेस्ट रेट हेड से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सिमिलरली इंटरेस्ट रेट के केस में भी हमने देखा था, some cases we had to use two cases, two exercise prices when the interest rates were not certain. Forex के केस में भी that can be tested in the exam where you consider two different exercise prices and then see which one is more beneficial. कब होगा typically? When the exchange rate is expected to move up and or down. So the question is giving you that scenario and the question is giving you two exercise prices. Then again you will do calculations for both the scenarios. Excuse me. ठीक है? Very similar to what we discussed for interest rate. Again इसका question हम देखेंगे options पे. Clear? आगे चलें. So before we move to the swaps, this is the last two techniques. Let's look at a question and test out these methods, and then we'll come to the last two swaps. ठीक है? चलो. नहीं होगा, टाइम अपोर्शनमेंट नहीं होगी फॉरेक्स के केस में बिकॉज इट्स नॉट लिंक्ड टू टाइम पीरियड एट ऑल. आपका जो करेंसी एक्सचेंज रेट है क्या वो साल के लिए होता है? नहीं, वो तो एज ऑन दैट डेट के लिए ना, कि उस डेट पे अगर आप ट्रांजैक्ट करोगे तो इस करेंसी पे इस रेट पे करोगे. क्लियर? क्वेश्चन देखें. ये तो कल वाला. Question number 17. So it's a very good question. The way they have integrated forex and international investment appraisal is nice. Huh? Plus इसमें एक दो और points हैं which I want to discuss, which can be attempted differently. तो वो भी discuss करेंगे. Really, start करते हैं. Let's read the question first before we start solving it. Ashiko is a large unlisted company based in Japan. चलो मैं अपनी वाली अप्रोच ही लगाता हूँ. First, I would like to read the requirements before I start reading the question. And I'll go there. Understand what the question is saying. Required. Discuss how investing in overseas projects may enable Washiko to gain competitive advantage over its competitors who only invest in domestic projects. Prepare a report for the board of directors of Washiko, which estimates the expected amount of JPY receivable under each hedging choice and the additional debt finance needed to fund the Aeron project for the preferred hedging choice. Estimates the NPV of the Aeron project in Japanese yen based on the end of year 1 being the start of the project, and estimates the preferred hedge choice made, evaluates, the preferred hedge choice made, the debt finance needed, and whether the Aeron project should be undertaken, considering both financial and non-financial factors. Plus, एक और question है last में.
Discuss the validity of CEO suggestion. तो CEO ने कुछ यहाँ पे suggest किया है. अब 5 marks pure theory, 6 marks pure theory, 12 marks pure practical, 9 marks pure practical, 8 marks pure theory, 21 marks of practical, 19 marks of theory, plus 10 marks professional. Again, if you can see the trend, that's generally been the case, right? Board of Directors report, as we discussed yesterday, for 50 marker, you will generally see this as a standard requirement. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों का कंफर्ट क्या है? Should I, in this question, because I'm just conscious of time, considering we have a lot of things left to do, should I solve this question in totality, preparing the format, answering all the theory questions, or you want me to just focus on part B, where we talk about 1, 2, and briefly talk about the evaluation part, which is third? करे सिर्फ part B पे focus? Huh? People online, what is the view? Is it okay if we follow a shortcut approach here, because we already discussed a 50 marker question in detail? So here we can just focus on part B. We'll calculate 1 and 2, and I want to focus on 3 as well, because that's evaluation of what we did, what we've done in parts B1 and B2. ठीक है? Board of Directors report बना लेंगे. Introduction, conclusion, the standard template, please. And as I said, I will share those documents with you after the class. You will have all that with you. C again is specific to that statement, so there is no direct linkage to the calculations. And part A is also independent. तो ये हम कर लेंगे theory, board of directors report के साथ. Should I just focus on part B? ठीक है, चलो, perfect. Let's do that. स्टार्ट करते हैं, वापस पढ़ते हैं. तो सबसे पहले estimate the amount of JPY receivable. तो कुछ उसका जापानीज रिसीवेबल अंडर ईच हेड चॉइस, सॉरी कुछ रिसीवेबल है जो JPY में उसको कन्वर्ट करना है. अंडर ईच हेड चॉइस देख लेंगे क्या है. And the additional debt finance needed to fund the Aeron project for the preferred head choice. तो कुछ होगा. Let's first read क्या है. आप क्वेश्चन पर फैक्ट्स पढ़ते हैं पहले. क्या हुआ? यहाँ से ना. हाँ जी. Washiko is a large unlisted company based in Japan, and its local currency is the Japanese yen. It manufactures industrial equipment and parts. Washiko's customer consists of 3 other Japanese companies. But in the last 12 years, it has expanded into overseas markets and sources its materials from around the world. Very good. The company's board of directors believes that the strategy of overseas investments to subsidiary companies, branches, and led to the company's substantial increase in value in the past year. Very good. Washiko's board is considering investing in a project based in Aeron, a new country, whose currency is Aeron Rand, ARD. It believes that the project will be an important addition to the company's portfolio of investments, the significant current presence in the part of the world where Aeron is located. It is intended that the project will commence in 1 year's time. Okay? 1 year's time. Details of the project are given below. There are 2-3 बड़े slight tweaks करे इन्होंने, which are very interesting. WCO intends to finance the project through proceeds from an agreed sale of a small European subsidiary. आप कौन सी कंट्री में हो? जापान. आप कहां पे सेल कर रहे हो? कोई एक यूरोपियन सब्सिडी सेल कर रहे हो. तो आपका करेंसी कौन सी आ गई? जापानीज येन एंड यूरोज. With any remaining funding required being met by additional debt finance issued in Japanese yen. तो आपको एरॉन प्रोजेक्ट के लिए जिसकी करेंसी इज ARD, यू वांट टू फंड दैट प्रोजेक्ट. आपने बोला आप कैसे फंड करोगे? आपके 2 सोर्सेज हैं. एक आपने बोला जो एक यूरोपियन सब्सिडी सेल करोगे उससे आपको यूरोज में कुछ आएगा, ठीक है, वो आप यूज करोगे फॉर फंडिंग द प्रोजेक्ट इन ARD. सेकंड, जो बैलेंस बचेगा वो आप कैसे यूज करोगे? एडिशनल डेट ये रेज करोगे जापानीज येन में, विच विल देन अगेन बी यूज्ड टू फंड प्रोजेक्ट इन ARD. ठीक है जी. ओके, वेरी गुड. The company is due to receive the proceeds from the sale of a European subsidiary company in 6 months' time, and it will then invest these funds in short-dated Japanese treasury bills for a further 6 months before they are
needed for the project. क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो. The company is due to receive the proceeds from the sale in 6 months time. 6 months बाद आपको मिलेगा, and it will then invest these funds in short dated Japanese treasury bills for a further 6 months before they are needed for the project. तो मतलब क्या हुआ, यूरोज में मिला, first you convert that into JPY, invest in JPY for 6 months, convert that amount into ARD, then invest in Euros. So again, they've added one more level of time, one additional dimension to the question, one level additional working, which you have to calculate in your answer. Funding and financial information. The agreed proceeds from the sale in 6 months time are euro 80 million. So 6 months में कितना मिलेगा आपको, 80 million euros मिलेगा. The board of directors is concerned about a negative fluctuation in euro JPY rate cost between now and 6 months when the euro 80 million will be received. तो बोल रहा है कि फॉरेक्स रिस्क है, कॉस्ट है, तभी आप फॉरेक्स का चार्टर कर रहे हो. Therefore, it has asked W Code Treasury Department to hedge the expected receipt using one of the currency forwards, currency futures, or exchange traded currency options. यही 3 टेक्निक्स हमने डिस्कस करी है, एमएमएच भी करी है, बट हमने डिस्कस कर लिया अलग से. ठीक है जी. W Code Treasury Department has obtained the following information. स्पॉट रेट दे दिया उसने JPY पर यूरो, ARD पर यूरो. ठीक है जी. तो अगर आप देखोगे अब उसने क्या दे दिया आपको, स्प्रेड दे दिया. जैसे इंटरेस्ट रेट स्प्रेड था 5 to 5.1%, यहाँ पे भी आपको एक्सचेंज रेट स्प्रेड दे दिया है. अब मेरे एक बेसिक क्वेश्चन का सब लोग आंसर देंगे पहले, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन. अगर आपके पास 80 मिलियन यूरो आ जाते हैं स्पॉट रेट टुडे, व्हाट एक्सचेंज रेट विल यू अप्लाई टू कन्वर्ट 80 मिलियन यूरो इनटू JPY? क्या बोलोगे आप, बैंक मेरे पास यूरो है, मुझे क्या चाहिए, JPY. 1 यूरो के बदले बैंक कितना देगा? करेक्ट. Bank will always buy cheap, sell dear. So in this case, bank is buying euros. Bank will buy cheap. It will always give you 129, the lower amount. Same चीज अगर उल्टा होता, आप जाते बैंक, मेरे पास JPY है, मुझे यूरोज दो. बैंक बोलेगा बिल्कुल, I will give you 1 euro for 132.4 JPY. That means I will charge more JPYs from you to give you 1 euro. Clear हुआ सबको? The bid and the ask rates, these are always quoted from bank's perspective. Always. Clear? Good. Similarly, ARD का भी दे दिया उसने स्पॉट रेट. अच्छा जी. 6 month फॉरवर्ड रेट भी दे दिए. गुड. हमने, सबको याद है, कुछ डिस्कशन करा था in the international investment appraisal chapter where we talked about the purchase power parity theory and the interest rate parity theory. कुछ याद है सबको? उसको याद रखेंगे, यूज करेंगे इस क्वेश्चन. आगे चलते हैं. क्या अमाउंट हेज करना है? 80 मिलियन यूरोस. अब चलते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए. करेंसी फ्यूचर्स. तो अच्छा 6 month फॉरवर्ड रेट भी दे दिया ऊपर, सॉरी. बता दो जरा, 6 month फॉरवर्ड रेट, अगर आप फॉरवर्ड रेट एंटर करोगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे आज फॉर 80 मिलियन यूरोज, तो किस रेट पे एंटर करोगे? 125.3 या 128.6? एवरीवन पक्का? सबको क्लियर हो गया? बिड आस्क स्प्रेड. कोई भी ऐसा पीपल ऑनलाइन एनी कंफ्यूजन तो प्लीज मुझे बताओ. एनीथिंग विच यू फील कि नहीं बिड आस्क स्प्रेड क्लियर है? गुड. करेंसी फ्यूचर्स क्या बोलता है? 4 month एक्सपायरी, 7 month एक्सपायरी. क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, विच वन इज रेलेवेंट? पैसे कितने महीने में मिलेंगे? हाउ मेनी मंथ्स? 4 month लेना चाहिए या 7 month लेना चाहिए? यस, क्लोजेस्ट बट आफ्टर. एक्सेलेंट. आगे चलो. कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या है? यूरोज या JPY? आर यू सेलिंग यूरोज और बाइंग euros? You are getting euros, you want them to be converted to JPY. You are? Will you sell futures or buy futures?
वेरी नाइस। ऑप्शंस पे चलो। 4 मंथ एक्सपायरी, 7 मंथ एक्सपायरी, क्या लेना चाहिए? 7 मंथ। विल यू अगेन कॉन्ट्रैक्ट साइज इज यूरोज। पुट ऑप्शन बाय करोगे या कॉल ऑप्शन बाय करोगे? यू वांट द राइट टू, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट करेंसी इज इन यूरो एंड यू आर इन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन सेलिंग यूरोज। एक्सीलेंट। तो इन 4 प्रीमियम रेट्स में से कौन सा प्रीमियम रेट इज द रेलेवेंट वन? 7 मंथ्स में पुट वाला 3.8। Excellent. Annualized yield on short-dated Japanese treasury bills is 1.2%. The question to all of you, why is this given? Why is this given? Wrong answer. Why is this 1.2% given? Why is this 1.2% relevant? ये भी हो सकता है तुम बोलो कि पुष्कर रेलेवेंट ही नहीं है, ये ऐसी दे दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन में। 6 महीने के लिए पैसे डिपॉजिट करेगा। You are getting euros in 6 months' time. You will convert them into JPY, deposit it for 6 more months in JPY, and then convert them into ARD. तो जो 6 महीने आप डिपॉजिट करोगे, इस रेट पे डिपॉजिट करेंगे 1.2%। आगे चलते हैं। Aeron's annual inflation rate is 9% currently, but has fluctuated markedly in the last 5 years. The Japanese annual inflation rate is 1.5% and has been stable for many years. अब उससे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दी जो ARD में आपको करना है। So I think we can stop here. Solve for part B, सब part 1। ये सारी ARD प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन हो गया। पर अभी हम पहले फॉरेक्स कर लेते हैं। So let's solve for this part. ठीक है, उसके बाद आएंगे एडिशनल डेट फाइनेंस नीडेड पे। पहले जो 3 हेजिंग चॉइसेस थी उनको सॉल्व कर ले। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, यू पीपल वांट टू स्टार्ट? एक बार ट्राई करना है, जब मैं करूं साथ साथ। वो तो मुझे भी पता है, तो डिफॉल्ट आंसर है साथ साथ अच्छा रहेगा। तो मैं अगर ट्राई करना है एक बार, चल रहा था, कोई नहीं, टेंशन कोई नहीं, साथ साथ करते हैं। चलो, लेट्स गो बैक टू द स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद वाशिको। वाशिको, अब क्या करें सॉल्व? बी। अगेन ये हमारी कैलकुलेशंस कहाँ जाएंगी? अपेंडिक्स। तो आप लोग ध्यान रखना, सब चीजें जो हमने डिस्कस करी थी कल in terms of the presentation, these will go in appendix and each part will be a different appendix. So this is appendix 1, part B, the part 1। क्या बोला उसने बोला फ्री हेजिंग टेक्निक्स पहले, फिर एडिशनल डेट नीडेड पे आएंगे। सो हेजिंग टेक्निक्स, हेजिंग ऑप्शंस का टेक्निक्स की तरह तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। चलो जी, फर्स्ट क्या था? फॉरवर्ड्स। वापस जाते हैं, क्या रेट है? क्या हुआ? जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ओके। चलो जी, तो फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड्स हमने रेट डिसाइड कर लिया था सबने कि 125.3 होना चाहिए। टू बी एग्री?
Okay, so let's start. So Washiko requires JPY against euros. यहाँ पे hedging technique से exact वही लिख देते जो क्वेश्चन में बोला है, so that मतलब एग्जाम की तरह से कर लेता हूँ सॉल्व इसको ना. We are not doing the extra parts, but at least the parts we are doing, let's do them properly. So expected amount of JPY receivable under each head choice. Estimated amount of JPY receivable against each head choice and the additional debt finance needed. Yes, चलो अब फॉरवर्ड एग्रीमेंट चला था, तो हमें चाहिए वार्षिक रिक्वायर्स जेपीवाई अगेंस्ट यूरोस. ठीक है, उसने उसके बाद क्या दिया, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या है. So JPY, so the rate is euro 1 is equal to JPY कितना 125.3 to 128.6. Okay, यही है. Therefore, the forward rate relevant for the transaction is euro 1 is equal to JPY 125.3. Clear? Excuse me, sir. So your screen is not visible. Oh, sorry. That was a technical glitch, so it just vanished. Tell me if you can see it now. Yes, sir. Okay, perfect. So I'll quickly repeat. So we started with appendix 1. Then we said forwards. Washiko requires JPY against euros because there's a euro receipt which they want to convert in JPY. 6-month forward rate is given like this, the bid-ask spread, and therefore the forward rate relevant for the transaction is euro 1 is equal to JPY 25.3. Here, amount in JPY कितना मिलेगा, कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे. 80 मिलियन मिल रहा है, करेक्ट. डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. अगेंस्ट ईच यूरो हाउ मच विल यू गेट, 125.3. 2 है. क्वेश्चन देख लेते हैं यार, ऐसे मत कंफ्यूज करो, इस तो कैलकुलेशन भी नहीं है, तो फैक्ट है इन द क्वेश्चन. ठीक, गुड. जस्ट इसके साथ कोई स्पेक्स चेंज करो भाई प्लीज. तो 80 into 125.3, this is the amount in JPY millions. JPY millions. Clear? Forwards, straightforward. आगे चले. Futures. Again, we will not write all the steps. We will only write the relevant steps. And यहाँ पे ये बताओ मुझे क्या हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है to compute the futures. You have the spot rate. यहाँ पे था spot rate. आ गया. ये रहा spot rate था. You had the futures rate. ये रहा futures price 125.2. अब आपको क्या करना है, you have to compute the amount as on the transaction date. क्या ट्रांजैक्शन डेट पे आपके पास स्पॉट रेट है, कहाँ है स्पॉट रेट, स्पॉट रेट नहीं है. क्या ट्रांजैक्शन डेट पे आपके पास फ्यूचर्स प्राइस है, क्या ट्रांजैक्शन डेट पे आपके पास फ्यूचर्स प्राइस है. 6 मंथ्स बाद का क्या फ्यूचर्स प्राइस होगा वो है, क्या 6 मंथ्स बाद क्या स्पॉट रेट होगा वो है. तो फिर कैसे कंप्यूट करेंगे,
लॉक इन रेट जो अभी हमने डिस्कस किया था. So lock in rate will be applicable when you don't have the spot rate and the futures rate as of the transaction date. यहाँ पे दोनों चीजें नहीं है. So can you compute lock in rate? Absolutely. Let's first set up the futures and then we will compute the lock in rate. What is the contract currency? The contract currency is euros and Washiko needs to sell euros. हमने यहाँ लिखा था requires JPY against euros. यहाँ पे मैं ना एक और चीज लिख देता हूँ. That is sell euros against JPY. Yes, the contract currency is euros and Washiko needs to sell euros. Therefore, it will also sell futures. Clear? पता? Very good. Number of contracts. कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कितना मिलियन चाहिए? मतलब कितना मिलियन आएगा? 10⁻6. What was the standard contract size? 125,000. क्या इस पे कोई टाइम एडजस्टमेंट होगी? नहीं. This is the number of contracts. कितना है? 640. 640. Clear? Expiry date क्या लेंगे? 7 months. Yes. Receivable in is in 6 months. 7 months का एक्साइज प्राइस क्या है? क्या ये स्प्रेड दिया हुआ है कि एक ही प्राइस है? एक ही प्राइस आ गया ऊपर 125.2 एक ही प्राइस है. देयर इज नो स्प्रेड. क्वेश्चन पूछो. तब तो भाई अगर रॉन्ग क्वेश्चन. जापानीज कंपनी है, अगर येन में मिल रहा है तो फॉरेक्स रिस्क ही नहीं है. So we will online. A question in the class was if the receivable would have been in Japanese yen, तो हम क्या करते? तो हम कुछ नहीं करते. मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है, फ्री का आना चाहिए मार्क्स. 0 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन. जापानीज कंपनी रिसीविंग जापानीज येन, नो फॉरेक्स रिस्क. ठीक है जी. अच्छा, एक्साइज प्राइस दिया हुआ है 125.2. ये एक्साइज प्राइस क्या है? दिस इज 1 euro is equal to JPY 125.2. Yes, clear? पक्का? तो अभी तक हमने क्या किया? हमने बेसिक जो कॉन्टूर्स हैं टू सेट अप द फ्यूचर्स वो डिसाइड करे. इसके बाद हम क्या करते थे? एक लाइन लिखते थे कॉन्ट्रैक्ट वाली, कॉन्ट्रैक्ट द एक्सचेंज वाली. तो वाशिको टू सेल 640 फ्यूचर्स contracts with 7 months expiry at futures price of euro 1 is equal to JPY 125.2. तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है where you are summarizing whatever you've done above to set up the futures. आपने futures set कर लिया. Now we go to the settlement, but as we discussed, we don't have all the information. Yes, so what do? Sorry, you can compute the lock-in rate. Yes, same logic, बिल्कुल same logic जो आपने interest rate hedging के लिए लगाया था will be applicable here as well. So let's compute the lock-in rate. Time 0, 6 months, which is the transaction date. Transaction date. इसमें dates नहीं दी ना हमारे पास. हाँ, months ही बोला. ठीक है. And then expiry 7 months थी. Right? तो spot price क्या है जी? Again ध्यान रखना, spot price there is a spread. So be very clear.
which spot price, which part of the spread you have to take, the bid rate or the ask rate. In this case, you've discussed. Clear है सबको? 129.2 लिखे. You take 129.2. Futures price दिया हुआ है कितना? 125.2 था. Yes. What is the basis? कैसे निकालते थे? Spot price minus futures price. तो 4 आ गया एग्जैक्ट. बात है. क्या इसमें बेसिस की असम्पशन लिखनी पड़ेगी या क्वेश्चन में दिया हुआ है? Is the question giving us that information or we should write that assumption? Write the assumption. Let's go back to the question once. 4-month expiry, 7-month expiry, analyzed fluctuation. Then this is talking about the project itself. This is also talking about the project. Estimate the secured. नहीं दिया हुआ. So we have to include that assumption. So what is the assumption? यहाँ पे 0 हो जाएगा. Yes. Note. Very important again. Exam में लिखना है. It is assumed that the basis on expiry will be 0 and it will reduce in a linear manner. Clear? Two assumptions. One about the basis being 0 on expiry, and the second one that the basis will reduce in a linear manner. तो फिर unexpired basis on the transaction date कैसे निकालेंगे? कितने months के लिए unexpired है? 1 month. So this is equal to 4 multiplied by 1 by 7 months के लिए था total expiry. 1 month के लिए unexpired है. $0.57 unexpired basis for 1 month. Clear? यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? सो अगर आपका अनएक्सपायर्ड बेसिस ये है तो लॉक इन रेट कैसे निकालेंगे? फ्यूचर्स प्राइस प्लस अनएक्सपायर्ड as on transaction date. So in this case, it will be 125.2 plus 0.57, 125.77. क्या है ये? Euro 1 is equal to JPY 125.77. So net result of the hedge, net result of the futures hedge, matlab actual transaction plus gain loss on futures plus minus will give you what? Multiply, divide 80 million into 125.77. Yes? क्या आंसर बेटर आ रहा है फ्यूचर्स फॉरवर्ड से या खराब आ रहा है? बेटर आ रहा है, सही आ रहा है, ये अच्छा था. पुष्कर कैलकुलेशन सही करी तुमने. यस, clear? Futures clear to everyone. Step by step, whatever is relevant from the examination standpoint, we've shown that working, we've included that assumption, and then we have computed the net result. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे चले? पक्का? चलो जी, थर्ड पे चलते हैं. थर्ड वाज ऑप्शंस. अगेन बहुत इंफॉर्मेशन उसने हमें दे दी और कुछ कुछ चीजें जिन्हें कैलकुलेट करी हैं फ्यूचर्स में तो यहाँ पे भी रेलेवेंट है. बता देता है वो ऑप्शंस के लिए. अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेंसी क्या थी ऑप्शंस की? सेम ही थी, दिया उसने. ये देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पे भी यूरो 125 था, यहाँ पे भी डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज दीज ऑप्शंस आर नॉट ऑन फ्यूचर्स. ये ध्यान रखना, ऑप्शन इज ऑन फॉरेक्स नॉट ऑन फ्यूचर्स. बट यहाँ पे सेम क्या है कॉन्ट्रैक्ट साइज भी. ठीक है, तो क्या करोगे? यू हैव टू सेल यूरोज, सो यू विल बाय पुट. गुड. क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज होगा?
नहीं। क्या एक्सरसाइज प्राइस चेंज होगा? यस, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस आपका डिफरेंट कोटेड है फॉर ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमें कोई स्टेप्स दिखाने की जरूरत है अलग से? नहीं, सीधा क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू को, वाशी को लिख देता हूँ, डब्ल्यू को नहीं करते, वाशी को 2 5 फुट्स कितने हैं? ऊपर 640 थे, कितने थे? तो वही लिख देता हूँ, 640 फुट्स, यस, विद 7 months expiry at exercise price of euro 1 is equal to JPY 126। बता दिया उसने आपको, क्लियर? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हुए बिकॉज प्राइस वाज, कॉन्ट्रैक्ट साइज वाज द सेम। बाय क्यों कर रहे हैं हम पुट्स? बिकॉज अगेन वी हैव टू सेल यूरोज, so we want the option to sell euros. Which type of option will give us the option to sell? Put option। 7 months expiry क्यों? अगेन क्लोजेस्ट बट आफ्टर, प्राइस जो है वो क्वेश्चन ने दे दिया। क्लियर एवरीवन, पीपल ऑनलाइन, इज दिस क्लियर? आगे चलें। वी हैव सेट अप द ऑप्शन। सेटअप के लिए एक और स्टेप क्या होता है? पे प्रीमियम। कितना प्रीमियम देंगे प्लीज बताओ? कितने कॉन्ट्रैक्ट थे? 640 थे, मल्टीप्लाई बाय क्या था? क्या लिया प्रीमियम के लिए? क्या लिखा उसने? 3.8। अमाउंट इज कोटेड जेपीवाई पर यूरो, तो हर यूरो के लिए कितना दोगे? 3.8। तो पहले बताओ कितने यूरोज आपने पुट ऑप्शंस के यूज किए? 640 कॉन्ट्रैक्ट इनटू व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज? These many euros worth of put options you've taken, each euro के लिए कितना दे रहे हो प्रीमियम? 3.8 JPY। ठीक है, अब इस सारे को हम डिवाइड कर दे 10⁻⁶, क्योंकि हम मिलियंस में दिखा रहे हैं अमाउंट। यस, मैं यहाँ कर देता हूँ अमाउंट्स इन JPY मिलियन। क्लियर? इसको सॉल्व कर देते तो तब प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 304 जापानीज येन मिलियन। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? अब इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इजी बट इंटरेस्टिंग। विल यू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट? ये कैसे चेक करोगे? विल यू, ऑप्शन फ्यूचर के केस में तो ऑप्शन ऐसा कुछ होता नहीं है एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, तो आपने नेट रिजल्ट निकाल दिया। अब यहाँ पे आपके पास 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स के बाद का एक्सचेंज रेट, फ्यूचर रेट ही नहीं है, स्पॉट रेट ही नहीं है, इसको तो आप स्पॉट रेट से कंपेयर करोगे। क्या आपके पास 6 मंथ्स बाद का स्पॉट रेट है? तो हाउ विल यू डिसाइड whether you are exercising the option or not? हाँ, एक अप्रोच ये है, मान लेते हैं कि होगा ही, अगर होगा तो कितना आता है अमाउंट। अदरवाइज रियल मतलब लॉजिकली क्या होता? यू वुड हैव कंपेयर्ड 126 with the spot rate as on the transaction date। इसमें तो फ्यूचर रेट से मतलब ही नहीं है। These options are not on future, these options are on exchange rate। तो आप क्या करते हैं? एक्सचेंज रेट से कंपेयर करते हैं उस दिन का, वो तो है ही नहीं आपके पास। तो आप ये डिसाइड कैसे करोगे whether you have to exercise the options or not? Everyone, correct, you don't have the price, but if you see the requirement also, the requirement says estimate the expected amount of JPY receivable under each hedge choice। That means assuming you are exercising the option, then what would have been the settlement? Very good, very good, वापस जाओ। तो इतना तो प्रीमियम देना ही पड़ेगा। यस, सेटलमेंट, सेटलमेंट if put options are exercised। कितना सेटल कैसे करेंगे बताओ भाई? सेम चीज 640 इंटू 125। यस, किस प्राइस पे? 126 पे मिलेगा, डिवाइड बाय 10⁻⁶। अगेन बिकॉज वी आर डूइंग
Calculation in millions. कितना amount JPY you will get? तो इसको पे माइनस कर दो, ठीक है जी. So net proceeds which you will get in JPY subject net of premium is this. क्या बोलते हो? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक और चीज वी शुड हाईलाइट अंडर फॉरवर्ड्स, और फिर कंक्लूड भी कर देंगे एक बार. तो हाईलाइट योर आंसर. फ्यूचर्स में कितना आ रहा था, कितना आ रहा था? ऑप्शंस में इतना आ रहा है. अब कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है भाई ऑन द हेजिंग ऑप्शंस? एफआरए, एफआरए नहीं है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट नहीं है. फ्यूचर्स ऑप्शंस बताना मुझे. ऑप्शंस की नेट प्रोसीड थी 9776, फ्यूचर्स की टिक 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 10,062, इसकी थी 10,024, 10,024. These are again amounts in JPY million. क्या बोलते हो? Which one? Which one you should choose? इस पे तो कुछ ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशन एडिशनल है नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. अभी कमेंट्स तो बाद में देंगे, अभी कंक्लूड करना है इसमें. तो क्या बोलना चाहिए भाई? फ्यूचर्स, बिकॉज इसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा. Just the maximum. Repeat. Clear. Clear. अभी वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे इस पे एक सेकंड के लिए. Estimate the expected amount JPY receivable under each hedge choice and the additional debt finance needed to fund the Aeron project. ठीक है. क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है Vashiko intends to finance the project, the Aeron project, through proceeds from an agreed sale of small European subsidiary with any additional funding requirement met by additional debt. है ना? तो अगर आपको चूज करना है तो यू विल से कि भाई फ्यूचर्स में मैक्सिमम मिल रहा है, लेट्स गो विद फ्यूचर्स, इसी से एज कर लेते हैं. क्लियर? सो दिस वाज द बी का फर्स्ट पार्ट, अमाउंट ऑफ जेपीवाई रिसीवेबल अगेंस्ट ईच हेज चॉइस. अब बी वन का सेकंड पार्ट पे आते हैं, एडिशनल डेट फाइनेंस नीडेड. कैसे निकालोगे? बिल्कुल, उसके लिए क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? एडिशनल डेट फाइनेंस नीडेड टू फाइनेंस एरोन प्रोजेक्ट. तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल फंड रिक्वायरमेंट है कितनी. क्या क्वेश्चन है बताया हुआ है? आई एम थिंकिंग मतलब एक्सपेक्टिंग ही बताएगा, नहीं तो हम निकालोगे, अब निकालोगे कैसे? ये तो एरोन प्रोजेक्ट, ये रहा कैश फ्लो कहाँ लिखा है? तो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज ARD 110,150. वो यहाँ भी आ भी रहा है. वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी. So how much money do you require for Aeron project? So this is at the end of 12 months. Yes. Total fund requirement for the project. ये भी ARD में है ना? कितना था? 10,1. ये है यस, बट पहले आप इसको JPY में नहीं करोगे क्योंकि अभी सारी कैलकुलेशन होम करेंसी में हो रही है. अभी आपको लोन उसने बोला है किस पे लोगे, जो बचेगा उतना एडिशनल डेट किस पे लोगे? JPY में लोगे, इन जापानीज करेंसी, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप, टोटल फंड रिक्वायरमेंट इतना है,
टोटल फंड रिक्वायरमेंट जेपीवाई में कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा मुझे? क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आपको एआरडी में अमाउंट दिया हुआ है, आपको जेपीवाई में अमाउंट चाहिए, कैसे निकालोगे? करेक्ट, यूरो कॉमन है तो क्या करेंगे? ओके ओके, और आपको 12 मंथ्स बाद का रेट चाहिए, वो कैसे करेंगे? तो 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। फर्स्ट स्टेप है, आप आज का एआरडी जेपीवाई रेट निकालोगे। सेकेंड स्टेप, आप कौन सी थ्योरी लगाओगे, इंटरेस्ट रेट पैरिटी या परचेजिंग पावर पैरिटी? इन्फ्लेशन रेट्स दिए हुए हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी लगाओगे टू कंप्यूट योर एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट्स या एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स आफ्टर 1 ईयर। यस, वेरी गुड, यस यस, ट्रिपल पी। सॉल्व करते हैं। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने देव integrated so many different aspects. Nice. So refer working note 1. अभी तक तो वर्किंग नोट बनाया है ना इसका कोई, है ना? वर्किंग नोट 1। तो पहले मैं लॉन्गर वे से आपको दिखा दूं या सीधा शॉर्टकट लगा दूं क्रॉस रेट्स का? नहीं, बट लॉन्गर वे दिखाना है मुझे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं। सब लोग समझ गए पक्का? बताओ पीपल ऑनलाइन, आप लोग भी? एक्सचेंज रेट एआरडी टू जेपीवाई, ये निकाल रहे हो यहाँ पे? स्पॉट रेट बताना मुझे जरा, क्या दिए हुए एक बार? स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है? यूरो 1 इज इक्वल टू 129.2 132.4, ये जेपीवाई है। ओके, और यूरो 1 92.7.6, दिस इज एआरडी। ये आज के रेट है, ठीक है? हमें पहले आज का कौन सा रेट निकालना है, एआरडी जेपीवाई। ओके, तो मैं पहले आप लोगों को एक काम करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट वन एंड देन वील क्विकली डू द इजी कैलकुलेशन। सो नॉट फॉर द एग्जाम, ठीक है? दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या करोगे आप? पे रिसीव, क्योंकि क्रॉस रेट, सॉरी क्योंकि स्प्रेड है इसलिए 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। स्प्रेड नहीं होता तो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करते तो बहुत इजी होता। ओके, क्या है? अज्यूम यू हैव, पहले कुछ भी ले लो, जीपीवाई ले लो एंड वांट एआरडी। सेकंड केस में ले लेंगे हम, अज्यूम यू हैव एआरडी एंड वांट जेपीवाई। ठीक है जी, चलो पहले केस 1 करते हैं। जब आपके पास जेपीवाई है और आपको एआरडी चाहिए, तो आप किस रेट पे करोगे? अभी ये 1 यूरो है, पर यूरो की बात हो रही है क्योंकि पर यूरो रेट्स दिए हुए। तो आपका जेपीवाई है, आप बैंक के पास गए, बैंक आई वांट जेपीवाई है, आपको क्या चाहिए? यूरो, बिकॉज आप फिर यूरो बेच के एआरडी लोगे तो आप डायरेक्टली एआरडी नहीं ले सकते, तो आप क्या जाओगे? बैंक मेरे पास 1 यूरो है, मुझे क्या चाहिए? सॉरी, मेरे पास जेपीवाई है, मुझे 1 यूरो चाहिए। बैंक कितना लेगा 1 यूरो के बदले? 132.4। यस, तो बैंक बोलेगा ठीक है भाई, जेपीवाई दे दे, मैं तेरे को 1 यूरो दूंगा। आपके पास यूरो आ गया, अब आप सेम बैंक के पास गए, बैंक रुक जा, मेरे को ना एक्चुअली अब इसके बदले एआरडी दे दे। तो मैंने पे पहले क्या किया, 132.4 जेपीवाई,
फॉर 1 यूरो। अब मैं रिसीव क्या करूंगा फॉर 1 यूरो? अब बैंक के पास गया, बैंक मेरे को एआरडी दे दो, मेरे पास क्या है, 1 यूरो आ गया। बैंक बोलेगा वेरी गुड, अब मैं तेरे को कम एआरडी दूंगा 1 यूरो के बदले। तो क्या दूंगा? 92.7 एआरडी। यस, सेम लॉजिक लगाओ अब दूसरे सिनेरियो में कि अब आपके पास क्या है, एआरडी। अब आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हो। अब बैंक के पास गए, बैंक मेरे पास एआरडी है, मुझे क्या दे दे? यूरो। तो कितने एआरडी देगा यूरो के बदले? तो यू हैव टू पे 95.6 एआरडी टू गेट 1 यूरो। यस। अब आपके पास 1 यूरो आ गया, बैंक के पास गया, बैंक अब मेरे पास 1 यूरो आ गया है, मुझे जेपीवाई दे दे। कितने जेपीवाई देगा 1 यूरो के बदले? 0.9.2। क्लियर हुआ सबको? जेपीवाई। यस, पक्का। अब आपके पास रेट्स आ गए। अब क्या करना है आपको? अब इनको डिवाइड करके, मतलब व्हाटएवर एडजस्ट करके एक्सचेंज रेट निकाल दो। तो दोनों तरीके से निकाल के दिखा देता हूं आपको मैं। 1 एआरडी इज हाउ मेनी जेपीवाई, ये निकाल लेते पहले। सिमिलरली 1 जेपीवाई इज इक्वल टू हाउ मेनी एआरडी निकाल देते हैं। चलो बताओ भाई, 1 एआरडी इज हाउ मेनी जेपीवाई। फर्स्ट केस में क्या करेंगे? कितने जेपीवाई इस केस में कैसे करोगे? 1 एआरडी इज इक्वल टू हाउ मेनी जेपीवाई। कैसे निकाला? किसको किससे डिवाइड करा है? 132.4। ये करेंगे पक्का? किसी का कोई डिफरेंट व्यू? 100%। वेरी गुड। सिमिलरली उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे? 1 जेपीवाई इज इक्वल टू एआरडी कैसे करेंगे? 92.7 अपॉन 132.4, 0.7। सिमिलरली दूसरा रेट बताओ, बेटा स्प्रेड में दोनों रेट्स होते हैं, दूसरा रेट बताओ। 129.2, 95.6 और यहाँ पे 95.6, 0.74। क्लियर? पक्का? एग्जाम में ये स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप सीधा ये कैलकुलेशन जो मैंने करी इसके बाद ये दिखा सकते हो। दिस जस्ट टू help you understand this revise the concept. Hopefully this was clear. If you have such a scenario in the exam and you have to compute the cross rates, then how do you do that? Okay? Especially in case of a bid ask spread, because then it's not direct. Then you can't just take the rates and divide multiply. You'll have to take the bid rate and then the ask rate and vice versa. So this was not for the exam. I will just highlight this so that when you revise you don't get confused. ठीक है जी? चलो, तो ये रेट्स निकाल लिया आपने। अब आपको करना क्या है? यू वांट 12 months लेटर की रेट। यस। स्पॉट रेट कौन से लेना चाहिए लॉजिकली, ये वाला या ये वाला? आपकी होम करेंसी क्या है? तो बेटर रेट कौन सा है? जेपीवाई। यस, अगेन दोनों लोगे, आंसर गलत नहीं आएगा, तो कोई अप्रोच में भी मिस्टेक नहीं है, बट जस्ट इजियर इफ यू टेक द जेपीवाई रेट, इट्स जस्ट इजियर। Sir, for exam purposes, divide cross rates and multiply bid with bid ask with ask. Sir, for exam purpose, if divide cross the rates and multiply bid. हाँ दोस्त, मतलब in the sense, I don't have a problem with how you compute the rates. It is just that I don't want you to get confused. I am a person who likes to understand the concept and then apply it. So I will not be able to give you any shortcuts. That's not my recommendation. If you understood what we've done, it's very easy to apply it. Okay? You know how to compute one rate from the other. Yep. So, आगे चलते हैं। So, स्पॉट रेट क्या हुआ फिर आपका? कौन सा रेलेवेंट रेट है? क्या चारों रेलेवेंट रेट्स है? नहीं, हमें चारों रेट से वर्क ही नहीं करना। वी जस्ट नीड टू टेक वन रेट एंड देन अप्लाई द इन्फ्लेशन। क्लियर? तो क्या करोगे?
हमने क्या बोला, बेटर इज टू टेक द जेपीवाई रेट, तो स्पॉट रेट कौन सा ले लिया हमने, 1 जेपीवाई इज इक्वल टू एआरडी, बट स्प्रेड निकाला है 0.7 0.74, क्लियर, यस। अब आपको चाहिए रेट्स आफ्टर 12 मंथ्स, क्या लगाओगे, अप्लाइंग ट्रिपल पीटी, परचेज पावर पारिटी थ्योरी, करेक्ट, इन्फ्लेशन रेट्स दिए हुए हैं, इन्फ्लेशन रेट्स जापान, ईरान, 9 है जापान का, 1.5 और इसका 9 था, यस। तो इन्फ्लेशन रेट्स दिए हुए, तो पीपीबीटी लगा दो, कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय 1.09 डिवाइड बाय 1.01 0.75, clear everyone? Why is it relevant to ensure that you are choosing the spot rate and then applying the PPPT properly? Because अगर ये आप 1 ARD करते is equal to GPY करते, तो फिर आपके रेट्स ऑपोजिट हो जाते, 1.015 न्यूमरेटर में जाता, 1.09 डिनोमिनेटर में जाता. So please be very careful how you are quoting the exchange rate and then how you are applying the purchase power parity theory. Very easy to make a mistake, super easy to make a mistake here. ठीक है, as I said, mathematically both the ways are correct, choosing the exchange rate, but the next step will depend on how you are choosing the interest rate. ठीक है जी, चलो. Similarly, ये 1 क्यों आ गया, 0.74 था, क्या करेंगे, 0.74 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट डिवाइड बाय 1.015, gives me an answer of 0.79. क्लियर, पक्का, लॉजिकली भी सोचो, इन्फ्लेशन किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, ईरान में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो रेट क्या होना चाहिए, ईरान शुड अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, क्या ईरान डेप्रिशिएट हो रहा है या अप्रिशिएट हो रहा है, सोच लो, थिंक सी. पहले एक जेपीवाई के बदले कितने ईरान मिलते थे, 0.7, अब एक जेपीवाई के बदले कितने ईरान मिलेंगे, 0.75. कौन डेप्रिशिएट हो रहा है, ईरान या जेपीवाई, ईरान डेप्रिशिएट हो रहा है, सही है, पक्का, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं क्या हो गया, जज कॉब लगा, ठीक है, क्लियर एवरीवन, आगे चले. So what is the relevant exchange rate after 12 months? कंक्लूड करो इसको, दोनों में से कौन सा relevant exchange rate है after 12 months? You want what? You want what? You will buy ARD or sell ARD? Buy ARD. Sell JPY. बैंक. मेरे पास क्या है, JPY. मुझे क्या चाहिए, ARD. एक JPY के बदले बैंक कितना ARD देगा, 0.75 या 0.79? 0.75, absolutely. Go by the logic, you will never make a mistake. Therefore, the relevant exchange rate to buy ARD against JPY is JPY1 is equal to ARD 0.75. Clear? ये था आपका वर्किंग नोट. अब इस रेट को लगा दो यहां पे, डिवाइड मल्टीप्लाई, इतने ARD चाहिए, एक JPY के बदले 0.75 ARD मिलेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई. पीपल ऑनलाइन, क्या व्यू है, डिवाइड, वेरी गुड, 0.75 इतने मिलेंगे,
कितने JPY आपके पास ऑलरेडी हैं? फंड्स अवेलेबल फ्रॉम सेल ऑफ यूरोपियन सब्सिडी कितने हैं? 10,062। आपने फ्यूचर लगाया था? क्लियर? यस। एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड। दिस माइनस दिस 3,472 JPY मिलियन। ये सारा बाकी तो JPY मिलियन है ना? यहाँ पे लिख के देता ना। यस, गुड, आई लाइक इट। किसी को याद नहीं था ये? क्या फ्यूचर्स का पूरा अमाउंट लोगे? नहीं, 6 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करोगे? करोगे। फिर हमने ये पढ़ते हुए भी याद आया था हमारे को, किसी ने याद नहीं दिलाया। सर 103 तो वो भी रिसीव्ड लिटरली तो इंटरेस्ट। वेरी गुड यार, गुड, एक्सलेंट। The people who were able to identify this will get full marks. The others will lose a lot of marks because these workings will be used in the second part as well. देख रहे हो? Again, cross rates, cross linkage. Working note 2. क्या बताना चाहते हो आप? Funds available after 12 months. Yes? क्या अभी आज टाइम 0 क्या है? टाइम 6 पे आपको पैसे मिल रहे हैं। टाइम 12 पे आपको इन्वेस्ट करने हैं, मतलब यूज करने हैं। करेक्ट? यही है आपका टाइमलाइन। क्लियर? तो हाउ मच आर यू गेटिंग एट द एंड ऑफ T6? 10,000 कितने थे? 10,062। यू नीड द फिगर एज ऑन T12। कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट कर दोगे? 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। वेरी गुड जी। कितना रेट मिलेगा? 1 पॉइंट रेट दिया था ना यहाँ पे कुछ, ये रहा 1.20। सो अमाउंट एट T1 क्या होगा? 10,062 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1.2 इंटू 50%, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए ही ले रहे हो आप, सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ जी, क्वेश्चन पूछे। 1.2 ये रहा। एनालाइज यील्ड ऑफ शॉर्ट डेटेड जापानीज ट्रेजरी बिल्स 1.2%। एनालाइज यील्ड है, उसको अपोर्शन करेंगे। यस, सॉल्व कर दो। कितना आता है? 60। नहीं, कुछ मिस्टेक हो गई। 0 नहीं, सॉरी 1.2 था ना। ये भी तो परसेंट है यार, सही तो कर रहा था मैं, है ना? ये तो परसेंटेज है ना, ये भी तो। ओके, 10,122। सो गोइंग बैक, amount which you already have at the end of 12 months, 10,122। तो कितने और चाहिए? 3,411 मिलियन जापानीज येन। क्या ये सबको समझ में आया? Therefore, the additional funds which are required, इसको भी हाईलाइट कर देंगे बिकॉज ये हमारा आंसर है फाइनल। At the end of 12 months for additional investment in the Aeron project in Japanese million 3,411। Question पढ़ो। This is what the question was asking us to do. Question said, please tell me
Estimate the expected amount of JPY receivable under each hedge choice and the additional debt finance needed to fund the Aeron project for the preferred hedge choice. Are we clear? अभी तक मैं जो भी सॉल्व किया है वो सिर्फ 12 मार्क्स के लिए किया है, इतनी सारी मेहनत, ठीक है जी. बट ऑफ कोर्स you've taken more time because we've discussed. The idea is in the exam, when you're aware, you'll be much quicker, much faster, right? So it'll be more efficient. ठीक है जी, आगे चलें. आई नो हमारा ब्रेक का टाइम एक्सटेंड हो रहा है, क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं वाला क्वेश्चन, या कर लें, कर लेंगे, अभी फ्लो में है, ठीक है, फिर थोड़ी लंबी ब्रेक ले लेंगे, कोई बात नहीं. चलो लेट्स मूव ऑन टू द एनपीवी. तो अब फॉरेक्स हेजिंग से धीरे धीरे वी आर मूविंग टू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. अब पढ़ते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या. तो भाई तेज बोल ले यार, भूख लग रही है. टेंशन नहीं लेने का भाई लोग, लेट्स मूव ऑन. तो खा सकते हो यार, बैठे बैठे खा सकते हो, टेंशन नहीं क्लास में. चलो लेट्स रीड एयरऑन प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन. क्या बोल रहा है, तो उससे बोला है member of Washiko's finance team has already produced the following estimate for the project, which is expected to last for 4 years. The estimates are based on the notes given below, but not on the further information. देखते हैं क्या है. The estimates have been checked and verified independently for the numerical accuracy. ये भी बोल दिया भाई हमने कोई कैलकुलेशन में एरर नहीं करा है, ठीक है, वेरी गुड. हमने एक्स्ट्रा कॉफी पी ली थी. करते हैं. All figures are in ARD millions. Sales revenue, cost, tax allowable depreciation, pre-tax profits, tax at 15%, tax allowable depreciation. Add back भी कर दिया, देखो कितने अच्छे लोग हैं, है ना. CFAT निकालने की कोशिश करी हमने अच्छे से. फिर वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी और कैश फ्लोज इन ARD उन्होंने नेट कर दिए. ओके, सब कुछ कर दिया, वेरी गुड. चिन्मय से हम क्यों पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, सारा तो आंसर दिया है, फ्री का बोलो यस कैलकुलेशन इज करेक्ट, यही आंसर है, बाय बाय. Notes incorporated with the estimates above. तो ये कह रहा है ये 4 points already have been incorporated in the workings. क्या है? The estimates are based on using the end of the first year when the project commences as the start of the project. क्या ये सही किया? Yes. Question ने बोला था. The numbers are given in ARD million. The total investment required for the project is this and separated into building, machinery and working capital in the table above. Very good. The machinery is eligible for tax allowable depreciation on an SLM basis and the working capital is redeemable at the end of the project. तो अगर आप देखो तो working capital 400 था, 400 वापस आ गया. Investment in machinery is 4000. उसने बोला हर साल मिलना चाहिए. टेक्निकली फोर्थ ईयर में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बैलेंसिंग अलाउंस मिलेगा, बट मैथमेटिकली सेम है. चलो आगे चलो. इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. इन्फ्लेशन भी कंसिडर कर दिया. कितने अच्छे लोग हैं. Corporation tax has been included based on the Aeron's annual rate of 15%. The tax is payable in the year that the tax liability arises. क्या बात है, इतना इजी क्वेश्चन कर दिया है ना, सब कुछ दे दिया. टैक्स भी अरियर्स में नहीं है. फर्दर इन्फॉर्मेशन नॉट इनकॉर्पोरेटेड. कह रहे कुछ तो काम थोड़ा सा करो. फिर में दिस इज फॉर यू. Undertaking the Aeron project will result in lost sales for Washiko. मतलब क्या हुआ, अगर आप Aeron प्रोजेक्ट करते हो मतलब Aeron में प्रोजेक्ट करते हो, then you will lose some sales in Japan for Washiko. These sales would have generated a pre-tax contribution of Japanese yen 110 million in the first year of the project, rising by the Japanese rate of inflation in the following years 2 to 4. तो ये इसका इम्पैक्ट ऊपर नहीं लिया. मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या इसका इम्पैक्ट Aeron में आएगा, मतलब ARD में आएगा या JPY में आएगा? You we all agree? इसका इम्पैक्ट JPY में आना चाहिए, not in Aeron. Yes, JPY. So what I'm trying to say is, let me go back. हमने दो अप्रोचेस डिस्कस करी थी, बेस एंड ऑल्टरनेटिव. आई थिंक अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा से तो समझ में आ गया हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस अप्रोच, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिव अप्रोच, राइट. ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसने बोला ऑल्टरनेटिव अप्रोच में, उसने ARD JPY में बोला. बेस अप्रोच में द फर्स्ट स्टेप वाज कंप्यूट कैश फ्लोज इन द US. मेरे केस में अब यहाँ पे ARD हो गया, कंप्यूट कैश फ्लोज इन ARD, करेक्ट. अब उन्होंने कुछ कैश फ्लोज ARD पे ऑलरेडी कंप्यूट कर दिए.
उसके बाद उसने हमें नोट्स दिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका इम्पैक्ट कैश फ्लोज इन एआरडी में आना चाहिए या फिर स्टेप 3 जो थे, एडिशनल कैश फ्लोज इन द पेरेंट कंट्री, इसमें आना चाहिए? स्टेप 3 में आना चाहिए। वेरी गुड, यस, स्टेप 3 में आना चाहिए। वापस जाते हैं। The Aeron project costs include components which are made in Japan by Washiko and would be imported to the Aeron project. The pre-inflation revenues generated from the sale of the components are estimated to be as follows. तो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट थी ऊपर, which are made in Japan, that include components which are made in Japan. उसके बाद उसने component revenue दे दिया. These revenues are expected to increase by the Japanese inflation rates in years 2 to 4, and the contribution which WCO expects to earn on these components is 25% of revenue. क्या इसके नीचे और कुछ बोलता है क्वेश्चन? नहीं, पहले इसी पॉइंट पे। तो मेरे क्वेश्चन का पहले एक सेकंड, होल्ड एवरीवन, रीड द सेकंड पॉइंट अगेन एंड देन टेल मी, will this in my presentation impact step 1, or this will impact step 3, or it will impact both steps 1 and step 3? Wait, don't give me the answer right now. Read what is there on the screen and then tell me. Only step 1, only step 3, or both steps 1 and step 3, 1 and 3. Okay, why are we saying only 3? Very good. Heading है further information not incorporated in the estimates above. तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये स्टेप्स 1 एंड 3 दोनों में जाना चाहिए, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे देन इट सेज द एरॉन प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूड कंपोनेंट्स। दैट मींस जो आपने ऊपर कंपटीशन करी कैश फ्लोज की, उसके जो ये कॉस्ट हैं, ये वाली, दिस कंपोनेंट कॉस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. What is not included? The impact for Washiko. Therefore, this should be only step 3. People online, are you following? Pakka? Any questions on this point? Clear? Very good. अभी चलते जी. Point number 3 क्या है? The Japanese annual corporation tax rate is 30%, and tax is payable in the year in which the liability arises. A bilateral tax treaty exists between Japan and Aeron, which permits offset of overseas tax against any Japanese tax liability in the overseas earnings. Again, my question: steps 1 and 3, only step 3. Only step 3. Only talking about additional liability in Washiko. Washiko's finance department has estimated a cost of capital of 12% to be used as the discount rate for the project. तो ये जो स्टेप 4 था, उसने कंप्यूट करके दे दिया हमें. तो बेसिकली हमारे को स्टेप 1 करके दे दिया क्वेश्चन ने, स्टेप 2 हमें करना होगा, स्टेप 3 करना है, स्टेप 4 करके दे दिया, स्टेप 5 करना है. Going back to the requirement for a minute. Estimates the NPV of the Aeron project in Japanese yen based on the end of year 1 being the start of the project. ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, अभी आप देखोगे जब अभी हम करेंगे इसको. दिस इज वेरी वेरी गुड लाइन एंड सच अ सिंपल लाइन टू मिस एंड मेक अ मिस्टेक. इसका इंपैक्ट कहां का आएगा अभी 2-3 जगह देख चुके हैं, अभी एक और जगह आएगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेट्स डिस्कस दैट. ठीक है, सॉल्व करें. 9 मार्क्स, बिकॉज उसने आपको बहुत सारी चीजें करके दे दी, तो इसलिए सिर्फ 9 मार्क्स. Otherwise, this would have been 14, 15, 16 marks as well, had it asked you to compute cash flows in ARD. ठीक है जी, चलो, let us start preparing. So this is appendix 2 now. Appendix 2, NPV of the Aeron project in JPY. बोल भाई, क्या हो गया? चले आगे. चलो, कितने उससे? 0,
1, 2, 3, 4. Amounts in JPY million. Sure. Come. किससे स्टार्ट करोगे? स्टेप 1 क्या होता है? फेस कैश फ्लोज एज पर द क्वेश्चन कितने थे? नेगेटिव. ओके नेक्स्ट. भाई वो रिपीट मत कर, तू नेक्स्ट बता. हाँ ओके थैंक यू सो मच. अब ये क्वेश्चन ये सॉरी ये इन एआरडी मिलियन है. एआरडी मिलियन. ओके अब हमें क्या चाहिए? वी वांट द बेस कैश फ्लोज कन्वर्टेड टू होम करेंसी, कन्वर्टेड टू जेपीवाई मिलियन. रेफर. कितने वर्किंग नोट बना चुके? 2 बना चुके ना. वर्किंग नोट 3. यस. वापस जाते हैं यहाँ पे. स्टेप 1 क्या था? कैश फ्लोज इन द फॉरेन करेंसी. हमने कर लिया. स्टेप 2 क्या था? कन्वर्टिंग द कैश फ्लोज इन स्टेप 1 टू द पेरेंट करेंसी. मेरे एग्जांपल में पाउंड्स था, हमारे क्वेश्चन में क्या है? जीबीवाई. अब तो हमने इसमें थ्योरीज डिस्कस करी थी. पावर परचेजिंग पावर पैरिटी एंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी. इन्फ्लेशन रेट्स दिए हुए हैं. इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन रेट्स के लिए तो कौन सा रेट लगाओगे, कौन सी थ्योरी लगाओगे? ट्रिपल पीटी. करेक्ट. वो हमने भी लगाई भी थी फॉर द डेट कैलकुलेशन. वी कंटिन्यू विद द सेम. गोइंग बैक. वर्किंग नोट नंबर 3. वर्किंग नोट 3. expected ARD JPY exchange rates. Yes. अब आता है इंटरेस्टिंग पॉइंट. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट. कैसे निकालेंगे? टाइम 0 का गिवन है. 1 2 3 4 5 है. नहीं 4 है. 4 है. एक्सक्यूज मी. हाँ जी. क्या दिया? 1 ARD इज इक्वल टू या 1 GPY दिया? क्या दिया हुआ है? 1 JPY दिया हुआ है. क्या लेना चाहिए? सब फिगर्स ARD में. क्या निकाला था? तो वो क्या था? एक सेकंड. 1 JPY इज इक्वल टू ARD. ठीक है. अच्छा कितना था? हाँ निकाला था. ये रहा. 0.7 to 0.74. Why? Which rate should we take? 0.7 ये वाला या ये वाला? क्यों? 1 साल बाद का हमारा फर्स्ट ईयर है. समझ में आ रहा है फर्क? वापस जाते हैं. Based on the end of year 1 being the start of the project year 0. इसका मतलब क्या हुआ? You will not take the spot rate to start. You will take 0.75 to 0.79 to start at time 0 and then apply inflation for years 1 to 4. Is that clear? The slight nuance in terms of how the question is worded. You are still in time 0 at time 0, but the way the question is asking you to compute, it's saying you expect end of year 1 being time 0 for the purposes of this NPV calculation. Ajit, good question. आना चाहिए ना एग्जाम में. बिल्कुल. यार अब तो बोलो हाँ यार. सॉल्व कर रहे हो तुम साथ में, फिर बोल रहे हो नहीं. मतलब सेम क्वेश्चन आज बोला जाए यस वी नो हाउ टू सॉल्व इट. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कम ऑन. कॉपी पेस्ट. ये देखो रट लो सब चीजें है ना. रिकॉर्ड कर ले मेरी क्लास. वैसे बहुत चल रही हो. समझो यार कॉन्सेप्ट समझो. कॉन्सेप्ट बी पॉजिटिव मैन. कम ऑन. चलो तो फिर
अच्छा, फर्स्ट पॉइंट गाइस, सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये आउटफ्लो है, ये सारे इनफ्लोज हैं। लॉजिकली क्या हमें दो रेट्स लेने चाहिए? बिडा स्प्रेड में क्या हमें दो रेट्स लेने चाहिए? क्यों? क्यों? लॉजिकली वापस जाते हैं, रुक जाओ दोस्त, रुक जाओ। जीरो से, आई एम नॉट अ टाइम जीरो टाइम वन, आई एम ऑन द बिड आस्क स्प्रेड। जब आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, एआरडी में आउटफ्लो है, ठीक है, आपके पास क्या है? येन। यू गो टू द बैंक, बैंक, आई हैव येन, आई वांट एआरडी। बैंक बोलेगा वेरी गुड, रेट ये रहा। स्पॉट रेट लेंगे या 12 मंथ्स? 12 मंथ्स वाला लेंगे, अभी हमने बात कर ली है ना, 12 मंथ्स वाला रेट है। तो दिस इज 1 जेपीवाई इक्वल टू सो मेनी एआरडीज। बैंक बोलेगा, आप बोलोगे मेरे को क्या चाहिए, 10,000 मिलियन एआरडी चाहिए। बैंक बोलेगा ठीक है, एक जेपीवाई के बदले मैं कितने एआरडी दूंगा? 0.75। क्लियर हुआ? ओके। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपके पास, मतलब फर्स्ट ईयर में आपके पास इनफ्लो है, अब आपके पास क्या है? एआरडी। अब आप बैंक के पास जाके क्या बोलोगे? बैंक बैंक, मेरे पास क्या है? एआरडी। मुझे एआरडी के बदले क्या चाहिए? एपीवाई। अब बैंक कितने एआरडी लेगा एक जेपीवाई के लिए? 0.79। क्या बिड आस्क अलग अलग हो गया? एक और कॉम्प्लिकेशन आ गई लाइफ में। वेरी गुड। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। इन द एग्जाम, इंपॉर्टेंट, इन द एग्जाम you don't need to show the different rates. You can take an assumption and include a note saying, for the sake of simplicity, we are taking one rate as the base and applying it throughout the life of the project. I will write that assumption, but first let's understand. Clear? So in the exam, you can definitely take this as a single rate and apply it all throughout the project life, rather than differentiating between a receipt in ARD and a payment in ARD. क्या ये क्लियर हुआ सबको? पक्का? You can, again, you can, but there is another simpler way of doing it. आप करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो. You won't be, the marks won't be deducted for that. But you can also do it a simpler way, taking one rate and using the purchasing power parity theory on that rate. That's absolutely fine. क्योंकि अदरवाइज सोचो, आपको परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इस पे लगानी पड़ेगी एक साल के लिए 0.75 पे, और फिर 0.79 पे लगाने के लिए 4 साल के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2. क्लियर? सो we'll take the simpler way here and follow that approach all throughout. चलो जी, तो क्या रेट था, हमने क्या निकाल दिया था? 0.75 निकाल दिया था हमने. So I think exchange rate itself should be 1 mark. Calculating the exchange rate should be 1 mark. Maximum 2, मुझसे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे दो चीजें लिखनी है. फर्स्ट, taking the रिपोर्ट भी अब 5 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. taking the 12-month rate as the spot rate, since the question states that year 1 should be considered as time 0. ठीक है जी, तो ये तो assumption थी for the starting point. अब दूसरी assumption क्या है? Note, for the sake of simplicity, we have taken the bid rate for both inflows and outflows in ARD for the project life, instead of considering
bid and ask rates separately. ठीक है, क्लियर? अब 0.75 कैसे होएगा, क्या मैथ्स करेंगे यहाँ बताओ पहले। 0.75 मल्टीप्लाई बाय यस, क्लियर? नेक्स्ट 0. क्या था 81 मल्टीप्लाई बाय 1.09 डिवाइड बाय 1.015। क्या एग्जाम में दिखाना है? यस दिखाना है, यस दिखाना है। गुड क्वेश्चन, आप ट्राई करना, मुझे भी बताना, ठीक है? वी शैल डिस्कस दैट, ठीक है? क्लियर? तो आपने रेट्स निकाल दिए, अब क्या करना था आपको? यू हैड टू कन्वर्ट दीज एआरडी अमाउंट्स इनटू जेपीवाई। क्लियर? इंटरेस्ट रेट के दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, स्टार्टिंग विद टाइम 1 व्हिच इज टाइम 0 एंड आल्सो टेकिंग द बिट रेट ओनली। चलो जी, तो अब क्या करेंगे? डिवाइड मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाय बैंक बैंक, मेरे पास क्या है? जेपीवाई, मुझे क्या चाहिए? एआरडी। और रेट कैसे कोटेड है? 1 जेपीवाई इज इक्वल टू 0.75 एआरडी, 13533। यही पूरा आपने यहाँ कर दिया, क्लियर? पक्का? तो अभी फर्स्ट स्टेप किया हमने इस कैलकुलेशन का, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, स्टेप 1 तो क्वेश्चन ने कर दिया था, तो अब स्टेप 2 कर दिया हमने, कन्वर्टिंग द कैश फ्लोज इन स्टेप 1 टू द पेरेंट करेंसी। अब आते हैं स्टेप 3 जिसमें हमें 2-3 वर्किंग नोट्स और बनाने होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि 3-4 चीजें क्वेश्चन ने दी हुई है, तो कुछ तो मेहनत हम भी करेंगे, है? अच्छा, so people online, there is a comment in the class that why do we need to prepare working notes? Don't prepare working notes, you'll not get full marks, as simple as that। कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है वर्किंग नोट बनाने के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट, undertaking the Aeron project will result in lost sales for Washington. These sales were generated a pre-tax contribution of JPY 110 million in the first year, rising by the Japanese rate of inflation in the following years 2 to 4। क्या है ये? प्री टैक्स, ठीक है जी, करें तो क्या करोगे आप? लेस ऐड, क्या होगा? लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन है, लेस या ऐड? लेस होना चाहिए, करेक्ट? लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं, काम करते हैं, इसको इजी कर देते हैं। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन नेट ऑफ टैक्स, तो इंस्टेड ऑफ 2 वर्किंग एक ही कर देंगे और सीधा रेफर वर्किंग नोट कर देते हैं, इजी। चलो वर्किंग नोट 4, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन नेट ऑफ टैक्स। चलो ये 4 इयर्स के लिए था सिर्फ, तो जीरो नहीं चाहिए ना मुझे इसमें। बताओ भाई, जीपीवाई मिलियन कितना था फर्स्ट ईयर में? तो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना है? 110। ओके, सेकंड में क्या था? कितना रेट? अच्छा 1.015 ना। इतना लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है ईच ईयर, लेस
टैक्स सेविंग्स, क्योंकि इतना टैक्स भी तो नहीं दोगे, ये प्री टैक्स था कॉस्ट, प्लस टैक्स सेविंग्स ऑन कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, कितना रेट क्या है 30 एट द रेट 30% माइनस दिस इंटू 30%. क्लियर? तो नेट लॉस कितना हुआ भाई? क्लियर? ओके जी, चलो अब एज इट इज वी कैन जस्ट कॉपी पेस्ट. नेगेटिव है ये. क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. The Aeron project costs include components which are made in Japan by Washiko and would be imported to the Aeron project. The pre-inflation revenues generated is this. तो ये revenues आप Japanese yen में generate कर रहे हो, ठीक है, बट ये revenue है, आपको क्या चाहिए? Contribution, correct? Revenue से क्या है, आप cost भी तो उसमें adjust करोगे. Revenues are expected to increase by the Japanese inflation rates. The contribution which Washiko expects to earn out on these components is 25%. क्या इस पर टैक्स लगेगा? Yes. तो पहले आपको दो चीजें करनी है इसमें. फर्स्ट ऑफ कोर्स आपको इन्फ्लेशन निकालना है, उसके ऊपर पहले आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको फिर टैक्स से एडजस्ट करेंगे. वेरी गुड. दिस may be looking long, but is this difficult? No. There are certain nuances which you have to be mindful of, but otherwise if you see the calculations are very, very straightforward. That's what I'm saying, practice. The more you practice, the better you will. So next क्या है? Post tax contribution on components used in the Aeron project. Refer working note 5. Yes, वर्किंग नोट 5 बनाते हैं. आप लोग मेरी हेल्प करना फिगर्स में. वर्किंग नोट 5, पोस्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन ऑन कंपोनेंट्स. बताओ भाई कितना है, किससे स्टार्ट करोगे? ईयर्स तो ले लेते हैं, वो सेम है. इसमें भी जीरो से तो कुछ नहीं हो रहा ना, फर्स्ट ईयर से, राइट? चलो बताओ. तो डू वी नीड रेवेन्यू अलग से, या वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद इन्फ्लेशन? लेना पड़ेगा रेवेन्यू, बिकॉज आपको रेवेन्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा. बताओ भाई कितना आ रहा था रेवेन्यू? 1200, 2400, 2500, 300. अच्छा, ओके जी. इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू फर्स्ट में चेंज हो रहा है या ईयर्स 2 से स्टार्ट हो रहा है? पढ़ो यार क्वेश्चन भाई लोग, कम ऑन. यस 1200. सेकंड में कितना कितना इंक्रीज हुआ? 1.2515 का 25 कहां से आ रहा है? ठीक है ना, क्या हो गया, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सेकेंड ईयर में क्या होगा, क्या बोल रहा है? जापानीज इन्फ्लेशन रेट्स, क्या इन्फ्लेशन रेट्स आपके चेंज हो रहे हैं हर साल? कितना लोगे? 10 पक्का? सोच लो, गलत है. सिर्फ 1 ईयर के लिए क्यों कर रहे हो? 2 साल के लिए करोगे ना? भूल गए इन्फ्लेशन एडजस्ट कैसे करते थे? रेस्ट ओवर 2 नहीं हो जाएगा? इट इज 1.5% ईच ईयर.
थर्ड ईयर में 2 साल का इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करोगे? 2576 नहीं होगा ये? एवरीवन पक्का? अगेन डोंट फॉरगेट सच स्मॉल पॉइंट्स. 300 into 1.015 रेज टू पावर 3 इयर्स के लिए इन्फ्लेशन एडजस्ट हो रहा है. वेरी गुड. कंट्रीब्यूशन कितना था? 25% था. दिस इंटू 25%. टैक्स कितना था? टैक्स ऑन कंट्रीब्यूशन 30%. दिस इंटू 30%. इसके बाद क्या आया? पोस्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन. ओके क्लियर. इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लो. अगेन ये पॉजिटिव फिगर्स है बिकॉज दिस इज एडिशनल रेवेन्यू फॉर वाशिको इन जापान. क्लियर यहाँ तक? अब 1 पॉइंट बचा है शायद एडिशनल टैक्स का. जापानीज एनुअल कॉर्पोरेशन टैक्स 30%. एयरॉन में कितना दिया आपने? 15% दिया. तो यहाँ पे कितना टैक्स और देंगे? वेरी गुड. इसमें बड़ी चीज क्या होती है इंपॉर्टेंट? कन्वर्ट किस पे करोगे? ग्रॉस वर्सेस नेट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वापस आते हैं. बिल्कुल जी. तो क्या लेंगे यहाँ पे? एडिशनल टैक्स इन जापान. रेफर वर्किंग नोट 6. सबको याद आ रहा है? वापस जाते हैं. वर्किंग नोट 6. एडिशनल टैक्स इन जापान. अगेन स्टार्टिंग विथ years 1 to 4. years में तो था नहीं. मैंने अच्छा क्वेश्चन बना के दिया था ना, इजी. कैश फ्लोज एंड एआरडी नहीं कंप्यूट करने बोल रहा था. वापस जाते एक बार क्वेश्चन पे. क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. किस वैल्यू पे लगाओगे? कैश फ्लोज एंड एआरडी या प्री टैक्स प्रॉफिट? यस वेरी गुड. Always remember pre-tax profits. The amount of income which is being taxed twice is to be considered. PAT is not being taxed twice. PBT is being taxed twice. That is why you compute tax on that and then get the benefit. क्या होगा? PBT in what? ARD million. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है. बताना जरा फिगर्स प्लीज. 1800, 5600, 6800, 300. ओके जी. अब क्या करोगे आप? PBT JPY मिलियन. एक्सचेंज रेट्स एज पर वर्किंग नोट क्या था? 3. दिस डिवाइड बाय 0.75 0.81. 81. Please don't make this mistake. हाँ जी करेक्ट. एडिशनल टैक्स इन जापान कितना लगेगा? एट द रेट 15%. कैसे निकाला? 30% एक्चुअल रेट था, 15% का क्रेडिट मिल गया. 15%. दिस इंटू 15%. फास्ट है? एब्सोल्युटली. This minus this and this goes all the way.
अब बताओ और कोई एडजस्टमेंट करेंगे? हाँ जी, एनी अदर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड? या आप नेट कैश फ्लोज निकाल सकते हैं? पक्का? कोई और एडजस्टमेंट? किसी को कुछ होगी तो भी नहीं करनी है? तो फिर अभी क्या आ गए? नेट कैश फ्लोज या एडजस्टेड कैश फ्लोज, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। यस, स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 हमें चाहिए नहीं, बिकॉज ने डिस्काउंटेड दे दिया 12% का। सीधा स्टेप 5 निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक्सेल फॉर्मूला है। क्या हुआ? ठीक है, लड़का मोटिवेटेड है, ऐसे मत बोलो उसको। 2169.18। यार बहुत ज्यादा आ रही है। हम्म। ओ नहीं नहीं, एक सेकंड। हाँ, मैं सोचू कुछ ज्यादा आ रही है अमाउंट। वो ARD वाला भी अमाउंट आ गया था इसलिए। ओके। रिजेक्ट। तो प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। बट अभी .3 है, अभी .3 है। Evaluate the preferred hedge choice, of course, the debt finance needed, and whether the Aeron project should be undertaken considering both financial and non-financial factors. Part A देखो, discuss how investing in overseas projects may enable Washiko to gain competitive advantage over its competitors who only invest in domestic projects. तो जो आपने यहाँ पे थ्योरी लिखी, जो आपने कैलकुलेशंस करी, all of that will now be used in B part 3. तो जो इतनी आपने मेहनत करी और डिसअपॉइंट हो रहे थे कि नेगेटिव एनपीवी आ रहा था, क्वेश्चन चाहता था नेगेटिव एनपीवी आए, तभी आप पार्ट 3 में अच्छे से 8 मार्क्स लाओगे। समझ में आया? शुड वी मूव टू पार्ट 3 और वी वांट अ ब्रेक फर्स्ट? है पॉइंट लिखो, तू पढ़ ले क्वेश्चन में आंसर, मैं भी लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, वही फ्लो इसलिए हो रहा था, कंटिन्यूएशन में कंप्लीट कर लेते तो बेटर है। मैं खत्म हो चुका हूँ, है ना? क्वेश्चन भी खत्म कर दो पुष्कर। चल जी। तो अब ये कैलकुलेशन जो थी, ये तो आपकी स्प्रेडशीट में आएंगी। अब जो बी पार्ट 3 है, वो कहाँ जाएगा? वर्ड डॉक्यूमेंट में। व्हाट इज द मेन आंसर? क्या कॉपी कर लेते हैं सारी? हाँ, कंक्लूजन। तो अब ये मेन आंसर, वर्ड डॉक्यूमेंट, करेक्ट। पार्ट बी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब B3 था। चलो जी, अपने 3-4 चीजें पूछनी है यहाँ पे। कुछ चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है ना? हाँ पे कॉपी कर लेंगे भाई, पेशेंस। और कुछ चीजें हमें आंसर करनी है। यस, अभी बताओ। जो, चलो आप ही लोग स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट विद द हेजिंग चॉइस फर्स्ट, फिर एडिशनल डेट पे आएंगे। हेजिंग चॉइस का कंक्लूजन ये था। हमने इंटरेस्ट रेट के लिए अभी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन करा, वेयर वी हैव इवैल्यूएटिंग द डिफरेंट हेजिंग चॉइसेस
right? Sorry. लिंक कर दिया था मैंने उसको ऊपर से। अच्छा कितनी थी? 9744 यही थी। ठीक है, देख लेते हैं कितनी थी। 9776 नहीं 32 का। चलो ये रहा, बताओ। आएगा, हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन किया है इंटरेस्ट रेट हेजिंग के लिए, वेयर वी आर कंपेयरिंग 3 टाइप ऑफ हेजिंग टेक्निक्स एंड हाउ टू अप्रोच दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आप लोग बताओ क्या लगता है आप लोगों को, व्हाट शुड वी स्टार्ट राइटिंग? सो यू विल स्टार्ट बाय गिविंग बैकग्राउंड टू फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कि भाई क्या होते हैं और उनके केस में क्या क्या आपको एंड रिजल्ट आ रहा है। दैट वाज अ 25 marker question. So the approach was a little more concise. For a 50 marker question, because you're writing a board of directors report, etc., you have to be a little more detailed. You will start by including a few more points around what forwards are, what futures are, what options are, and how these, what are the outcomes. तो थोड़ा सा एक दो लाइन लिखेंगे तीनों के बारे में, राइट? उसके बाद क्या करोगे नेक्स्ट? तीनों के रिजल्ट कंपेयर करोगे, राइट? तो उसके बाद कंक्लूजन क्या आना चाहिए? क्या इसमें डिफरेंट मूवमेंट्स कुछ एक्सपेक्टेड थे? नहीं थे, राइट? पीपल ऑनलाइन, आर यू फॉलोइंग? यस, इफ नॉट प्लीज बताना। सॉरी, वो तो लास्ट पॉइंट होगा ना, सीयू वाला, या इसके पहले? हाँ तो नेगेटिव ना, एग्जैक्टली नेगेटिव, राइट? इट्स नॉट सेइंग कि नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, वो तो नहीं बोल रहा ना। सो चलो पॉइंटर्स की बात कर रहे थे। तो वी स्टार्ट विद एन ओवरव्यू ऑफ ऑल 3 टेक्निक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? कंपेयर द रिजल्ट। कंक्लूड कैसे करोगे? नहीं, सो आपने यू मेंशन्ड कपल ऑफ लाइंस ऑन ईच 3 कि भाई फॉरवर्ड में क्या होता है, ओटीसी होता है, फिक्स कर लेते हो। फ्यूचर्स में क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेट्रा। ऑप्शन में यू गेट द ऑप्शन बट देयर इज एन अपफ्रंट प्रीमियम। फिनिश, स्टैंडर्ड 3 एक एक लाइन लिख दी। उसके बाद कंपेयर किया कि भाई तीनों में क्या क्या मिल रहा है। अब कंक्लूड कैसे करोगे? मतलब इसी को कंक्लूड करना है तो कैसे कंक्लूड करोगे? व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच यू शुड हाईलाइट? कि भाई फ्यूचर में यस मैथमेटिकली दिस इज गिविंग द बेस्ट आंसर, बट व्हाट अदर थिंग्स आर देयर फॉर फ्यूचर व्हिच यू शुड बी माइंडफुल ऑफ? इंटरेस्ट रेट के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मार्जिन, बेसिस रिस्क, assumptions, correct? भाई mathematically yes, futures is giving you the best answer, but in practice it is based on a few things. आपने मार्जिन कैलकुलेशन नहीं अज्यूम करी, आपने assumption लिया है कि भाई एक बेसिस जीरो हो जाता है, उस बेसिस के बेसिस पे आपने लॉक इन रेट निकाला है जिससे आपने कैलकुलेट करा है। तो अगर बेसिस रिस्क रहता है एंड दैट कैलकुलेशन इज रॉन्ग, देन is futures is a good option? No, that can actually then lead to a much higher amount. Whereas forward के केस में क्या है, प्रॉब्लम है नहीं है, बिकॉज फॉरवर्ड रेट आपको आज पता है, चाहे एक्सचेंज रेट कुछ भी फ्लक्चुएट हो, क्या फॉरवर्ड रेट चेंज होगा? नहीं, योर फॉरवर्ड रेट इज लॉक्ड इन। ऑफ कोर्स फॉरवर्ड के केस में प्रॉब्लम क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क। दैट इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर। सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे यू कांट जस्ट से फ्यूचर इज द बेस्ट। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस यस, you took futures as the base to say what is the additional amount of debt which you should take. But when you are now elaborating your answer, discussing your answer and workings, then you can't just say future is the best. Yes? So what are we saying? We're saying financially, futures is giving the best result. However, margin and M2M mark to market to be considered. Basis risk
to be considered. Currently assumed. वेरी गुड. आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो मनी मार्केट हेज से. मार्क टू मार्केट क्या होता है? वेरिएशन मार्जिन. देखो मेरी मिस्टेक है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ. मार्क टू मार्केट ब्रैकेट वेरिएशन मार्जिन. ठीक है भाई, पक्का. नहीं नहीं, प्लीज आस्क दीज क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. नो क्वेश्चन इज रॉन्ग, प्लीज डू कंटिन्यू टू आस्क. ठीक है जी. So currently assumed that basis is 0 on expiry, and accordingly the lock-in rate was computed to calculate result of the hedge. Correct? However, if the basis risk is there, then the result will be different. Clear? So forwards is giving a slightly lower result. Basis risk does not exist. However, counterparty risk is to be considered. In this case, question में ऐसा आपको बोल सकता है that Washiko has a lender, a regular lender. That lender is also providing forward rate contract to you. In that case, your counterparty risk is significantly reduced because it's your existing lender which is also providing a forward rate contract, forward contract. So be careful on what the question is saying and accordingly word your answer. ठीक है? ठीक है? उसका लास्ट क्या ऑप्शन बचा? Options give the lowest return, correct? But maximum flexibility to benefit if the exchange rate movement is favorable. In this case क्या होना चाहिए? That is, किसको appreciate करना चाहिए, यूरो या येन? Euro should appreciate. That is, if the euro appreciates against the yen. Correct? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ऑफ कोर्स मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, एग्जाम में हम उसको पूरा डिटेल और करेंगे थोड़ा सा. आई एम जस्ट गिविंग यू द की पॉइंटर्स हियर. बट इज द कंक्लूजन फॉर द हेजिंग चॉइसेस क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर पीपल, प्लीज? किसी को भी कोई डाउट? पीपल ऑनलाइन, एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर? हाँ चले. सेकेंड चीज क्या बोली थी उसने? डेट फाइनेंस नीडेड. To evaluate the preferred hedge choice made, the debt finance needed, and whether the rate should be undertaken considering both financial and non-financial factors. Debt finance में क्या क्या बोलेंगे हम? तो ये तो hedging choices थी. अब debt finance इसमें क्या क्या बोलोगे? आपको एक सेल यूरोपियन सब्सिडरी will be sold. You will get money in 6 months time. They are expecting 80 million. हो सकता है वो 80 से कम ज्यादा हो जाए. हो सकता है पार्टी में डिफॉल्ट but may not pay you 80 million upfront, etc., etc. So, is there some risk of that happening? Yes. Question is not giving us for certain कि 80 million मिलेगा ही मिलेगा. So you start by saying that कि भाई the debt finance needed is based on that 80 million euros. If you don't get that 80 million, then the debt finance needed will increase. So, firstly,
risk around receiving the entire euro 80 million sum and the corresponding time frame. क्योंकि 80 million मिलेगा पर आपको चाहिए 6 months बाद 12 months बाद, maybe you get it little later. That will be one factor, right? What are the other factors? Very good, very good. अभी कितना है? 1.5 या कितना? 1.2% था. 1.2% था. Can that change? Can also change. 6 months later है ना? You will be investing 6 months later. Can that rate change? Absolutely. So, risk benefit of a change in the JPY JP RF rate. ये था short dated treasury bills थे ना, correct? बढ़ गया तो आपके लिए बेटर है. Your requirement will be less, debt funding requirement, but अगर वो कम हो गया then the requirement will be more. Clear? इसको elaborate कर सकते हैं, एक पॉइंट इस पे लिख सकते हैं. और क्या है? और what are the factors are there? अभी हाँ उस पे आते हैं. हेजिंग के पहले कुछ करना है? 3 पॉइंट काफी है. ओके चलो आते हैं हेजिंग पे आते हैं. हेजिंग चॉइसेस ऑफ कोर्स मतलब as discussed above, फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है. The risks are there, right? Yeah, in this case, money market hedge can be considered. Should the company actually explore money market hedge? Because क्या होगा उससे? One, all the uncertainties around futures, forwards, options will be eliminated. Second, you will be locking in the 1.2% rate today because you will be investing for 1 year in at the government treasury rate. So is money market hedge an option? I'm not saying the preferred option, but is that something which the company should definitely consider? Yes. Vashiko should also consider the option of MMH as it will be able to lock in the JP RF rate today and eliminate the forex risk. Correct? The calculations would need to be done to ascertain if this is more beneficial than the hedging choices already considered above. Correct. So you can't say MMH कर लो best है. आपको बोलना पड़ेगा कि भाई MMH एक्सप्लोर कर सकते हो, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. And then you'll also have to compare the result of MMH with the hedging choices which you already made. Correct? तो ये तो आ गया फर्स्ट पॉइंट. अब आप देखो, अगर आपने देखा हो यहाँ पे डेट फाइनेंस नीड पे हमने 2-3 चीजें लिखी थी. हमने लिखा था व्हाट इज द टोटल फंड रिक्वायरमेंट. ये तो चलो ठीक है, तो गिवन है. इसके बाद हमने लिखा था कि यूरोपियन सब्सिडी से कितना मिलेगा, और उसके बाद हमने बोला था डेट फाइनेंस. तो अभी हम सिर्फ 10,122 वाले अमाउंट पे हैं. हमने बहुत सारे डिस्कशन इस पे कर लिया. अब हमें करना चाहिए जो आप डेट ले रहे हो उस पर क्या होगा फॉर कंप्लीटनेस. करेक्ट? बताओ भाई और क्या पॉइंट लिखने चाहिए यहाँ पे डेट फाइनेंस के बाद. व्हाट आर द पॉइंट्स? कि अगर एडिशनल ले दो तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा, हो सकता है 12% डिस्काउंट रेट चेंज हो सकता है. यस, हो सकता है. So the amount may be very small in the overall context, but can that have an impact? Possibly, right? So any additional
amount of debt can also impact the cost of capital, right? Which can have an impact on the NPV. Clear? Plus, of course, other problems with respect to debt. लिख सकते हैं सिक्योरिटी है, ये है, वो है, नहीं है, पता नहीं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है क्वेश्चन. और कोई पॉइंट लिखना चाहिए? ठीक है, चलो काफी है. ठीक है, आगे चल लेते हैं. लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला था, अदर कंसिडरेशंस associated with debt servicing etc. ठीक है जी, एक लाइन से लिख देंगे. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे. तो हमने अभी क्या क्या स्टार्ट डिस्कस किया? हेजिंग चॉइसेस में. फिर वी वेंट टू डेट फाइनेंस नीडेड, उसी कंसिडरेशन. अब क्या था? whether the Iran project should be accepted, undertaken, considering both financial and non-financial factors. फाइनेंशियल कर लेंगे. अच्छा, सॉरी क्या बोल रहा है? मतलब नहीं समझा ये वाला पॉइंट. क्या गिवन नहीं है? तो मैंने बोला the first part of the question, part A, will give you some food for thought to answer the B part 3, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आपने वहां पे थोड़े से लिखे होंगे. यस. तो अगेन, on financial grounds, no. On purely financial grounds, no, है ना? However, the other, हाँ वो तो भी लिखेंगे एक सेकंड पहले, बट पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? However, non financial factors should also be considered. करेक्ट. देखो, सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस लिखेंगे, बट आपका आंसर नेगेटिव आया, तो आप सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हो कि भाई पॉजिटिव तो आ रहा है, बट क्या कोई और रिस्क है? तो अभी तो पहले ही पता चल गया कि फाइनेंशियली रिस्क है. So we are saying quantitatively, yes, there is a risk. Qualitatively, are we able to think of something more? That's what we are talking about here. तो फिर क्या क्या हो सकता है पॉइंट? तभी मैंने बोला जो आपने आंसर लिया होगा ना पार्ट ए में, वो आपके पॉइंट्स यहाँ पे भी आएंगे. एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, जल्दी बताओ मुझे. डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट शेयर, और चीप रिसोर्सेस यहाँ पे आपको मिलेंगे. आपको मिलेंगे. एंट्री क्वेश्चन में कोई बोला था ना उसने कि दे आर नॉट प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट, कुछ बोला था क्वेश्चन में. कुछ ऐसा बोला था स्टार्टिंग में जब वो बहुत सारा ज्ञान दे रहा था हमें. It believes that the project will be an important addition to the company's portfolio of investments because Washiko does not currently have a significant presence in the part of the world where Iran is located. It is intended that the project will commence. ठीक है जी. So एक correct opportunity to invest and then expand in that part of the world. Entry into a new market and further expansion. Again इसको expand कर सकते हैं. Expansion of the words as well. Yes. और क्या? तो एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी हमने दिया जो बिजनेस एक्यूमेन, कमर्शियल एक्यूमेन की बात करते हैं. और क्या होता है? और क्या? ये एरॉन में भी तो एक्सपैंड कर सकते हो. रियल ऑप्शन याद है? ब्लैक स्कोल्स मॉडल, ऑप्शन टू एक्सपैंड, कि आपने एक कंट्री में इन्वेस्ट किया, उस कंट्री के साथ अपने अच्छे रिलेशंस डेवलप किए, उनको लगा कि यस दिस कंपनी इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, helping our growth. You can also expand more in Iran. So further expansion in that part of the world, further
expansion in Iran and partnering with government. Yes, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? अभी वो अनलिस्टेड कंपनी है, लिखा हुआ था. Can this help if they want to list in a different country? Possibly. You have a market presence. Can you also explore that? Yes. और क्या? और क्या? कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स पे हमें डिस्कशन करनी चाहिए. हाँ बिल्कुल. कोई रेजिडुअल वैल्यू दिया क्वेश्चन में? करेक्ट. आप देखो कितनी the amount of investment is significant. 10,150 ARD million. But is there a terminal value? सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिलीज हो रहा है. तो आपका प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. So should we write that as well as a question? Again, skepticism, holistic answer. Think of those points. और क्या क्या लिख सकते हैं जो कि relevant है and can impact the answer. Yash is saying, sir, हो गए 8 marks. दोस्त हो तो गए 8 marks, but the problem is you still need to write a couple of points for the project. This is important. Right? 4 years के बाद एक हो गया terminal value of the assets. But what about the period, perpetual growth, 2 years, 5 years, 2%, 5% क्या है? उसको चाहिए नहीं, कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन में. Right? So हाँ, कुछ भी नहीं पता ना, इंफॉर्मेशन नहीं है. So on NPV calculation, consider the possibility of residual value, terminal value, and continuation of the project beyond 4 years. No info in the question. Yes, these could be some of the points. And the last point, of course, as you talked about, assumptions. Again, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना, because specifically assumptions नहीं बोली, but completeness के लिए we should definitely write assumptions and estimates. जो हमारा point होता है हमेशा स्टैंडर्ड वाला, कि भाई आपके assumptions ठीक है नहीं है. अगर assumptions ही गलत है तो क्या पता आपका NPV ठीक आ जाएगा. आपने inflationary rate या tax rate जो लिया, जो assumptions ली, क्या पता वो गलत हो, and your NPV may be positive. So the impact may have a positive impact on the NPV. Clear? Very good, जी. Sir, validity of the cash flows को question नहीं करेंगे हम. We can question the validity of the cash flows. Absolutely. So, okay, two things. What Yash, you are saying is validity of the cash flows. So, I don't want to question the validity because if you read, उसने बोला था कहीं पे, the estimates have been checked and verified independently for numerical accuracy. So, I don't want to question the validity of the cash flows. What I want to question is this point around the assumption and estimates. So not the calculation, but the fundamentals. Perfect. Good point. ठीक है जी? पक्का? Good. ब्रेक ले. So that concludes the second batch of chapters. Chapters 8 to 11. What we are left with? Chapters 12, 13, 14. M&A, valuation and restructuring. और अरे सॉरी, अभी तक फॉरेक्स स्वैप्स और करेंसी स्वैप्स भी तो बचे. हाँ ये छोटे से हैं बट कंप्लीट तो करेंगे. Forex swaps and currency swaps. Two common. Last two techniques for forex. क्या होता है इसमें important? So forex swaps क्या होता है पहले? Let's start with that. In simple terms, what do the parties agree? They agree today we will swap an amount. They agree the period for which that swap will work, and they will also agree the rate at which they will swap back that amount. Simple terms में, you are swapping that amount today, agreeing for how long, agreeing the rate at which you will swap it back.
On that date, you swap back the amount. That means what? Since you agreed the rate today, you agreed the time period today. For that time period, is there any forex fluctuation which will impact you? Answer is no, because you agreed the rate today, you agreed the period today, you're swapping the amount today and swapping it back at the end of the tenure, right? Therefore, it's also called fixed rate swap because आपने पूरा rate सारा fixed कर लिया and then you are swapping it back. It's very similar to forwards. The only difference is you are swapping the amount today as well as re-swapping it at the end of the period which you agreed. And where is it used typically? It is used where the forward market is not giving you an option. So for example, the forward market is only giving you a rate for 1 year. You want a rate for beyond 1 year. There you can use forex swaps. Second, where the currency in which you want to borrow or in which you want to deposit is not directly available. So again, using forex swap, you can enter into a hedging transaction for your borrowing or a deposit case. Yeah. So that was forex swap. Let's move to currency swap. Currency swap is very interesting. It's a mix of forex swap and the interest rate swap, which we had discussed. Interest rate swap में क्या होता है? Only the interest is swap. Only the interest is swap. You don't swap the principal. Currency swap में क्या होता है? You also swap the principal. So first you swap the principal like the forex swap. So आपने forex principal swap किया, you agree for how many years and you agree the rate. It's a forex swap for just the principals. And then you also swap during that time, you also exchange the interest rates. Similar to what you were doing for interest rate swap. So यहाँ पे भी you can make fixed for fixed. That means you are paying 5, you're getting 5 fixed for fixed, or it can be fixed for variable. It means you're paying fixed for variable, and therefore you're changing your fixed rate to a variable rate. So two components. One is the exchange of principals, which will be like forex swap. Second, exchange of interest rates, which will be like the interest rate swaps we discussed earlier. That is what currency swap is. Any questions? Anything which is clear? Not clear. People online? Anything which is not clear? तो जब इसको एग्जाम में करेंगे तो वो सिर्फ गेन वगैरह दिखाना है या सारी ट्रांजैक्शन दिखाना है कि हम बैंक को भी वापस देंगे? In the exam, when this question comes, you have to show all the steps. You have to show the exchange of principal, you have to show the exchange of interests. The way you show for interest rate swap, you start with the actual borrowing, then you show the swap, then you show the net effective cost. Yeah, maybe you have to start with the actual borrowing. You need to show the principal swap. You need to show the interest rate swap. Sir, time allows, can we take an example? So, time to is not allowing anything, but we can definitely take a quick example. That's not a problem. किसका लेना है? Forex swap का या currency swap का? Currency swap का ले लेते हैं तो forex swap भी आ जाएगा. Yeah. हाँ, वही example ले लेता हूँ छोड़ा. Basic example है. Let me just open the book. Sorry? पता है. मैं कह रहा हूँ उसी का एग्जाम्पल दिखा देता है. Yeah, just opening the book. 1 second. First, currency swap. P-value 7. पढ़ लो फटाफट सॉल्व कर लेते इसको. पढ़ लिया? क्या हो रहा है? Wine is a Japanese firm looking to expand in the USA.
and looking to raise 20 million at a variable interest rate. It has been quoted the following rates: SOFR plus 60 basis points and yen में 1.2%. McGregor is an American company looking to refinance a 2.24 million yen loan at a fixed rate. It can borrow at the following rates: SOFR plus 50 basis points. क्या बोलते हैं next? The current spot rate is $1 is yen 120. Required: show how the fixed for variable currency swap would work in the circumstances described, assuming the swap is only for 1 year and that interest is paid at the end of 1 year. So currency swap निकालना है आपको, and you have the rates, respective rates which have been given to you, right? Excel खोल दो, easier. मैं कह रहा हूँ Excel खोल दो. चैप्टर 10 था ना? ये वाला चाहिए तो ब्रिलियंट आइडिया है राइट. क्या हो रहा है? पहले क्वेश्चन देखते हैं. वाइट एंड मैग्रेगर प्रेफरेंस क्या है? Wine is looking to raise 20 million at a variable rate. McGregor is looking to refinance loan at a fixed rate. Right? तो wine का है variable, McGregor का है fixed. Amounts कितने raise करने हैं? 20 million dollars for wine, 2400 million yen for McGregor. बैंक क्या बोल रहा है? बैंक बोल रहा है अगर आप डॉलर में रेस करोगे तो मैं रेट दूंगा SOFR plus 0.6. अगर आप येन में रेस करोगे तो मैं दूंगा 1.2. मैक्रेकर को क्या बोल रहा है? डॉलर्स में रेस करोगे तो SOFR plus 0.5, येन में रेस करोगे तो 1.5. Now logically if you see, why is Japanese, so it is getting a better rate for yen as compared to McGregor. McGregor is US, so it's getting a better rate for dollar as compared to wine, which is logical. Spot rate क्या है? $1 is equal to yen 120. वापस आते हैं क्वेश्चन पे. Show how the fixed for variable currency swap fixed for variable would work in the circumstances described, assuming that the swap is only for 1 year and the interest is paid at the end of the year. There are two transactions for currency swap. One is exchange of principals. The second is exchange of interest. Exchange of principal will work like a forex swap. That means you will exchange the principal today and re-swap it at the end of the period you agree at the fixed rate which you will agree. Second is the exchange of interest. अब logically सोचो यहाँ पे which company should borrow loan at which rate? Wine is getting the best rate in yen, obviously. So wine should borrow yen. McGregor is getting the best rate in dollars, so McGregor should borrow in dollars, and then they should swap. So borrow for bank. जो हमने एग्री किया, वाइट को क्या चाहिए था? $20 million. क्या बोरो करेगा? 2400 million yen at the spot rate of $1 is 120. Will this convert into $20 million? Yes. Same way, McGregor को क्या चाहिए था? $20 million. वो क्या बोरो करेगा? 2400 million yen. वो क्या बोरो करेगा? $20 million. Exchange rate पे will they get the same amounts? Yes. First step, exchange principal. What will Wine pay? What will Wine pay? Wine will pay 2400 million to McGregor, and McGregor will pay $20 million. क्या रिसीव हुआ? $20 million. यहाँ पर 2400 million yen. फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ सबको? एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल. अब इंटरेस्ट टू बैंक कितना दोगे? जो आपने ओरिजिनल बोरो किया था उसी पे दोगे इंटरेस्ट टू बैंक. तो वाइन के केस में आप दोगे येन में 1.2%, मैक्ग्रेगर के केस में डॉलर्स पे SOFR plus 0.5%.
but you have to swap the interest. So whatever you've paid to the bank, you will get it from the other party because you are swapping the interest along with the principal. So you got $20 million pay SOFR plus 0.5% from McGregoring, sorry, from buying to McGregoring, and 2400 million pay at 1.2% from McGregoring to buying. So swapping of interest complementing the swapping of principal. क्योंकि लॉजिकली आपने बैंक से येन में लिया, यू पेड इंटरेस्ट टू बैंक, बट आपने ये मग्रेगरिंग को ट्रांसफर भी तो कर दिया, सो मग्रेगरिंग शुड नाउ पे यू द येन एब्सोल्युटली. सो इफ यू सी दीस थ्री, आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है डॉलर्स पे, और मग्रेगरिंग की नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है येन पे, विच वाज द प्रेफर्ड करेंसी, प्रेफर्ड लोन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. उसके बाद क्या करोगे लास्ट में, swap back principals, same amounts, like a forex swap, you will swap back. पैसे वापस आ गए, आपने रीपे कर दिया बैंक को, ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ हो गई. एंड रिजल्ट क्या हुआ, मग्रेगरिंग ने येन में इंटरेस्ट दिया, वाइंक ने डॉलर्स में इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल जो था वो पूरा स्क्वायर ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स स्वैप. सो योर 2 steps आर कंक्लूडेड. कितनी सेविंग हुई अगर स्वैप नहीं करते एंड दे वुड हैव बोरोड एट देयर प्रेफर्ड करेंसी. तो ये डॉलर में बोरो करता है एस प्लस 0.6% पे, ये येन में बोरो करता है 1.5%. आपने कितने में बोरो करा विद स्वैप, इसका इंटरेस्ट रेट आया एसएफआर प्लस 0.5%, इसका इंटरेस्ट रेट आया 1.2% फिक्स्ड. कितनी सेविंग्स हो गई, $0.02 million फॉर वाइन, 7.2 million yen for McGregor. This is what a currency swap is. अब ये पढ़ो, hopefully समझ में आएगा. Yash, please tell me if this was not clear or this answers your question. Others, please tell me if there are any questions, anything which is not clear. In the class, anyone? Any doubts? आगे चले. Okay, should we move on to the last batch of chapters, which is 12 to 14? Concepts and questions. कितना एक्सटेंड करना है आज, क्या प्लान है सर? ये और कोई क्वेश्चन करना है इनका, इंटरेस्ट या सॉल्व्स का? इंटरेस्ट और स्वैप्स को और कोई क्वेश्चन नहीं करना. एमएनए वैल्यूएशन रिकंस्ट्रक्शन के 2 क्वेश्चंस करने हैं, एक एमएनए प्लस वैल्यूएशन, एक रिकंस्ट्रक्शन प्लस वैल्यूएशन. क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कल करा रहे हैं सारा एक साथ. कल नहीं करा, कल क्लास. उससे भी एक्स्ट्रा. तभी मैं पूछ रहा हूँ आज कितना एक्सटेंड करना है. कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं सारे तीनों चैप्टर्स के. आज पूरा शिफ्ट करा रहा हूं. क्वेश्चंस प्रैक्टिस. How much time? If you're expecting all the concepts to be done in 1 hour, that won't happen. कितना You're talking about 3 chapters. प्रोजेक्ट करा के क्वेश्चन करा. वो भी नहीं हो. कितना टाइम है दोस्त, क्या कराना है मैं डिसाइड करूंगा. टाइम बताओ. सर तीनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट कराने में कितना टाइम लगेगा अच्छे से? 3 घंटे. सो तो यही है, मैं जो चैप्टर क्लास में क्वेश्चन कर रहे. आज कब तक क्लास क्लोज करनी है, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर. सर आप पेपर 6 का क्लास करते हो तो चलो, so what we'll do is, time is 4:15. We'll spend 1 more hour. We'll take a call after that. ठीक है? Of course, we are not finishing today, so we'll probably have another class. But let's see. ठीक है, let's start. मैंने start करता है. चलो, मैंने वर्जन एक्विजिशन 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. होपफुली सबको याद है, सबको पता है, बट कोई क्वेश्चन होगा तो बताओ. लेट्स स्टार्ट विद बेसिक एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. क्या होता है, कंपनी टारगेट कंपनी है, उसके शेयर होल्डर है,
There is another company, acquirer company, which is wanted to acquire the shares of the target. Right? क्या बोलेगी वो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि यार आप मुझे अपने जो आप शेयर्स ओन करते हो टारगेट में प्लीज सेल मी दो शेयर्स आई विल गिव यू सम कंसिडरेशन हु इज पेइंग द कंसिडरेशन द acquiring company who is getting the consideration the shareholders of the target company whose shares are being transferred the target company right there are two ways on of how the consideration can be discharged by the acquirer company one is simple cash. It says you will transfer shares to me. I will pay you consideration in cash. Easy. Second is you transfer shares to a target company to me. That means the acquired company. I will issue my own shares to you. मतलब सब कुछ सेम है. Existing shareholders will transfer the shares of the target company to the acquired company, but instead of acquired company paying cash to the existing shareholders, the acquired company will issue its own shares. So that means the existing shareholders of the target company will also become shareholders of the acquirer company. क्या ये समझ में आया? Acquisition, consideration in the form of shares, consideration in the form of cash. People online, is this clear? आगे चले? Okay, very good. So now let's move on to acquisition by way of acquisition of business. अभी अगर शेयर ट्रांसफर होता है तो कैसे होता है सिमिलरली अगर बिजनेस ट्रांसफर होता है तो कैसे होता है कंपनी ये है उसके टू डिविजन है एक आइडेंटिफाइड डिवीजन जो ट्रांसफर करना है और एक अदर डिविजन है कंपनी बी सेज आई वांट टू एक्वायर वन डिवीजन फ्रॉम यू दैट मींस क्या यहाँ पे शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं नहीं क्या बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा कंपनी ए विल ट्रांसफर द बिजनेस आइडेंटिफाइड बिजनेस या division to company B. Company B will pay consideration to company A. या इसमें शेयर हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं सिमिलरली कैश भी हो सकता है शेयर्स भी हो सकते हैं अगर कैश होएगा तो कंपनी ए विल कंटिन्यू टू होल्ड वन डिवीजन कंपनी बी विल होल्ड द अदर डिवीजन दोनों के शेयर होल्डर्स अलग होंगे अगर कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है तो कंपनी बी विल आल्सो हैव शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ए एज shareholders along with shareholders of company B. So very simple depiction of transfer of business, acquisition of business. Clear? Mergers क्या होते हैं? Company A, company B. They say let's merge and form a company. क्या इस केस में acquirer company और target company अलग अलग थे? Yes. Post transfer, were they continuing as two separate companies? Yes. क्या इस केस में कंपनी ए कंपनी बी अलग अलग थे? Yes. Post transfer of business, were they operating as two separate companies? Yes. Difference in the merger. Company A, company B, they will merge and operate as a single company. Shareholders of company A and company B will also become shareholders of the merged entity. Pre the merger, there were two companies with two separate set of shareholders. Post merger, there is one company. That company has both shareholders, the company A and company B as shareholders. Any confusions, any doubts? From an examination standpoint, it doesn't matter whether it's acquisition by way of shares, acquisition by way of merger, etc. आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा. What will matter is what are the terms of the acquisition. When we do the question, you'll understand what I'm saying. Okay? How do you compute some of those requirements? यहाँ तक किसी को कोई डाउट पक्का आगे चल सकते हैं. People online, should we move on? Hopefully, no question, but if there are any, ask. So, mode of considerations, I think we've discussed. Cash हो सकता है, where the acquirer company is just paying cash. Correct? What are some of the considerations? Again, important point from an examination perspective because you would be asked to comment
on what are the pros or advantages, disadvantages of cash consideration, share consideration, and sometimes it can be a mixed offer where the acquirer company is paying some cash and some shares. So, what are some of the advantages, disadvantages? In simple terms, what are some of the considerations associated with this? The cash engagement, of course, if it's a smaller amount of cash which is required, it's easier to pay cash, easier for the acquirer company to uh, raise that amount of cash. But if it's a very, very high value acquisition, then raising cash can also be a challenge. Yes? Makes sense? What else? As I said, availability of cash with the acquirer. अगर acquirer के पास cash ही नहीं है तो कैसे करेगा? लोन लेना पड़ेगा उसको, क्या लोन मिलेगा, अगेन किस टर्म्स पे लोन मिलेगा, so on and so forth. That's another consideration. जो टारगेट कंपनी है, राइट, इफ यू आर द टारगेट शेयर होल्डर, कैश पेमेंट के बाद लिक्विडिटी क्रंच, एब्सोल्युटली लिक्विडिटी क्रंच फॉर द acquirer company, definitely yes. Now if you think from the target company shareholder जिसको consideration मिल रही है, if that shareholder receives cash, is that more certain? The shareholder, will the position for the shareholder be more certain कि भाई आज 100 की वैल्यू थी, मुझे 100 का कैश मिल गया. अब आप किस भी तरीके से कंपनी को रन करते हो, आई डोंट केयर. Better certainty for the shareholder. At the same time, better liquidity for the shareholder. कि भाई I have gotten cash, it is liquid, I can use the cash for whatever purpose I want. Yes, important. Disadvantage, क्या शेयरहोल्डर को कंट्रोल मिलता है या स्टेक मिलता है इन द कंबाइंड कंपनी? नो, because it has transferred the shares and received cash, so now it's not left with any shares. So जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला स्ट्रक्चर था, when acquired company, if it is getting cash, very good. Sorry, if it is getting shares, fine, but if not getting shares, just getting cash to existing shareholders, so it will be left with just cash. Target company and acquiring company will be together, held by the acquiring company shareholders. So, one disadvantage of cash consideration is that the existing shareholders of the target company no longer hold any stake in the combined company. वही अगर shares में चलते हैं तो जो target company के existing shareholders हैं, they will be owning some shares in the acquiring company. So that's one disadvantage of cash consideration. One additional point which is to be kept in mind is some countries have different treatment when cash is being paid on acquisition and when shares are being issued on acquisition. Some countries may provide benefit, tax benefit, if it is a share for share exchange. But if it's a share for cash, then that may be taxable in the hands of the shareholder. So that's one additional consideration, which again you should be mindful of when you're writing an exam question talking about different modes of consideration. Okay, so that is cash. And along with that, we've also discussed the considerations for share per share. If share per share होगा, there will be no liquidity for the target company shareholders को कुछ cash नहीं मिलेगा. But at the same time, they will have a potential to gain from any upside in the value. Combined company की value बढ़ जाती है. Target company के shareholders, they'll be owning shares in the acquiring company. Their value can also increase, so on and so forth. Correct? At the same time, if there is a loss, that's a downside. But as an equity shareholder, you know what are the pros and cons of owning equity shares. Higher the risk, higher the reward. Yes, in a liquidation, you don't get anything. But if the company is doing fantastically well, the value of your company, your shares will also increase significantly. So, those are the points which to be kept in mind. ठीक है? Earnout क्या होता है? Earnout is sometimes there is a deferred consideration. So the acquiring company says, I will pay you X amount today, either in the form of shares or in the form of cash. And then if the company is doing well for 2 years, 1 year, whatever they agree, then I will pay you some additional consideration. So earnout means there is some part which is deferred and is linked to the future performance of the target company. So that is an earnout payment mechanism. Very nice. Last point, if you want to pay a cash consideration and you don't have money, then I said you have to raise money. Of course, you can take debt. Right? Right? से जा सकते हो आप. You go to your existing shareholders.
and say, can you please invest more? I want to buy this company. Or you go for a co-investment. That means you go for a private placement to a third-party investor to say, can you please invest? I want to make this acquisition. That's also a possibility. Yeah. आगे चलते हैं. Very important point, synergies. Again, a very common theme for M&A questions to talk about synergies. Synergies क्या होती हैं? कोई simple term में मुझे बताना चाहेगा? What do we mean by synergies? एक और एक 11 वाह, एक और एक 11 एग्जाम में ये लिखेंगे हम एनर्जी है तो वो आपको कितने मार्क्स देगा? 1 - 1 0. Anyone in simple terms? Additional equity value generated, yeah? Yes, Radisha? Correct? So, in synergy, what is the simple meaning of synergies? That when two companies are combined, then the sum of parts, the combined value is more than the value of sum of parts. Which is very rightly put. Absolutely. So what are we saying? We are saying value of company A is 100, value of company B is 150. अगर mathematically इनको add करेंगे तो कितना होता है? 250. But because of certain synergies which are being generated because of the acquisition, the combined value of the company is not 250, but let's say 275. That is what synergies are. So मेरे example में 275 minus 250, वो जो 25 की additional value generate हुई, that is what synergies are. Now, what is the reason for synergies? Because there could be various reasons, but broadly classifying them into revenue, cost, and financial synergies. क्या होंगी? Let's quickly discuss. So, for example, two companies which are in similar line of business, they combine. Will they be better able to manage the prices, control the prices because they have a majority position in the market? Yes, definitely better control of the prices. One thing to note here is the role of competition commission or competition authorities in the respective countries. They will ensure no such acquisition or merger takes place, which leads to a negative impact on the prices. So Indian context में अगर आप देखोगे telecom sector, highly concentrated, only 3 big players. Let's say tomorrow, Airtel and Vodafone Idea, they want to merge. Will the Competition Commission allow? May not. They may say, will this lead to an adverse impact on the pricing? Will this lead to a monopolistic situation in the country? So that's one point which needs to be kept in mind, but definitely you may have a better position if you are able to overcome the competition hurdle. Second, again, vertical merger or acquisition. A manufacturer is acquiring its supplier. Will you have better control over the process? You are reducing the costs, right? For example, we are the Pepsi and bottler, Varun Beverages, for example. Now, if the bottler is acquired by the cola company, will they have savings on the cost? Absolutely. Will they have better control over the processes? Yes. So that's, vertical integration. Combining complementary resources. So again, you are having a marketing team, let's say in US, another company is having marketing team in the US. By combining, can you better complement those resources, the marketing team in the overseas countries? Absolutely. So those kind of things, again, leading to a positive impact on the revenue. Then cost, very simple. If you are getting into that kind of a dominant position, can you negotiate better terms with your suppliers? Yes. Can you better utilize spare capacity? Yes. One company has spare capacity. The other company has orders which is not able to fulfill because of lack of capacity. Both companies merge. You are able to better utilize your spare capacity. Right? और क्या हो सकता है? Duplicative admin functions. दो CFOs नहीं चाहिए आपको, आपने merge कर लिया, एक ही कंपनी, एक ही CFO चाहिए. Tax team छोटी चाहिए, finance team छोटी चाहिए. Again, wherever you feel there is duplicate admin function, you can remove those, streamline those. Yes, marketing, common distribution बात करी थी. Similarly, financial synergies क्या हो सकती है? कि भाई elimination of inefficiencies, कि आपको लग रहा है कि आपके कोई जो processes हैं, those are inefficient.
can you merge and get in those efficiencies? हमने कल एक क्वेश्चन किया था about post completion audits. One company is doing that, the other company is not doing that. You have the expertise in your company. Can you now merge and streamline the process? Absolutely. एक कंपनी में टैक्स लॉसेस है, दूसरी में टैक्स लॉसेस नहीं है, प्रॉफिट्स है, मर्ज करके क्या ओवरऑल टैक्स पोजीशन बेटर हो सकती है? पॉसिबल. One has surplus cash, the other one is in the need of cash. Can you merge and can you combine and utilize the cash within the group? Yes. Risk diversification, so on and so forth. So these are some of the examples of synergies. Again, as I said, important point, not only from a calculation standpoint, but also from a theory discussion perspective. We will see questions around synergies, why, what, to the facts of the given case. ठीक है जी, is that clear? आगे चले, थोड़े एग्जांपल्स देखने हैं, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखे? तो ये 25 मार्क वाला क्वेश्चन है जो मुझे रन थ्रू करना है. जैसे कल हमने 50 मार्क वाला क्वेश्चन रन थ्रू किया था, आज एक 25 वाला रन थ्रू करेंगे. अक्षय को March, June 23. Let's read the question, then we'll discuss it and then solve it. We'll run through it. We'll not solve this question. We'll discuss this question. पढ़ेंगे. Let's all read this question and we'll chat about it. Again, we'll go slow like yesterday and we'll discuss each and every point, how to word, how to discuss, how to approach a 25 marker question. ऐसे एक काम करते हैं, रुक जाओ. Let's not do this right now. इसमें एक दो business valuation के भी points. So let's first complete the business valuation chapter, then we'll come back because then it will be a little bit of duplication. And right now, I don't think we have extra time. So let's first complete some of the business valuation concepts, then we'll come back to this question. ठीक है? अच्छा, एक important point again, hostile takeovers. क्या होता है? Company A wants to acquire company B, but company B does not want to be acquired. Company A क्या बोल रहा है? I want to acquire company B. उसके शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दे देता है, पर कंपनी भी बोलते हैं नहीं नहीं वेट, आई डोंट वांट यू टू अक्वायर. Read about it. There are multiple case studies. Initially, when Elon Musk wanted to acquire Twitter, that was also a hostile takeover situation. Then eventually, both the parties agreed to collaborative approach towards starting with. It was more a hostile takeover situation from Elon Musk to Twitter. अभी भी read about Paramount, read about Warner Brothers Discovery, or read about Netflix, where again there is a discussion around hostile takeover and how they are wanting to come to a more mutual understanding. Okay, so let's understand क्या है हमारा कोर्स में क्या important part है. Course में important part is what are some of the defenses which are available to the target company against a hostile takeover situation. So, for example, the acquisition of shares. Let's say the acquirer company wants to acquire the target company. But the target company feels acquirer company is not the right acquirer. We don't want to sell or we don't want to be acquired by the acquirer company. So what are some of the defenses which are available to the target company? That is what we'll see. So what are some of the defenses which are available? So some of the defenses which are available is एक हो गया pre-bid, मतलब जब acquirer company ने bid ही नहीं करा है target company, but there are rumors and news floating in the market that the acquiring company may bid for the target. So pre-bid. What are the defenses? So effective communication with shareholders. मतलब क्या है कि भाई the target company continues to engage with the shareholders. They tell them कि भाई this is the real value of your company. This is what we are doing. This is how we can grow, etc. So therefore, if someone approaches them for an acquisition, they can reject the offer. So पहले you have a
more effective way of communicating with the shareholders. Second, revalue non-current assets. मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी जो बुक्स में assets हैं, especially real estate, property, etc., which are on historical basis. So the real value of those assets is not being reflected in your books. You revalue those assets. Revalue करोगे तो क्या होगा? Your book value will show the real value of the assets. So the shareholders can again make a more informed decision कि भाई जो मुझे ऑफर हो रहा है first acquirer say price, is that the right price? Or I feel, no, this company is valued much better, so I should reject that. Correct? Poison pill. Poison pill क्या होता है? When company decreases share price. Correct. So poison pill is where the company says, if someone wants to acquire me and I don't want the company, I don't want the company to be acquired, तो बोर्ड क्या करता है? बोर्ड बोलता है कि हम we will adopt a strategy called poison pill. That means we will issue shares to the existing shareholders at a discount So that the overall share price reduces. Now logically सोचो, अगर आपकी कंपनी की वैल्यू रियल वैल्यू 10 है, ठीक है, आपने अपनी शेयर की वैल्यू कम कर दी, will that become less attractive? Will that raise question marks कि भाई अरे क्वेश्चन कंपनी की वैल्यू 10 है, why are you issuing shares at 5 rupees, 6 rupees, 4 rupees and diluting the overall value? So that's a poison pill where you deliberately decrease the share price of your company. Real life में क्या होता है? Every company is wanting to increase the share price. They are trying very hard कि share price बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे. That is how your company becomes more valuable in the market for the analysts, for the investors, etc., etc. But if deliberately you do something to reduce the share price, will that send a wrong signal to the market? Absolutely. And that is why it's called poison pill. And that is one of the strategies which was adopted by the Twitter board when it was being acquired by Elon Musk initially. Where they said कि अगर if Musk attempts to buy at least 15% shares in the open market, right, then we will trigger the poison pill. And that means other shareholders, excluding Musk, would be granted what? A right to purchase additional shares at a discounted price, diluting the overall value of Twitter stock. So that is what is poison pill. Clear? Next, change the articles of association. मतलब क्या हुआ कि भाई आप articles of association में एक provision डाल दो कि if the company is forcefully acquired without the consent of the board, etc., etc., then you can take further action to reject it or you have a say on it, etc. So you basically give more rights to the company itself and protect itself from being acquired. So again, क्योंकि ये सब आप पहले कर रहे हो, you are anticipating an offer, and therefore you're trying to build the defenses. Last, golden parachute. Again, like poison pill, you take some steps today. What do? You include in your contract with some of your key management personnel that if the company is acquired, then you will be paid a substantial sum. Now, what happens then? आपने कंपनी पे एक liability create कर दी, which will be triggered on happening of certain events. And what are those certain events? The company being additionally acquired. So अगर आप acquire करना चाहते हो इस company को, and suddenly this company has a 5 million, 10 million, 20 million additional liability which you have not factored in, would you want to acquire? Maybe not. But that is called golden parachute. That you increase, you put a clause that some of the key management people, personnel in the company, will get additional compensation if the company is acquired, if there's a minimum threshold, etc., which is breached. So these are some of the pre-bid defenses. Post-bid defenses क्या होते हैं? When offer has been made to the shareholders कि भाई we want to acquire your shares at this price. First, similar to the effective communication with the shareholders, आप अपील करो अपने shareholders को कि भाई don't accept this offer because of these reasons. This is not a good offer to be accepted. We believe this acquirer may not be doing good to the company, etc., etc., malified intentions, wrong valuation, etc. So that is appeal to own shareholders. Next क्या है? Attack the bidder. मतलब क्या है? आप publicly start attacking the bidder.
कि भाई नहीं, the bidder is fraud, this that. Third, white knight means you go to another acquirer. You says, I am being acquired by company X. I don't want company X to acquire me. Can you please acquire? Again, read about the Paramount, Warner Brothers, and Netflix deal. You'll understand some of these terms in practical sense. Next, counterbid. आप मुझे acquire करना चाहते हो? I will acquire you. So the target company says, instead of you being, me being acquired by you, I will acquire you. So you make a counter offer to the shareholders of the acquiring company. Right? And last is, तुम खुद ही चले जाओ competition authorities के पास कि भाई ये तो this is adverse to the competition. If I am being acquired, then that will lead to a monopolistic position, etc., etc. So please, you stop this acquisition. So these are some of the defenses against hostile takeover. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को भी? पक्का? पीपल ऑनलाइन, एनीथिंग इज नॉट हियर? अगर एक कंपनी के ओनर ने दूसरी कंपनी खरीदी तो वो एक जैसे ये कंपनी के ओनर ने दूसरी कंपनी खरीद ली, वो एक्विजिशन है? हाँ, मतलब one company shareholders is buying another company, that's what you're saying. हाँ, एक्विजिशन है, क्यों नहीं है? शेयर्स खरीद रहे हो आप। समझा नहीं? क्वेश्चन नहीं समझा दोस्तों से बता। जैसे वो जिसने मेरी कंपनी खरीदी, हाँ, तो एक्विजिशन क्यों नहीं है? मतलब still not clear. If a shareholder buys another company, शेयरहोल्डर एक कंपनी का होता है, मतलब shareholder ही तो हुआ। हाँ मतलब सर वो क्या है, कंपनी का सोल होना है। तो जैसे हमारे किसी कंपनी के 50% शेयर खरीद दिए, हाँ, पर अपनी कंपनी में ना मर्ज करी ना कुछ करी, उसने पर्सनली बस शेयर्स खरीद के रख लिया ऐसे शेयर्स खरीद लिए फॉर कैश। अपनी मर्जी से अपने। You are buying shares for cash. So why isn't that an acquisition here? Acquisition is acquisition of shares या acquisition of business. कोई भी खरीद रहा है तो acquisition है। क्वेश्चन आप एक शेयर भी खरीदोगे तो भी acquisition of one share है। आपने 100% शेयर्स खरीद लिए तो acquisition of the entire company हो गई। तो आपने 25% स्टेक खरीदा तो acquisition of 25% stake in that company. So I'm still not clear with the question. तो उसका क्वेश्चन ये था कि if I am a majority shareholder of a company, say for example एक चाह तो उसको समझाने दे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है तो भाई तेरा क्वेश्चन तेरे को समझाना पड़ेगा। ये बता तो आंसर नहीं बता भाई तेरे को बताना तो क्या है। गाइस सीरियस, आगे चले, क्या क्वेश्चन है? ठीक है, एनीथिंग एल्स? सी, एक्विजिशन का मतलब क्या है? हाँ, एक्विजिशन और शेयर्स की बात कर रहे हैं ना। So even one share is acquisition of shares. What we are talking about here right now is majority acquisition. ये कंपनी ए ने 100% खरीद लिया कंपनी बी को। अब वो कंपनी ने खरीदा, इंडिविजुअल ने खरीदा, क्या फर्क पड़ा है? अब इलॉन मस्क फॉर एग्जांपल अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्विटर के 100% शेयर्स एक्वायर कर लेगा तो क्या वो एक्विजिशन नहीं है? वो भी एक्विजिशन है। टेस्ला जो इलॉन मस्क की एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसने 100% शेयर एक्वायर कर लिया ट्विटर के, क्या वो एक्विजिशन है? एक्विजिशन है। बट फर्स्ट केस में तो इलॉन मस्क के नेम पे है और उसके नेम पे आएगा तो एक्विजिशन क्यों नहीं है? उसने एक्वायर कर ली, जो वही कंपनी एक्वायर करे, कोई इंसान भी एक्वायर कर सकता है। मतलब वर्ड एक्वायर थोड़ी बोलो तो और क्या बोलोगे आप? एक टेस्ला एक्वायर में एक्वायर ये एक एक करके बोलोगे सब लोग? इतने सारे क्वेश्चंस बोल रहे हैं एक साथ। एक होता है कि इलॉन मस्क हिमसेल्फ एक्वायर्ड द शेयर्स, तो वो अंडर उसके नेम आ जाएगा। एक होता है कि टेस्ला एक्वायर्ड ट्विटर एक्विजिशन, तो सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्वायर कर लिया इलॉन मस्क ने, तो वो कह रहे हैं तो फर्क क्या है? मतलब आई एम नॉट क्लियर विद द डिफरेंस। नेम अंडर। तो क्या फर्क हुआ? सो अगेन, what is the point which you are trying to make? How is that different? The structure is different, but what from a discussion standpoint, what is the concern? पहला बार में तो ओनरशिप टाइप कंपनी खरीदी थी,
अच्छा दूसरा वाला नहीं ऐसा नहीं होता. सर वो कंपनी खरीदने को रेफर जिसको तो अलग अलग बातें Same thing. समझ रहा है एक हाँ और ये You are differentiating between who is acquiring the company. It does not matter whether an individual acquires the company कंपनी or a company acquires the company. Both are acquisition. पेशवर को तुम्हारा नाम लेके तुम्हारी कंपनी का नाम लेके क्या था The shareholder of the target company is changing. Clear? How is that different conceptually? It is not. Both are still acquisition of 100% shares. एक केस में आपका इंडिविजुअल बन जाता है शेयर होल्डर, एक केस में आपका कंपनी बन जाते हैं शेयर होल्डर. तो दोनों केस में आपके 100% शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी आर बीइंग ट्रांसफर्ड. सो सेम थिंग चीज थोड़ी है. अगर टेस्ला एक्वायर करते हो तो टेस्ला का अंडर होगा. दोस्त हाँ वो ठीक है, नाम शेयर होल्डर का नाम डिफरेंट होगा, बट डिफरेंस ट्रांजैक्शन तो सेम ही है. सेम Transaction is 100% transfer of shares. How is that different? I'm not clear. एक और क्वेश्चन है. If one company acquires 100% shareholding in another company, would it still operate as two separate division or one entity? Okay. चॉइस हुई तो बात वन सेपरेट एंटिटी बट टू डिफरेंट डिविजन. नहीं डिवीजन भी नहीं बोल रहे अगर उसमें पूरा वो अलग कंपनी चला इसलिए भी हम क्या कर रहे हैं मैं आंसर दूं, मुझसे क्वेश्चन पूछ. मैं तो ही कंपनी हूं मैं आंसर देता हूं. थैंक यू. 2 मिनट. कंफ्यूज हो रहा है वो टाइम पर कंफ्यूज हो रहा है बाद में जो भी उसके ये वाले इतने एनलाइटेड डिस्कशंस पे थोड़ा हम 2 मिनट स्पेंड करते हैं. ये सर क्वेश्चन होना चाहिए था फर्स्ट क्लास में ये पूछ रहा लास्ट में ये चीज कमजोर है आगे भाई. भाई फर्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा मैं इसकी फर्स्ट क्लास में ऐसा कोई नहीं होता है. सर आप तो करा दो बात पे कर ले गलत पूछ लिया फिर आगे बता देगा. कौन बता देगा? आगे राइट, आई लाइक इट. नहीं बट तीसरा का एक और क्वेश्चन भी तो आ गया, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सर तो ऑनलाइन वर्क है कर लिया मैंने सर आप कौन रहा है मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तू बंद कर दो. फिर पढ़ा 10 मिनट तक फिर इसके लिए आराम से हैं. So let me share a different screen. Okay, so let's take the two questions which we were discussing in the class right now. So the first one was shareholders of company A. They own company A. Simple. Shareholders of company B. They own company B. ठीक है. So तीसरा क्वेश्चन था, if company A or company B, one of them acquires the other, then will they operate as a separate company or will they operate as a single company? Depends on the way of or the mode of acquisition. Let's say it's a very simple transfer of shares or cash. कंपनी ए ने कंपनी बी को अक्वायर किया फॉर कैश, तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स कंपनी ए विल ओन कंपनी ए. ये तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है. अब क्या हुआ? कंपनी ए ने अक्वायर कर लिया कंपनी बी को. यस, कंपनी ए ने अक्वायर कर लिया कंपनी बी को, तो कंपनी ए के नीचे क्या आ जाएगा? कंपनी बी. कंपनी ए के शेयर होल्डर्स को क्या मिल जाएगा? कंपनी बी के सॉरी कैश फ्रॉम company A. So the resultant structure will be shareholders of company A owning company A, company A owning company B. They will operate as two separate entities, but part of the same group. Aditya, does this answer your question? If this would have been in the form of a merger, तो क्या होता? Correct. या फिर
if this would have been in the form of share for share, तो क्या होता? तो भी सेम चीज होती. अगर शेयर फॉर शेयर होता तो क्या होता? शेयर होल्डर्स कंपनी ए ओन कंपनी ए कंपनी बी नीचे आ जाती. बट अब कंपनी बी के शेयर होल्डर्स को क्या मिला? इंस्टेड ऑफ कैश शेयर्स. तो कंपनी ए के दो शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, दो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स हो जाते हैं. शेयर होल्डर्स कंपनी ए, शेयर होल्डर्स कंपनी बी. क्या ये क्लियर हुआ? वजन होता तो क्या होता? ए और बी ए होल्डर वजन होता प्लस बी इक्वल टू सी. तो क्या होता? शेयर होल्डर्स कंपनी ए, शेयर होल्डर्स कंपनी बी. ए प्लस बी. कंपनी ए प्लस बी वन कंपनी, उनके दोनों शेयर होल्डर्स. तो ये तीन ट्रांजैक्शंस के तीन स्ट्रक्चर्स. अब बताओ कुछ कोई डाउट? समथिंग विच इज नॉट क्लियर? पीपल ऑनलाइन, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? आगे चलें. अब चलते हैं सर के क्वेश्चन पे. सर हो गया ना क्लियर? यही तो हो गया. ऊपर ही तो है वो वाला, ऊपर ही है. सब है, 2 मिनट दे दे. सो इसका क्वेश्चन क्या था भाई सरलोक? नाम की पढ़ाई इसलिए नहीं आता है. सो शर्लॉक इंडिविजुअल है, उसकी एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी एस. उसने बोला मैं एक्वायर करना चाहता हूँ सोराटी को, कंपनी एम, ठीक है, ये टारगेट है. इसके शेयर होल्डर्स कौन है? एम एंड वाई, दो शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्लियर. अब दो ट्रांजैक्शन है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. पहली ट्रांजैक्शन, अगर कंपनी एस अक्वायर्स कंपनी एम तो क्या होगा? शर्लॉक ऊपर ही रहता है, इसकी कंपनी थी कंपनी एस, एंड फॉर कैश ही कर रहे हैं अभी हम, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, ऊपर कॉम्प्लिकेट हमने कर दिया. कंपनी एस के नीचे क्या आ गया? कंपनी एम. एम और वाई को क्या मिल गया? कैश फ्रॉम कंपनी एस. एस, ठीक है. सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? शर्लॉक बोलता है मैं खुद अक्वायर करूंगा, मेरी कंपनी नहीं अक्वायर करेगी. शर्लॉक acquires कंपनी एम फॉर कैश, तो क्या होगा? के अंदर क्या है? उसका भी शर्लॉक का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था क्या था? कंपनी एस. अब कंपनी एस के साथ साथ शर्लॉक कंपनी एम भी ओन करेगा, दो शेयर दो कंपनी हो गई. और इस केस में भी एम वन वाई को क्या मिलेगा? कैश. सो एम वन वाई की पोजीशन सेम रहती है, टारगेट की पोजीशन सेम रहती है, वो अक्वायर हो रही है. द ओनली डिफरेंस इज अक्वायरर कौन है. फर्स्ट केस में कंपनी एस वाज द अक्वायरर, सेकंड केस में शर्लॉक इज द अक्वायरर. दोनों कंपनी उसी के बारे में कर सकते हैं. अब ये बताओ समझ में आया? एक्विजिशन दोनों केस में है, हाँ. एक केस में एक इंडिविजुअल अक्वायर कर रहा है, दूसरे केस में एक कंपनी अक्वायर कर रही है. अब बताओ क्वेश्चन पक्का? डिफरेंस क्या है माइंड में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. टाइम वेस्ट कर दिया. ओके आगे चले. सिनर्जीज वाली स्लाइड है. सॉरी, सिनर्जीज वाली स्लाइड. synergies वाली स्लाइड बिल्कुल. People online, hopefully you can see the slides again. If not, please tell me. Synergies वाली स्लाइड ये रही. यस वो कौन है? चलो, तो ये दिस इज द एंड ऑफ
M&A. Of course, questions can help, but the concept, different concepts on it. I think those 3 important points with it. One was synergies. Second was the different forms of consideration and associated impact. And of course, the whole point around, which is a better mode, share for share. Now we are left with business valuation, and we are left with reconstruction, and of course, we are left with questions. One question at least I want to run through. One question at least I want to do it with you. टाइम बढ़ा तो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं थर्ड, अदरवाइज 2 क्वेश्चन तो मेरे को करने का बिल्कुल मन है आप लोग सब। अभी बताओ क्या करना है नेक्स्ट क्लास, कब करनी? इज वेडनेसडे ओके फॉर द नेक्स्ट क्लास? ओके वेडनेसडे हमेशा बहुत बढ़िया। हम बट करेंगे सर। अच्छा सर अभी 2 दिन चाहिए अभी। पीपल ऑनलाइन? Okay, if we take the next class on Wednesday, where we complete these 2 chapters, business valuation and reconstruction, along with the related questions. Yes? ठीक है. So, तब तक, all of you please revise, please practice, continue. Of course, you can definitely attempt 1 mock between Monday and Tuesday. Please try to attempt 1 mock. It doesn't matter if you've not yet completed M&A wale 2 chapters, that's okay. I think you've revised enough, you've studied enough, you've put in a lot of hard work. So please attempt 1 mock. It will be helpful. It will give you some confidence in terms of things which you know well. How are you going to track the time in the exam type conditions? 3 hours, 15 minutes mein kitna ho raha hai, kitna nahi ho raha hai, those kind of things. So attempt 1 mock in these 2 days. Revise whatever you've done. Okay? And then I will we'll update on the group for the time for Wednesday. So Adya, will it be in the evening? I don't know right now. We'll have to figure it out. Yash says in totality, how many mocks should we attempt? At least 4 is my suggestion. Attempt at least 4. Yes. Minimum. Of course, you can do more, but 4 to karo. And the reason why I say 4 is, see, the first 2 mocks, you will also figure out how to attempt it. You will also figure out time management, etc., etc. So 2 mocks to practice mein chale jayenge. Then I want 2 proper mocks from all of you. Okay? So that is how I say 4 mocks. Very interesting question, and I think all of you, so some of you may also have this doubt. It says that someone is good with M&A and advanced investment appraisal and other topics, but they feel that risk management is a part where they lack. Going forward with conceptual clarity of M&A and investment appraisal topics, are these enough to pass? Or should I invest time in practicing more for risk management as time is limited now? So, I'm answering it. No comments, please. Right? All of us have our own setup. Okay? So from my side, yes. Should I invest time in practicing more for risk management? Absolutely. I, as a person, will never say leave something for the exam. Unless the institute is telling us we don't leave anything. Yes, time is limited, but we still have time. We've spent good enough time in these 2 days on mocks. On hedging. So you have enough time to practice. It is an important topic from the examination standpoint. Again, never know. 50 marks ka aata hai, 25 marks ka aata hai, 0 marks ka aata hai. Definitely it's an important topic. So please definitely invest time, practice, and make sure your risk management is also up to the mark. Probably not the answer you were looking for, but if you ask me, definitely that's the my view. I won't recommend ever to leave anything for teacher. I'm happy to help in whatever way I can, but not leaving any. Any other questions? हाँ जी, मैं बोल दो, हमारे साथ भी शेयर कर लो। जो क्लास 12 बजे के बाद रखिएगा, 10 से 12 एग्जाम। 10 से 12 ठीक है, चलो, thank you so much everyone. Then we close the class today. As I said, we will update on the group on the next class timing. We'll definitely try for Wednesday, where we'll complete the topics which we are left, the reconstruction, and we'll also practice some questions. Okay?
Sure. Thank you so much, everyone. Take care. Have a good evening. All the best.